Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see. It's in these moments. It's in these moments. Oh, I know that you've been waiting. It's in these moments. Oh, I got lost on a winding road in the dark of night with the stars aglow. Heaven's up above, got me below as I head to you like the river flows. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. やめてください。 Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see. It's in these moments. It's in these moments. हेलो 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 गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो सब? मास्टर सुदेश भाई, तानुष भाई, हो बतूक गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल, कैसे हो सब? कैसा रहा आज तुम लोग का सैटरडे? वाज योर सैटरडे गाइस? हाय 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 हाय। नो पे वोट, ओके, फुल सपोर्ट, डिसलाइक डन, फुल こん सपोर्ट। にちは。 स्ट्रीम रिपोर्ट फुल सपोर्ट, अनसब फुल सपोर्ट, ओके ओके। टाइम आउट डन, फुल भाईचारा, ये वाला थानोस भाई का हमारा नारा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हैं सुपर एक सेकंड की तरह काजूटो का यार मैसेज। न्यू अचीवमेंट अलग सुपर सेयन जोंगली, इट्स नॉट लाइक अ सुपर सेयन, वो सुपर सेयन को भी क्रॉस कर दिया उसने तो। बहुत सारे बैकग्राउंड साउंड के साथ बोलते रहो। एक सेकंड, क्या मैं बोलता रहूँ? अच्छा, बोलता रहूँ। ओके, आई सी। साला इंडिया की तरफ से कोई अच्छा नहीं खेला है, ईशान किशन हार्दिक पांड्या को छोड़कर। क्या हुआ, इंडिया मैच हार गया? डैम, मैंने मैच भी नहीं देखा यार, मैं तो सोया हुआ था, बता रहा। हे मोहित, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल, कैसे हो ब्रो? शनि कभी अच्छा नहीं होता। एक सेकंड, शनि कभी अच्छा नहीं होता। ओके, आई सी, शनि कभी अच्छा नहीं होता। सही में यार, होता है कभी। फुटबॉल डे ब्रो, नथिंग इंटरेस्टिंग। ओके, आशीष भाई, आशीष, बारिश ही हो गई। अच्छा, तो मैच ड्रॉ हो गया, या आई मीन ड्रॉ करने का मतलब मैच अबेंडन हो गया, या कुछ DRS वाला, सॉरी क्या नाम है इसका, डकवर्ड एंड लुइस वाला मेथड लगा। DLS से बोलते हैं। हाँ, डकवर्ड एंड लुइस मेथड तो नहीं लगा। रैम सर को IT सब्जेक्ट पता है? हाँ बोल, क्या हुआ? ले रहा है क्या? IT ले रहा है तो साले कॉमर्स छोड़ के मत ले, फालतू है। अरे बारिश का कारण मैच रुका हुआ है। ओके, हो जाएगा यार, वो फिर चला जाएगा, छोड़ दो भाई। अमंगस कब खेलोगे? मैं डेली खेलता। अरे खेलो मोहित भाई, कभी कभी जब ऑडियंस हुई ना अमंगस की, तो डेफिनेटली खेलेंगे वापस से। पर यार अमंगस, आई मीन 1 महीने का था भाई, सबको भूत चढ़ा था अमंगस खेलने का। खेलते खेलते उसके बाद सबका भूत उतर गया, फिर हो गया। अब कोई नहीं खेलता अमंगस, ऐसा सिचुएशन है। इंडिया का बैटिंग हो गया 217 का टारगेट। ओके 267 का टारगेट। अब ठीक है टारगेट यार, खराब नहीं है।
बोर्ड में मैथ्स गेंद ना मारे। आईटी सोच रहा, और कोई सब्जेक्ट नहीं है क्या? और कोई सब्जेक्ट का नाम बताना, जो है तो ले ले, कोई दिक्कत ना है। लैंग्वेज बोला है ना, ये ऑप्शनल। लैंग्वेज ऑप्शनल है यार, तेरे पास 6th सब्जेक्ट अगर कोई ले लेगा तो तेरे को लैंग्वेज ऑप्शनल नहीं लेना पड़ेगा। टोपोग्राफी अमंगस टोपोग्राफी है, ओके। तो देख ले, तेरे को जो बेटर लगे देख ले, सबसे इजी कौन है सर्च मार ले, देख ले तेरे हिसाब से क्या बेटर है। मेरे हिसाब से जो अच्छा होगा मैं बताऊंगा, वो तेरे लिए ठीक नहीं ना है। तू देख तेरे को कौन सा आसान लग रहा है, टोपोग्राफी या आईटी। मैं कहूँगा दोनों सर्च कर ले, तेरे को जो ठीक लग रहा है, तेरे को ज़्यादा जिसमें इंटरेस्ट हो रहा है वही लेना, वरना छोड़ दे। लैंग्वेज और कुछ बोल नहीं है, बोला नहीं है अभी तक, और कुछ बोला नहीं अभी तक। ओके आई सी, देख ले फिर। 203 lakhs का कार्ड मिला ब्रो, आपको चाहिए? दे देना है काज उठो, बाद में दे देना। अभी स्ट्रीम पे तो नहीं ले पाएगा, स्ट्रीम ऑफ करने के बाद दे देना। किसका कार्ड है वैसे? अमंगस चालू हुआ तो पहले बतख को मारेंगे। अरे बतख का ही पहले बिरयानी लैपी लेना पड़ेगा मोस्टली आईटी के लिए। हाँ एग्जैक्टली, जो भी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लो, बस सीलिंग फैन पे फैन पे करता मत करना। एक सेकंड एक सेकंड, करता 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 मत करना, कर्तव्य मत करना। ओके, कर्तव्य मत करना अपना कर्तव्य मत करना। गॉड इट गॉड। लवडे लवडे तू आ गया, लवडे साले तू भी आ गया स्ट्रीम पे। अपना ही नाम परिचय दे रहा है क्या? देख रहे हो गाइस, ये लवडे आ गया भाई, अपना प्यारा लवडे। लवडे बॉय है अपना, लवडे बॉय है। आर इंट्रोस है, वेलकम टू द स्ट्रीम लौंडे। क्या हाल चाल, कैसा है लवडे? है कैसा है मेरा लवडे बॉय? है ड्रेस में सुनने में आया है आप भी हो। एक सेकेंड, मैं ना मैं वैसा नहीं हूँ। मैं काय को वैसे तेरे जो सीलिंग फैन छोड़ के सब करूँगा, वैसे भी कॉमर्स वाला है। रेचान एक जरा 100% कर दिया सुमेरु डेजर्ट। अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन यार सुभजीत, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल, कैसा रहा आज का सैटरडे? लवड़े मेरा देखो भाई, एड्रेस भाई हमारा लवडे का एकदम प्रॉपर बाल है भाई। है लवडे वाला बाल है अपना एड्रेस। कैसा एड्रेस है? सुबह ब्रो, एक सेकंड, क्या लिख रहा तू? लवडे का बाल सुबह ब्रो। अबे ये मैसेज शो नहीं रहा है साले। हेलो मास्टर, अबे भाई गलत समझ जाएगा सुभजीत देख रहा है क्या लिखा है इससे? मास्टर मास्टर देख क्या लिखा है। फन फैक्ट, बतख इज फेमस फॉर हिज बिरयानी, नॉट इज फॉर यस एग्जैक्टली भाई, बिरयानी, इसकी बिरयानी पहले बनानी है भाई। अब कबूतर हो गया भाई, इसने जाति परिवर्तन कर लिया है, जात पात बदल लिया इसने। अब कबूतर बिरयानी खाना पड़ेगा भाई। फाउंटेन ग्राइंड कर दो कोई। अच्छा ऐसा क्या? सीना इराकी है ब्रो। हाँ ऑफ कोर्स भेज दियो, फिर भेज दियो, भेज दो काज उठो। व्हाट क्या दिख रहा है भाई? तू ही जानता, तूने ने लिखा है भाई। सुनने में आया है तू बंगाल में रहता है, अभी के लिए जाके पहली टिकट कटा रहा। अच्छा अच्छा, बंगाल में रहता, कटा कटा। आ जल्दी होता है। क्या दिख रहा? तू ही देख जाके लुल तू ही देख भाई क्या लिखा है तूने। फिर पूछ रहा तू, हाँ फिर पूछ रहा है क्या लिखा है। काजू देख रहा काजू काजूटो द बोची बन के घूम रहा है। काजूटो देख रहे हो, एकदम फुल बोची वाली, एकदम फुल बोची बोची करता है आजकल। बंगाल में तो सनी की सविता रहती है, सविता से तो डेली मिलता है मैं तो। मास्टर ने क्या लिखा है ऊपर जाके देखो चैट, तुम्हारे नाम के ऊपर देखो क्या लिखा है उसने। जस्ट एक साथ नहीं लिखा कि आप बुरा मान जाओ सुभजीत भाई, उसके नीचे जस्ट लिखा कि हाँ इससे पता भी नहीं चलेगा। एक एक क्या बोलते हैं, एक तीर से दो शिकार कर लिया उसने, मास्टर ने। बहुत चालू है मास्टर, देख रहे हो। अभी चैट रिफ्रेश किया, समझ गया क्या हुआ। पहले मेरा चैट ऊपर दिख रहा था। अच्छा ऐसा है क्या? कभी कभी आ जाता सनी। अरे 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 आज हाँ सनी आजकल दिख नहीं रहा यार, कहाँ है आजकल सनी यार? आई मीन सविता उसके सविता का लगता है भाई बिजनेस काफी बूम पे है, इसीलिए सनी बिजी है। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिजनेस संभालने में। तो मेरा वो रिया बोला था। अच्छा मैंने बोला था, वाह मैंने बोला भाई। तू ऊपर चैट लिख कुछ और, फिर नीचे लिख शुभजीत भाई। हैं कोई चैट पढ़ेगा तो वही लिखेगा ना। हाँ राज भाई, अच्छा अच्छा बेटा, कबूतर है, कबूतर अपना लौडे है भाई। कबूतर का भाई आज लोडे हो गए भाई, कबूतर का आज लोडे हो गया भाई, लोडे। कोई ना, इट्स ओके लोडे, कबूतर लोडे है तेरा आज, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सनी से याद है, सनी लियोनी आज भी नहीं दिख रही, आजकल दिख नहीं रही है। पूछ जाके काहे नहीं दिख रही है मेरे से, काय को पूछ रहा साल है। कैसा है कबूतर, आज तेरा लोडे गया है?
कोई बात नहीं, इट्स ओके। सबका कभी 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 जाता है लोडे का, लोडे जाता है कभी कभी, समझा? समझ मत, ऐसा टेंशन मत ले, कबूतर होता है कभी कभी, लग जाते हैं लोडे जिंदगी में। तेरा भी लगेगा, टेंशन ना ले, अभी तो तेरी स्टार्टिंग हुई है। बिजनेस ऑफ व्हाट? मोहित भाई, सविता भाभी हैं हमारी। आने दो सनी को, फिर पूछना है, फिर पूछना। चल बाय। साढ़े जिम में हूँ। अबे साले जिम में? तू साला जिम जाता है? एक लीवर का तो है साला, कुपोषित हो रखा है, जिम जाता है भाई। अबे जिम से नहीं होता है मशल, खाने से मशल आता है साले। आला एक लीवर का है और जिम जा रहा है, देख रहे हो गाइस? है साला कुपोषित है एंड्रो सर, जाके सोचता है जिम में जाऊंगा तो भाई मसल्स आएंगे। अबे साले फूक दूंगा, उड़ जाएगा। है जिम में मजाक कर रहा है, जोक सपाट। चल जल्दी से जिम वूम करके आ फिर स्ट्रीम पे, फिर तेरा हम लोडे लोडे कम करते हैं। लोडे तेरा उड़ा देते एकदम। है बिना लोडे का घूमेगा तू आज? है आज से कल तेरा भी लोडे है? नहीं मेरा कल लोडे नहीं है भाई, मेरा मेरा एकदम हमेशा हाई डे जाता भाई, मेरा कोई लोडे नहीं जाता, मेरा एकदम हाई डे जाता है। प्रोटीन अच्छा कहा तो तू भी प्रोटीन लेता है? बीसी दोस्त राइड नहीं लिया, फिर भी 100% हो गया। 100% गेंशिन इज ए स्कैम। हाँ इट्स लाइक ए स्कैम यार, एक दो छूट भी जाए तो कोई ना, सबका 100% हो गया। मेरा भी कर दो कोई। साले खुद ग्राइंड कर, हराम खुद ग्राइंड कर साला। देख रहे हो भाई, मजदूरी करवा रहा दूसरों से है ऐसे ही। ये सब चोल बिना कबूतर, ये सब चोल बिना, ठीक है? ये सब चोल बिना। आज तो यार लिटरली मैं दोपहर में सोया, रात को उठा भाई। मतलब 2 दिन से ना, 2 दिन का जो नींद नहीं पूरा है ना, अभी भी लग रहा है जैसे नींद ही आ रहा है भाई, सही बता रहा हूँ। लेकिन अभी तो नींद खुल ही गया ऑलमोस्ट। तो आए ना चोल बे, सब चोल बे ना, बिल्कुल ना। नो आई डिडंट, नो आई डोंट नीड इट, इट्स इट नीड्स मी। ओके कहा जुटो तुम्हें? ओके ओके ओके, लगता है लूफी ड्रॉप हुआ फिर से। गेंद तोड़ दूंगा साले अगर दोबारा बोला तो। लूफी ड्रॉप हुआ, उठा लो रिया, हट साले आराम है। कैसे कैसे चूतिया बना रहा भाई, देख रहे हो गाइस? देखो कैसे चूतिया। अबे डिस्कॉर्ड खुला हुआ है मेरा हरामी। ए डिस्कॉर्ड खुला हुआ है हरामी, कैसे कैसे चूतिया बना रहा है बे? है लूफी ड्रॉप हुआ साला। देख देखते कैसे चूतिया हो रहा है। अबे साला मेरा डिस्कॉर्ड पहले से खुला हुआ है भाई, हेलो मेरा डिस्कॉर्ड पहले से खुला रहता है। आया बड़ा है, ले लो सही में। नहीं नहीं कुछ नहीं उठाना भाई। तो गेम स्टार्ट किया जाए गाइस। हाँ गेम स्टार्ट किया जाए, अपने को आर्कन क्वेस्ट वगैरह कंप्लीट करना है। रिलोंडो बहुत कुछ बाकी है यार, मेरा अभी मेन क्वेस्ट है। थैंक्स काजुटो रे दूसरे अकाउंट में ये करने के लिए। यो जोरो वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या हालचाल, कैसे हो? लॉल क्या भेज रहा है रे काजुटो? ओके ओके ओके, कैसे है कौन ये? क्रश क्रश, आई सी सक्सेस। एक सेकेंड भाई, ये क्या काट दिया है तूने? हेलो काजुटो, क्या कार्ड भेजा है मेरे को? कैसे हो जोरो ब्रो? है काजुटो, एक सेकेंड। बूबा, लेट्स गो। जोरो आए? ए एंड्रस को बुलाओ रे। जोरो जोरो आया स्ट्रीम में, एंड्रस को बोल दो यार। एंड्रस को कोई टैग कर दो, जोरो आया गाइस। कारू ड्रॉप कर रहा है क्या? नहीं कारू तो इसके पास है। ऑल गुड, बड़ा बढ़िया। मैं भी मस्त हूँ यार, मैं भी मस्त हूँ। अरे तुमको एक बंदा ढूंढता है यार, लिटरली डिस्कॉर्ड पे ढूंढता है, स्ट्रीम पे ढूंढता है। एक एंड्रो टेस्ट करके बंदा है, तुम्हें भाई ढूंढता है भाई। वो तुमको भाई इतना प्यार करता है कि पूछो मत। लिटरली तुम्हें बहुत प्यार करता है यार वो। ही कैन डू एनीथिंग फॉर यू। अरे कोई टैग करो रे एंड्रोस के जाके कि ये आया कौन? एंड्रो टेस्ट भाई आ रहा है, आ रहा है, टेंशन ना लो जोर, डोंट वरी। ही लव्स ग्रीन हेयर। मैंने लास्ट अमंग अस स्ट्रीम 8 महीने पुराने, हाँ भाई कर दिया टैग। ओके ओके, आ जाएगा आ जाएगा अपना एंड्रस भाई, टेंशन डाल, आ जाएगा आ जाएगा। तो गेम स्टार्ट किया जाएगा ऐसा, आई मीन ऑफ कोर्स। ये देखो भाई मास्टर अरावी साले है, पीपो क्लाउन बन के घुबरा तू है। तो गेम स्टार्ट करते गाइस। हाँ अभी काफी काफी टाइम लगेगा अपने को ये करने में। अगर जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज, मैं जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अब तुम उसी से पूछना भाई, अब हम क्या जानते हैं गाइस? हम क्या बोले, अब तुम उसी से पूछो। लाइव एक्शन देखा? हाँ लाइव एक्शन देखा, अभी 1-2 एपिसोड ही देखा है, अभी पूरा बाकी है। वैसे लाइव एक्शन देखा क्या तुम लोगों ने गाइस? वन पीस का कैसा लगा तुम लोग को? क्या क्या रिएक्शन था तुम लोग का यार?
आई मीन मैंने अभी देखा एक ही दो, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, फास्ट पेस है और मतलब उतना क्रिंज नहीं है जितना क्रिंज लोग कह रहे थे, आई मीन सोच रहे थे। काफ़ी अच्छा अडेप्टेशन है एनिमे का। जय भाई, स्वागत तो करो हमारा। अरे सर स्वागत है आपका, स्वागत है सर, स्वागत है। जय भाई का स्वागत नहीं होता ऐसे कैसे चला है? अरे यार एक मस्त इमोजी भेजूंगा, वो डाल वाईटी पे है। अबे कम से कम अभी एक और स्लॉट खोलने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा चाहिए बे, काफ़ी लंबा मांगता बे, काफ़ी लंबा मांगता। अभी मेरे ख्याल से स्लॉट लॉक है, टाइम लगेगा उसको अनलॉक होने में। बाद में दियो काज उठो। अब वो तेरा ना ये अलग गलत है, क्या बोलते हैं, कोड गलत है, बाद में दियो मुझे जो भी देना हो, ठीक है। गीगा चैट एक्सक्लेमेशन मार्क, गीगा चैट, अरे ना रे वो वैसे थोड़ी होता, इमोजीज में देखना तेरे को दिख जाएगा, गीगा चैट करके कुछ भी नहीं है। रेंज बॉय, अरे मैं मस्त, ये बताओ आप कैसे हो जो भाई है? आप कैसे हो, आप कैसे हो, कैसा चला आज का दिन? व्हाट द हेक ब्रो लैमो, मैंने उसको उठा लिया और मैंने नहीं उठाया, सोच के बंद किया बिना देखे, सो वो तीनों इराकी गॉन। बहुत काजुड़ो तू, बहुत तेज है, बहुत 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 तेज है तू, हैं बहुत तेज है। देखो कैसे मेरे को टोपी पहना रहा है ये, हैं? ओके ओके काजुड़ो, पहन लेंगे टोपी एक दो बार, कोई बात नहीं, ओके पहना लो टोपी। यूज एक्सक्लेमेशन मार्क एंड अनडिफाइंड एक्सक्लेमेशन मार्क आरसी करोगे तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पास रे कॉइंस कितने हैं, ठीक है, और वॉच आवर्स तुम्हारे कितने हुए हैं। और तुमको कुछ रिडीम करना है तो डिस्क्रिप्शन में देखो लिस्ट पड़ा हुआ है पूरा रिडीम का। बस आपकी कृपा है रियांश बोय, जॉय बोय, आपकी आपकी कृपा है हम पे यार, हमारी क्या कृपा होगी यार, हमारी कोई कृपा नहीं है, हम तो रॉक लॉल क्या। अरे मोहित भाई क्या कर रहे हो, मेरे को तो ये बताओ। नो नो फॉर रियल ब्रो, यू कैन सी, मैंने देख रहा, तुम झूठे आदमी, काज उठो, दिल तोड़ जा तुमने, हमें हरा, कोई बात नहीं, ओके। एक्सक्लेमेशन मार्क रॉक, रॉक किस चीज का, आई मीन उस रॉक का बात कर रहे हो क्या? हाँ अरे यार इमोजी, सबको इमोजी डालने हैं ना, राइट है, इमोजी डालने हैं ना आपको। आपको इमोजी सेक्शन में इमोजी मिलेगा, आपको रिडीम करने की जरूरत नहीं है मोहित भाई, लॉल तुम रिडीम कर रहे हो यार। आई जस्ट बर्न इट विदाउट सेइंग ब्रो। हाँ हाँ, ये जो इमोजीज है ना वो इमोजी सेक्शन में दिखेंगे तुमको, उसके लिए तुमको रिडीम करने की जरूरत नहीं है, लॉल मोहित भाई रिडीम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें वो चीज, लॉल। कोई ना कोई ना कोई ना, इट्स ओके। शायद मोहित भाई को इमोजीज का नहीं पता, आई डोंट नो, पता नहीं कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं मोहित भाई। इमोजी सेक्शन खोलो, वहाँ दिखेगा मेरा इमोजीज, वहाँ पे आपको मेंबरशिप वाला इमोजीज मिलेगा। ओह माय गॉड, आज सैटरडे, कल संडे, फिर भाई फिर मुंडे। दिन कितने जल्दी 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 भागते हैं बे। आज मेरे को तो एक सेकंड के लिए लगा आज संडे है भाई, फिर मैं कहा नहीं रे आज तो संडे थोड़ी है, आज संडे नहीं है। मोहित भाई चैनल एक्सेस लेने के ट्राई कर रहे हैं, एक सेकंड रॉक कल्ट, एक सेकंड रॉक कल्ट कर रहा है, टुमारो लेने स्टोरी रिक्वेस्ट, ओके काज उठो, आई सी आरसी लाल। रोहित को मोहित को पता भी नहीं है यार वो क्या कर रहा है। मोहित भाई क्या कर रहा है? एचडी, हाँ इधर तू कर ले कारू, हाँ इधर कर ले तू, हाँ सोफी का ड्रॉप और सोफी का बर्न इधर ही कर ले तू, काज उठो है। Hey Godzilla Prime, welcome to the stream. Hello Mr. Rians and chat members. Hope you all are doing well. Why is GIF Luffy on the screen? We are Luffy fan, you know. I'm a Luffy fan. काम क्या कमांड? ना ना कोई काम नहीं किया, इधर गिराएगा ना तेरे को, हाँ। बतख भाई बिग फैन, अरे बतख के तो सब फैन है भाई, बतख के तो सब फैन, खासकर मैं तो और बड़ा फैन हूँ बिरयानी का, बतख बिरयानी का। चलो गाइस गेम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उप्स सॉरी, इधर गया, लाइव सीन, बैकग्राउंड सॉन्ग किधर गया हमारा, प्लेलिस्ट 1, प्लेलिस्ट 1 बना हुआ बजाऊं या 2 बजाता हूँ आज यार, 2 बजाता हूँ प्लेलिस्ट 2। गाने का साउंड बताना यार गाइस, ठीक है, गाने का आवाज़ ठीक है, ज़्यादा तो नहीं आ रहा ना। बाय द वे हाउ आर यू गॉडजिला प्राइम, कुछ मत बजाओ खुद गाओ। अरे यार इतना सुरीला आवाज़ होता तो यार तुम सोच रहे हो अभी तक मैं ये जीत गया रहा था, क्या बोलते हैं इंडियन आइडल, वो भी जीत के क्या ही उखाड़ लेता मैं साला।
अरे कोई इवेंट आया है कि नहीं रे? कोई इवेंट नहीं आया रे। डेली कमीशंस भाई फाउंटेन में आ चुका है लॉन्डो। चलो भाई देखते हैं फाउंटेन का डेली कमीशन क्या है। 1 2 3 4 ओके हाँ सी। लेट्स सी गाइस फाउंटेन का डेली कमीशन। रिमोट से लहंगा उठा दो गाओ। अच्छा मैं ये गाना गाऊं साले आरामी है। देख रहे हो गाइस इसकी डिमांड देख रहे हो क्या क्या डिमांड कर रहा है ये हरामी। I'm back at Genshin. Welcome to the stream. लौंडे कहाँ आजकल बिजी रह रहा है? आजकल स्ट्रीम पे दिख नहीं रहा तू हाँ? Another job. Suffocate. Into the wind. Have a little taste. Suffocate. क्या मतलब भाई उस गुब्बारे को नहीं मार रहा उसको मार रहा है ये। Step right up. बाय ब्रो कल मॉर्निंग को फुटबॉल मैच है और थोड़ा मोड़ा वर्क भी है आधी रात तक। डैम अरे मोहित भाई तो एक बात बताओ काजुड़ो आजकल तो स्ट्रीम पे दिख नहीं रहा है यार। दिल से बुरा लग रहा है क्या बात है? आजकल आता है 2 मिनट में फिर भाग जाता है स्ट्रीम से। गलत बात काजुड़ो। यू मेक मी फील सैड। हाँ दिल से बुरा लगा काजुड़ो बोल। अरे वो ऊपर हवा में क्या कर रहा है बीसी? हाँ? अच्छा ठीक है ये भी ठीक है। मेरी तरह रेगुलर रहो। अच्छा साले तेरी तरह हरामी मॉड छीनेगा मैं तेरा जल्दी ही टेंशन ना ले। डिफीट द ब्रीच ऑफ प्राइम यूज क्या बोले भाई इसको? Wind and cloud. Wind strike. Everybody stand back. Here comes the fanatic. Now disappear. मौत के बदले तेरी गेंद लेगा। अबे जा बे साल सबको दे देगा मैं तेरी गेंद। टेंशन ना ले तू। डैम कमीशंस तो अच्छे लग रहे हैं। आई मीन एवरेज हिंट प्रोग्रेसिंग इन एक सेकंड हिंट प्रोग्रेसिंग इन लाइफ। अच्छा क्या प्रोग्रेस हो रही है तेरी लाइफ में है? गर्लफ्रेंड से बातें चल रही है भाई आजकल बंदे भाई देख रहे हो भाई। Bro sorry to say but me watching a series anime and saved some data to say hi and stream. Okay कहाँ जुटे भाई से? रिपोर्ट डन एनिमल अब्यूज। किधर एनिमल अब्यूज क्या बे साले हैं? एनिमल अब्यूज तो तू करता है हरामी। वेट एक्टिवेट द एयरक्राफ्ट एंड कंप्लीट द चैलेंज। ओके ओह आई सी। हाँ तो क्या चैलेंज है भाई? हिट द टारगेट विद इन द टाइम लिमिट्स। ओके कहाँ टारगेट है कहाँ? क्या टारगेट प्रैक्टिस दे रखे रे भाई मेरे को? गानियों का कमीशन। हाँ रे ये तो गानियों का कमीशन है। यलान गानियों टाइप की कमीशन है भाई ये तो। स्कीम भाई स्कीम गाइस। तू करता भी है बीएल आदमी साले हरामी। गानियों का कमीशन। ओके कोई ना काजूटो वैसे कौन सा ये देख रहा तू? कौन सा एनिमे देख रहा? अबे नीचे नहीं उतरेगा क्या?
कहीं और आ गया रे ये तो। और एक किधर का मिशन है भाई, ये किधर है ऐसे। क्या हो गया मोहित भाई? वो ये गया क्या? भाई हाँ कॉर्नेलिया, ओके कॉर्नेलिया। क्या देख रहा साले? तेरे तो वॉच आउट सबसे कम होंगे रे। What have you encountered? What's happened? ये पहले पूछते हैं। हाँ भाई कुछ भी कहिए, काफी क्यूट क्रिएचर्स है। आई मीन काफी क्यूट लगते रे एनिमल्स ये। देखो कितने प्यारे दिखते रे। हे किंग जान, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल, कैसे हो सर? अरे सब किधर गए लॉन्डो? ऐसे कितने लोगों ने फाउंटेन का ये चालू कर दिया? वैसे कमीशन कर दिया सिर्फ फाउंटेन पे। टॉक टू स्टेले, किधर है हमारी स्टेले? स्टेले या स्टेला? आई एम कंफ्यूज। एनिमल तक तो नहीं छोड़ रहा है, अरेस्ट करो इसको। वाह भाई चीची के जैसे क्यूट। ना चीची क्यूट नहीं, चीची काफी प्यारी है, एकदम क्यूट प्यारी बच्ची। उसके जैसा गुड गर्ल कोई नहीं। ओके ओके ठीक है। अरे किधर दौड़ा रहे हैं भाई ये, मैं कंफ्यूज हूँ अभी। इतना कौन दौड़ाता है रे? राजस्थानी साला, राजस्थानी मैं नहीं हूँ हरामी। नोयर भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। देख रहे हो गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। नोयर भाई कैसे हो? क्या हाल चाल नोयर भाई? कर लिया क्या नोयर भाई फाउंटेन का कमीशन? आपने शिफ्ट किया क्या फाउंटेन में? किधर दौड़ा रहे भाई ये? इधर गया उधर गया फिर इधर गया, 3 जगह दौड़ा दिए भाई अभी तक, फिर वापस से ना दौड़ाए ये। देखा लॉगिन करके पल्लवी आईडी? अरे नहीं हुआ नोयर भाई, मैं दोपहर में, मेरे को टाइम ही नहीं मिला एक्चुअली, मैंने लॉगिन ही नहीं किया। दोपहर में कुछ और कर रहा था, फिर उसके बाद कहीं और बिजी हो गया और फिर लॉगिन नहीं किया। एक सेकेंड, कौन सा इमोजी कहा है तू मास्टर डालने को? किधर गया भाई? हाँ ये कोपियम इमोजीज डालने को कह रहा है क्या? कोपियम, हाँ कोपियम, ओके आई सी। कोपियम कह रहा है, इससे बेटर है रे। फिर कोपियम तो मेरे पास इससे बेटर रखा हूँ मैं कोपियम, ऐसा बोलेगा तो। ये बताओ नोयर भाई कैसा रहा आज का सैटरडे? भाभी जी के साथ कहाँ प्लान कर रखे हो कल? हे रोहित भाई वेलकम टू द क्या हाल चाल, कैसे हो? एनीवन गिव मी 20k रे कॉइंस सो आई कैन रिडीम फॉक्स लेडी अवतार। अच्छा है ना? आई मीन इससे बेटर है मेरे पास कोपियम वाला। ठीक है आई गेस, अच्छा ही है वो भी, ठीक ही है। कोपियम इमोजीज लगाना है क्या गाइस? इमोट लगा दे क्या कोपियम वाला भी? आई मीन ऑफ कोर्स तुम लगोगे वही स्पैम करने, आई नो। कोपियम वाला लगाया तो तुम लोग भाई हर एक टाइम कोपियम में स्पैम करोगे। Thank you for completing today's commissions. Here is your इससे reward. अच्छा है तो वही लगा दो। ओके ठीक है, ओके ओके ओके। Add Astra. गाइस देख रहे हो किसी एक आदमी का ना मेंबरशिप चला गया गाइस। वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, वो मेंबरशिप चले जाने के बाद। दिख रहा है गाइस, एक आदमी का मेंबरशिप गायब हो गया चैट में से, पता नहीं किसका, तो मेरे को दिख नहीं रहा उस आदमी का मेंबरशिप। गाइस तुम लोगों को दिख रहा है क्या? रेजिन यूज करना है अपने को। 155 हो चुके हैं आई सी।
आज सैटरडे है, ओके। कल अपना ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर ही लिया है। कबूतर की बात हो रही है, कबूतर ना कबूतर पता नहीं कौन कबूतर है भाई। कबूतर के पास है मेंबरशिप, पता नहीं है कोई चैट में, आई डोंट नो कौन है। एक सेकंड लेट मी चेक, एक बार मेरे को चेक करने दो। किधर गया आज मेरे को टैलेंट अप करूँ क्या इसका या आर्टिफैक्ट ही फार्म करूँ? टैलेंट अप या आर्टिफैक्ट फार्म, टैलेंट अप या आर्टिफैक्ट फार्म। डूड हे गाइस मेंबर्स वालों, किसी का अबिस बाकी है तो बोलो रे, अबिस कर देंगे आज हम, ठीक है। तुम्हारा भाई फुल पीरो हो गया भाई, फुल पीरो। तो चलते भाई, मेरे ख्याल से डोमे नहीं करते। जंगल का बैनर 6 को आएगा, जंगली का बैनर 6 को आ रहा है क्या? रुको रे काउंट करने दे भाई। आई मीन 2 दिन दिखा रहा है मेरे को इधर, तो 6 को काहे को आएगा बे साली? अब मेरे ख्याल से 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, 2 और 2 मिलकर 6 थोड़ी होते हैं बे साले। रोहित भाई अबिस करवा लो, आर्टिफैक्ट इधर उधर कर देना। तो क्या मतलब आर्टिफैक्ट इधर उधर? मैं देखेगा नहीं आर्टिफैक्ट इधर उधर करके? हाँ मैं देखेगा नहीं कि उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। आए बड़े तेज हो रहे हैं नोयर भाई तुम, हाँ फालतू को मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करते हुआ मैं बहुत चालू। 17 आवर, हाँ तो 3 दिन ऐड कर तो। अच्छा चल 3 दिन ही रखते हैं, तो 2 में 3 जोड़ेगा तो कितना होता है? 6 होता है भाई। आ रहे हो क्या नोयर भाई? बिलाइंड स्ट्रीमर नहीं, मी बिलाइंड नहीं कर। आइडिया कर दिया 30 डेज बाद, नेक्स्ट टाइम देता। ना कोई नेक्स्ट टाइम नहीं। दो घंटे बाद 3 तारीख हो जाएगा, तो फिर 2 घंटे बाद 17 घंटे, तो वो भी तो कर लेना फिर, काउंट तो कर एटलीस्ट। 2 में 3 जोड़ेगा, 2 + 3 हो जाएगा। ओके यश भाई बिल्कुल तो शिव, क्या हाल चाल, कैसे है? 24 + 17, हाँ 24 क्यों जोड़ रहे हो आप लोग? आई मीन 48 घंटे + 17 घंटा जोड़ो। हेलो 48 + 17 जोड़ो हो, तब उतना टाइम। माय बैड नोयर भाई, सॉरी गलत बटन दब गया। ओके नोयर भाई वापस भेजो, माय बेड वापस भेजो। हाँ इतना जोड़ो एग्जैक्टली। तो इट्स लाइक 51 आवर्स राइट? नॉट 51, 61 आवर्स। 61 आवर्स 61 आवर्स हैं अभी। ये PS5 पे खेलने वाला बंदा है, एक जगह गलत बटन दब गया नोयर भाई। हेलो, और गलती से चैट पढ़ते पढ़ते गलत बटन दब गया, ठीक है। चैट NHK, अरे पढ़ रहा, आपका ही पढ़ रहा। ये छोड़ो, होमा निकाल देना मुझे। एक सेकंड है रोहित भाई, ये सब चल में ना भाई, मैं गारंटी नहीं लेगा। हाँ ठीक है। एक्चुअली लीव बटन, ये वाला गोल वाला बटन क्लिक हो गया ना, उसके वजह से लीव हो गया वो साला। होमा नोयर है, बिग फैन है। जग्गू वेलकम टू द शिप, क्या हाल चाल, कैसा है रे जग्गू? कैसा है जग्गू? लाइव एक्शन देखा क्या? लाइव एक्शन वन पीस कैसा लगा तेरे को? अच्छा लगा? लव फ्रॉम राजस्थान। जग्गू ये बता, अभी भी तेरे तरफ छोटे बच्चों का शादी होता है क्या? आई मीन छोटे उम्र में भी यू नो शादी तय हो जाता है क्या? ये बतुक आके कह रहा था राजस्थान में ऐसा होता है। होमा नहीं निकला तो इसके घेर में बम्बू। रोहित भाई डील, अच्छा ऐसा है क्या? नहीं मैं किसी का चैट नहीं पढ़ रहा। जो मेंबर्स, जिसके पास किसी के पास मेंबर था वो मेंबर्स खत्म हो गया भाई। मेंबर बिना मेंबर वालों का चैट नहीं पढ़ रहा मैं तो। made for transferring commodities back and forth. एक सेकंड, अभी भी चलता है वो तो, राजस्थान में लीगल है वो तो। Stay a while. So it is where many things. जग्गू भाई फिर एक सेकंड, व्हाट? ये क्या भाई? डील नोयर भाई, अरे नोयर भाई क्या यूज कर रहे हो? ओके ठीक है, मैं कर रहा इधर स्विच। बेनी बॉय इधर स्विच कर रहा। नोयर भाई ये कर लो ना आप कुछ जो सारा ले लो, मैं ले लेला। काज हुआ, आप कुछ जो सारा ले लो।
लाइव एक्शन वाज गुड, ओके, बेटर देन मोस्ट ऑफ लाइव एक्शन। हाँ यस भाई, ये तो मैं भी कहूँगा यार, लाइव एक्शन काफी अच्छा था, बाकियों से तो बहुत बेटर था। राजस्थान में भरवाड़ जाति के लोग हैं, ये रस्म होती है। अच्छा ये रस्म होती है, क्या आई सी, ओके चिंकू। पत्तू करे कोई टैग करे रे, हो जाएगा, उधर जाने वाला है, वो करेगा शादी भाई, उसको जल्दी है थोड़ी शादी की, कर दो गाइस टैग कर दो। तेल मल के आना रोहित भाई, सो दैट देयर विल बी नो इशू। अच्छा ठीक है, तेल मल के आना, अच्छा ठीक है। अच्छा नोयर भाई एक बात बताओ, आपको कैसे पता तेल मल के? हाँ नो इशू। नोयर भाई क्या कह रहे हो, तुम्हें एक्सपीरियंस है? हमें डाउट लग रहा है अब तो भाई आप पे। आपको कब से पता चला तेल मल के नो इशू? हाँ नूर भाई तुम्हारी भाई चोरी पकड़ी गई थी। नूर भाई हेलो, नूर भाई अच्छा वो सॉरी केस में भी ये तो क्या ही टाइप कर, अब लिखेंगे नूर भाई, अब गाइस अब देख रहे नूर भाई लिखेंगे, तुम तगड़ा भाई तगड़ा चैट लिखेगा अभी नूर भाई। जस्ट देख रहे गाइस, वेट कर। आज तो बहुत दुख हुआ, क्या हुआ जग्गू यार, कुछ हुआ क्या? हाँ गाइस गाने का आवाज सुनाई दे रहा है ना तुम लोग को, जो बैकग्राउंड में बज रहा है मेरे, कि ये नहीं सुनाई दे रहा? पैराग्राफ इनकमिंग, हाँ पैराग्राफ इनकमिंग गाइस, पैराग्राफ इनकमिंग। देखो भाई, अभी देखो भाई नोयर भाई खड़े हो गए, देखो खड़े हो गए, इसका मतलब चैट लिख रहे हैं भाई, आ रहा है पैराग्राफ इनकमिंग। ए देखो आई नो फ्रॉम एक्सपीरियंस बिकॉज़ बिफोर population use wet, एक सेकंड, you use और wet your पुर्जा, अच्छा ऐसा है क्या? देख रहे गाइस, सिंचो से डैमेज दे रहे हो नोयर भाई। हाँ राइडन शोकन ऐसे नाम के लिए लेके आए। लिमिटेड इवेंट का वेपन चला गया। हाँ लिमिटेड इवेंट का वेपन चला गया, कौन सा जग्गू इवेंट कर रहा है? कहाँ है लिमिटेड इवेंट यार, मेरे को तो पता भी नहीं है। ये क्वेश्चन तो आपसे भी पूछ सकते हैं, आपको कैसे पता है? मेरे को थोड़ी पता, नोयर भाई ने लिखा तभी मैं कह रहा है। हेलो रोहित भाई, मैं तो नोयर भाई से पूछ रहा, इनको कैसे पता? मेरे को तो पता भी नहीं है इसके मामले में भाई। हेलो आई डोंट नो। हाँ आप भी एक्सपीरियंस लग रहे ओ भाई, हमें कुछ नहीं कहना इस मामले में, ठीक है? नोयर भाई हेलो, बोझर भाई आप समझ कैसे? अगर पता नहीं तो वही तो हमने पूछा ना, हमने पूछा तभी तो हमने सवाल किया। हेलो रोहित भाई, ये हरामी टर्की डूब रहा है, इसको सब जानने क्या? एक सेकंड, हेलो नोयर भाई, ये कहाँ से आया? हेलो गलत बात है भाई, हमने कुछ नहीं किया, सब आपको पता है, आप ही लिखते हो, हमें नहीं पता है सबके मामले में। दूसरे वेपन का लेवल अप करने के लिए लिमिटेड इवेंट का स्पीयर चला गया 90 का था। लिमिटेड इवेंट का स्पीयर, हाँ मैं जा रहा इधर। नूर भाई का कितना ही स्किल था यार, डैमेज
देख रहा नोयर भाई को, मेरे को कह रहे हैं नोयर भाई मेरे से ज्यादा ठरकी तो नोयर भाई है गाइस हैं। पता है मेरे से ज्यादा ठरकी नोयर भाई है। हमारे ऊपर डालते हो नोयर भाई। आई नो बच आप बच नहीं सकते मेरे चंगुल से, टेंशन ना लो, हमें सब पता है। इतना कुछ भी देते हैं ना नोयर भाई आइडिया, सब नोयर भाई सब इस चीज में एक्सपर्ट है, तभी हमें आइडिया देते हैं हमको नोयर भाई। किरियान ऐसा कर मेरे को गाइड करते हैं, मेरे मास्टर है नोयर भाई, मेरे सेंसे हैं नोयर भाई। छोड़ेगा नहीं मैं आपको, डूबेगा तुमको भी ले डूबेंगे हम सनम। कहते हैं ना योर पेमेंट वाज अनसक्सेसफुल, लेट फिक्स योर मेंबर्स एजेंट इंटरप्ट। मेंबरशिप पे ओके भाई, लगता है मेरा मेंबरशिप कैंसिल हो गया रे नेटफ्लिक्स का। हेलो मेरा बाकी है हरापी, ओए मेरा को ये देखना है। हेलो ऐसा कुछ मत करियो साले, इंटरप्ट हो गया, वापस से ट्राई करो बे। Time to go. सब समझ रहा, हाँ देख रहा है नोयर भाई, सब समझ रहे हैं लोग इधर। नोयर भाई आप बचोगे नहीं। आ रहा क्या हो गया जग्गू का भी मेंबरशिप गया। मेरा सिंचो का डैमेज में रेयांश का आधा डैमेज पोटेंशियल है। नोयर भाई जाने दो, आपका सिंचो पता नहीं क्या यूज कर रहा है, आई डोंट नो क्या दे रखा है। तो सिंचो का जेट कटर दे रखा है, क्या जेट कटर है कुछ तो दे रखा है। देख रहे हो गाइस कैसे बुली किया जाता हमें है। कितना मार रहा है वैसे सिंचो में, ध्यान नहीं दिया नोयर भाई। इतने सारे हाइड्रो नंबर आ रहे हैं और देखा नहीं कितना दिया आपका सिंचो ने वैसे। हाँ गीगा चार्ट बन जाओ हैं। अच्छा मास्टर डिसाइबर रिलेशनशिप है। एक सेकेंड है कहाँ जा रहे हो मास्टर, ओए गलत बात। अरे अलमित भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। चाइल्ड अब्यूज चाइल्ड बुली, अरे लॉल नहीं कोई चाइल्ड अब्यूज नहीं करा। कैसे अलमित भाई, क्या हालचाल, कैसे रेयांश भाई? बी लाइक नोयर सेंस गाइड मी हैमस्टैक। एक सेकंड हेलो, एक कहाँ जा रही है चैट। हेलो एक सेकंड, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है, हम स्टक वगैरह नहीं होते ठीक है। नोयर भाई हमें बस गाइड करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं स्टक हो जाता हूँ ठीक है। वो क्या बोल, हेलो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चैट फ्लोर लिवर में जवान हो गया है। एक सेकंड, व्हाट जवान हो गया फ्लोर 11 में? किस साइड, उधर पानी वाले आई मीन बर्फ वाले साइड कह रहे हो क्या? ऑफ कोर्स बर्फ, सॉरी बर्फ वाला कह रहा हूँ, जहाँ पायरो आता है फुल दबा के। रोहित भाई लुब्रिकेशन नॉट नेसेसरी, पेन इज एंजॉयबल। अच्छा नोयर भाई देख रहे हो गाइस आजकल नोयर भाई पेन एंजॉय कर रहे हैं। गलत बात, नोयर भाई पेन कौन एंजॉय करता है? नोयर भाई पीले करे स्वीट पी रहे यार, कोई दिक्कत है? Time to go. Adorn my night. Shine down. Teamwork is dreamwork. Time to 45 के मार रहा है नोयर भाई। 45 को तो मेरा भी मार देता है। हेलो मेरा भी मार देता है चिंकू 45 के। 60% हार्डवेयर डैमेज बोनस। अच्छा
ओके आई सी। और ऊपर से पायरो साइड में भी तगड़ा, आई मीन दबा के वेपराइज कर रहा है। 144 के था, एक सेकेंड। हाँ 144 के था। हेलो नोयर भाई, आप भी स्ट्रीम पीछे करके देखेगा मैं। 144 के आपका मार रहा है कैरेक्टर, क्या मतलब भाई, चाइल्ड से बेटर हो गया। हाँ हाँ मेरे को नंबर भी नहीं दिख रहा अभी स्ट्रीम पे, व्हाट द फक। हाँ 45 के था नोयर भाई। हेलो 45 के था, रुको बेच था। झूठे आ रहे रहने दो। देख रहे गाइस कैसे टोपी बना रहे हैं हमें। हैं गैमल 100। ओके गेंशी क्या बात है, पॉइंट्स खत्म हो गए क्या तेरे? ओके कम ऑन यार, एक अच्छा पीस दे दे यार। अच्छा चलो ये बढ़िया पीस दिख रहा मेरे को। तो ये क्या दे रहा, अपग्रेड करेंगे गाइस आज। रियल द सिंचो रियल की का चैट। ओके आई सी। अब क्या बोले यार, सिंचो तो है भाई, सिंचो है यार। सिंचो है। मगर भाई गए भाई हमारा रिकॉर्ड करके भेजने डिस्कॉर्ड पे। रुको रे गाइस, रुको आ रहा है रिकॉर्डिंग, अभी देखते कितना आ रहा है। हाँ खत्म हो गया, एक सेकंड, खत्म हो गया। कितने है रे कोइंस तेरे पास वैसे? 4700 तो। अच्छा ये इनका है, क्या बोलते रोहित भाई। बजा दे तूने आया। मैं हार जाता बार गेम। कोई ना जीत जाओगे यार रोहित भाई, टेंशन ना लो, जीत जाओगे यार, जीत जाओगे पक्का अगला वाला जीतोगे, लिख के दे रहे हैं हम, जीतोगे। 24 के, एक सेकंड, व्हाट 24 के तेरे पास कहां से रे कॉइंस हो गए बे? भाई बंदा सेफ खेल रहा है, रे कॉइंस के मामले में थोड़ा गैम्बल कर। 1000 है। लोल जग्गू के पास 1000 है। हाई सी। हे वरुण भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हालचाल, कैसे हो सर? वरुण सर कैसा रहा आज का सैटरडे? हाँ वैसे मैच चालू है क्या इंडिया पाकिस्तान के गाइस? बताओ लॉन्डो, देखने चला जाएगा। आई मीन तुमको कमेंट्री सुनाएंगे हम। 144555 भाई देखने दो नंबर। नर भाई टोपी पहना रहा हूँ मैं। टोपी पहना रहा हूँ। 14,000 आपका उधर का, ठीक है। देख रहे हो गाइस, देख रहे देखो कैसे हमें टोपी पहनाया जा रहा है गाइस। ये देखो 2 नंबर आए हैं, उसको जोड़ के नोयर भाई ने लिख दिया है। वो पीछे वाला नंबर है नोयर भाई। हेलो वो पीछे वाला नंबर है और आगे अलग नंबर है। ये आगे अलग नंबर 45 का है, ठीक है। देखो गाइस कैसे अभी कर रहे हैं नोयर भाई। हेलो क्या चल रहा है? और सिंचो का डैमेज देख रहे थे अच्छे से देखो। तो मैं देख लिया, आप देखो, ठीक है। वरुण भी लाइक 22 के हैं। एक सेकंड, वरुण के पास कितने? ओ भाई डूड यू गॉट टू बी किडिंग मी यार। इतने रे कॉइंस तुम लोग के पास कहाँ से पहुंच गए गाइस? यार अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए यार। आई मीन रीसेट हुए 10-11 दिन हुए रीसेट हुए तो यार। हाँ ठीक है, आई गेस कुछ ज्यादा ही मैं लग रहा है मेहरबान हो गया यार। लगता है ना गाइस नहाना पड़ेगा रे, आलस आ रहा है पता नहीं क्यों। सो के उठा इसलिए, या कुछ रिफ्रेशिंग पीना पड़ेगा। लेडी फॉक्स की बरसात होने वाली है, एक ही रिडीम कर सकते हो। लेडी फॉक्स आए बड़े, लेडी फॉक्स की बरसात होने वाली है। अलमित भाई आज स्ट्रीम नहीं कर रहे क्या? चलेगा क्या अलमित भाई स्ट्रीम से? Shine down. Fallen leaves adorn my night. Everybody have the watch. Now we shall perish. Adventure time.
ज्यादा चालाक हो गया ये स्ट्रीमर ना बनू मैं हैं? देख रहे हो गाइस, देख रहे हो देखो गाइस, हम चालाक बने तो भी प्रॉब्लम, बेवकूफ बने तो भी प्रॉब्लम। देख रहे हो नोहर भाई को हर एक चीज से प्रॉब्लम हो रहा है आजकल मेरे से। हम देख रहे हैं नोहर भाई, सब हम देख रहे हैं, ठीक है देख रहे हैं। रुको गाइस यार कुछ लेके आने दो यार, पीसी मेरे को ना अजीब सा भाई नींद ऐसे उबास ही आ रहा है बहुत बहुत ज्यादा। रुको रे, रुको अभी लेके आता भाई ठंडा, ब्रेन फ्रीज करता मैं अपना भी। I'm back. Thanks for the like, Jaggu. Thank you for the like. जी हो। जब भी इसको देखता हूँ ना यार, I mean मार्शल डी जब भी डालता है ये, मेरे को याद आता है जी हो। मस्त हंसता है रे। इस थ्रस्टी एक सेकेंड, हेलो डोयर भाई, वो थ्रस्टी नहीं, वो अजीब सा हो रहा है यार, मतलब हर एक 2 मिनट पे आ रहा है यार ऐसे नींद जैसा। साला सो के उठा जब ये हाल है। बाहर आ जाओ डोयर भाई, हो गया डन। मजा आ गया। सेटिस्फैक्शन गाइस। मैक्सी राम भाइयों, राम। लेट्स गो गाइस, लाइक कर दो रे जिन्होंने लाइक नहीं किया है। गेंशी तो भी लाइक, मैं बाद में आता, मिलते। अरे कहाँ जा रहे हो नोर भाई, चले गए क्या? कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ के नोर भाई? गलत बात यार। देख रहे हो गाइस, नोर भाई हमें छोड़ के जा रहे हैं। ओके वेरी सैड। आर्टिफैक्ट अपग्रेड करते यार, 1-2 आर्टिफैक्ट अच्छे मिले अपने को। लेट्स सी क्या होता है, कैसे कैसे रोल होते हैं। आर्टिफैक्ट रोल प्लीज। एक मेरे को फ्लावर अच्छा दिखा है आज। चार्ज अटैक वाला ये ना, हाँ ये अपग्रेड करे क्या गाइस? वांट क्रिट डैमेज, चार्ज अटैक वाला ये ना, हाँ चार्ज अटैक वाला। चलो इसी को इनहैंस करते हैं। गेम प्लीज यार, कुछ तो कर दे यार। कम ऑन क्रिट डैमेज दे दे। नो चार्ज, मैं बाद में। नो चार्ज, अच्छा फोन चार्ज नहीं। ओके ठीक है। नो गेम गॉड, वेलकम टू स्ट्रीम। क्या हालचाल, कैसा है यार? देखा नहीं रे तेरा चैट, सॉरी माय। अबे यार मूड खराब कर दी भाई। हट यार, डिफेंस देख के दिमाग खराब हो। अबे यार ऑलरेडी डिफेंस पड़ा हुआ है यार। एक ऐसा सिस्टम लाते हैं ना गाइज, एक ऐसा सिस्टम होता कि जैसे कि भाई यू नो इट्स लाइक तुम एक सबस्टैट ब्लॉक कर दो, वो सबस्टैट आएगा ही नहीं साला उस वाले आर्टिफैक्ट में, तो बड़ा मस्त होता भाई। मैं हमेशा डिफेंस ब्लॉक करता, बहन का पकोड़ा डिफेंस। आर्टिफैक्ट खराब करने में भाई वही है, डिफेंस ही है सबसे आगे भी। क्या मतलब है, मेरे पास कोई दूसरा फ्लावर भी नहीं है भाई अपग्रेड करने के लिए। वाह रे वाह। भाई क्या मजाक है यार। डूड मेरे पास दूसरा फ्लावर यार, ये दे क्या रहे हैं फिर मेरे को? कचड़ा दे रहे हैं बीसी। ये चार नहीं, स्किल वाला ये 4 शॉट वाला, इसको इनहैंस करते हैं।
गेंशी युला सा सो रहा है तू आजकल। प्लीज प्लीज अच्छा रोल हो जाना प्लीज प्लीज। ओके एचपी किट डैमेज एनर्जी। अबे यार एनर्जी नहीं चाहिए यार। कम ऑन आई वांट क्रिट डैमेज यार प्लीज यार रोल हो जाए यार। गॉड टू बी किडिंग में अटैक यार है। चलो रियांश भाई जा रहा है क्या? भाई यार ऐसे क्यों करता है गेम यार? लिटरली अच्छे आर्टिफैक्ट खराब करता है यार। यार मेरे ख्याल से मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि अगर क्रिट डैमेज है अब मैंने रोल किया तो क्रिट रेट आ गया और एकदम पीसेस अच्छा हो गया। भाई मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं साला। 3 साल के गेम खेल रहा ना मैं, मेरे साथ हुआ ही नहीं 20 यार कि 3 सबस्टैट हो और एक सबस्टैट रो आई मीन क्रिट रेट आ गया चाहे क्रिट डैमेज आ गया एकदम मस्त वाला। भैंस क्या हमेशा डिफेंस ही आता है यार। हैंग और ट्रैश हो गया यार। एटलीस्ट क्रिट डैमेज पे रोल हो जाता तो कोपीएम में हो जाता, मैं कोपीएम चला जाता भाई। सोचता कि मे भी अच्छा रोल हो जाएगा, मे भी अच्छा रोल हो जाएगा। घंटा अच्छा रोल होगा भाई साला। Why game? Why you piece of shit? चूतिया गेम है भाई। Oh Lord, मैं बोला हरामी मेरे को कभी ऐसा नहीं मिला, अगले बार में ही दे दिया भाई। Dude, what the hell? स्ट्रीम अटक रहा भाई देव। स्ट्रीम अटक रहा है सीरियसली? स्ट्रीम अटक रहा है क्या? यार लेट्स 6+16 करते हैं। अबे मेरे को ठीक दिखा रहा है स्ट्रीम, तू कह रहा है अटकना। यार क्या है यार, ये क्या है यार? मतलब गेम यार ऐसे क्यों खराब करता है यार पीसेस यार। Dude, you got to be kidding me यार। क्या यार क्या कर रहा है गेंशिन इम्पैक्ट? क्या किए हो यार तुमने? क्या कर रखा है भाई? चूतिए बहन गाली देने भाई। फ्रस्ट्रेशन इतना गाली बाहर आ रहा है ना मुंह से यार, क्या बोलूं यार। इनके जैसा चादर मोद गेम नहीं है भाई कोई भी। हाय ब्रो, हे वेलकम, नॉट योर प्रॉब्लम यार। क्या हाल चाल, कैसे हो ब्रदर? आई मीन चल भाई इसको इनहांस करते हैं यार, क्या पता यही सही। अबे नहीं मैं उसको फीड कर रहा बीसी में को, बहुत गुस्सा आ रहा है ना। करते हैं यार क्या पता। रोल हो गया भाई, कितना सब रोल हो गया। आई मीन अटैक में कितना रोल हुआ रे? डूड आई मीन डिफेंस में कितना रोल हुआ? 2 रोल हुए डिफेंस में और एक क्रिट रेट में, एक अटैक में और एक भाई क्या पीस है भाई। आई मीन ट्रैश कर दिया यार इसको भी डूड, व्हाट द हेल यार। चलो ठीक है, आई गेस समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कैसा यार वैसे, नॉट ए प्रॉब्लम। कैसा रहा आज का वीकेंड तुम्हारा यार? कैसा चल रहा वीकेंड? डूड आई एम लिटरली फ्रस्ट्रेटेड रे। इतना अच्छा आर्टिफैक्ट देख के ना दिमाग घूम गया मेरा भी भाई। इतना गेंशिन मेरे से प्यार करता है भाई, देख रहे भाई आर्टिफैक्ट अच्छे ऐसे रोल होता है कि क्या ही कहूँ मैं। ब्रो बढ़िया, अरे बढ़िया जाना चाहिए यार, बढ़िया जाना चाहिए। डैमेज crit rate attack HP crit damage with nothing no crit healing crit damage। भाई मैं कितना कोपियम आदमी है रे, देख रहे हो कैसे कैसे पीसेस लॉक करके रखा है मैंने।
आई मीन बंदे भाई ये सब पीछे ट्रैश में डाल देते हैं। मैं हूँ देखो लॉक करके रखा हूँ। भाई डिफेंस के पीसेस देख रहे हो गाइस, डिफेंस के पीसेस कितने सारे पड़े हैं रे। हीलिंग बोनस, एचपी भाई एचपी तो इतना पड़ा हुआ है कि क्या ही कहना। क्रिट डैमेज, एचपी, क्रिट डैमेज, फायर अटैक, ओके। भाई मैं फुल कोपियम मोड में हूँ रे। हीलिंग बोनस, क्रिट डैमेज। भाई मेरे को ये फीड करने पड़ेंगे भाई। ये क्या ट्रास है आर्टिफैक्ट मैं इकट्ठे कर रखा है। Hey passion, will you do my account? Of course sir. Passion we can do stream. Sure bro, why not? कर देंगे यार SEC रिव्यू, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया डन भाई। मेरे को नहीं लगता यार मेरा जल्दी लेने बिल्ड होने वाला भाई। यही बिल्ड चलेगा मेरा। कल करेंगे इसका टैलेंट के लिए फार्म एंड ऑल। ये किसका अकाउंट है? मेरा अकाउंट है बस साले आराम में। और किसका होगा? Here you are, okay bro. 8 5 3 7 4 8 7 4 पैसन, ओके। कौन से कैरेक्टर देख रहे हैं ब्रो? डिलीट कर दे साले, इतना डट्टी अकाउंट है कि तेरी गेम चलेगी। लाइव एक्शन देखा? हाँ वरुण देखा यार, 1-2 एपिसोड देखे, बाकी क्या बचा हुआ अभी देखूंगा। क्यों तेरा क्यों जल रहा है साले? हैं एंड्रोस? पैशन ब्रो कौन से कैरेक्टर्स देख रहे हैं? शाव यला नायका, ओके ब्रो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। शाव यला नायका, ओके। होमा नाइस 82, ओके। होमा के साथ क्रिट डैमेज लो नहीं है। ओके देखते हैं आर्टिफैक्ट देखते हैं। ओह 4 पीस वर्मिलियन, लेट्स गो। नाइस पीस, ये भी अच्छा है भाई। ओ भाई क्या पीस है ब्रो यार, लेट्स गो भाई। ये 2 पीसेस तो भाई तगड़े हैं, बाकी के देखते हैं कैसे। ये भी ठीक है। ये एवरेज पीस है बट इट्स ओके। यहाँ क्रेडिट रेट दे रखा है इससे। ओके आई गेस ठीक है। ये भी एवरेज पीस है, आई मीन 2 पीसेस आपके एवरेज है। मैं कहूँगा ये वाला भी ठीक है, नॉट एवरेज। और ये वाला पीस आई मीन ऑन सेट है तो ठीक है, ऑन सेट है तो हम समझ सकते हैं। एंड यार ये पीसेस भी ठीक है। मैं कहूँगा इससे बेटर भी आप दे सकते हो यार, और भी अच्छा यू नो जिसमें भर के क्रिट डैमेज हो वो दे सकते हो आप। रेशियो तो काफ़ी अच्छा है यार, 82 to 213। डैम एनर्जी रिचार्ज जो आपका सही है, 120 के आसपास चाहिए होता है शाव को। एंड एनिमो डैमेज बोनस क्या अच्छा है यार। मैं कहूँगा होमा से ज़्यादा बेटर, आई मीन मैं कहूँगा होमा से ज़्यादा यार शाव का जेड स्पीड ज़्यादा बेटर होगा। आई गेस मिल जाएगा आपको स्टैंडर्ड बैनर से, होगा तो कोई बात नहीं। ये लान 90 to 26, लेट्स गो। ओवर क्रिट हो गया फिर तो, ओवर क्रिट नहीं हो गया थोड़ा सा। यहाँ क्या दे रखे हो क्रिट रेट? हो क्या इस यहाँ से अगर आप 31% निकाल दोगे ना, फिर भी आपका यहाँ पे मेरे ख्याल से 60 होगा यार क्रिट रेट। तो 60 इजी आ जाएगा यार। आई मीन 70 काफ़ी अच्छा होता है, 70 क्रिट रेट रेशियो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ओवर क्रिट हो रहा है। एचपी कितना है आपका? 38 के। ओके आपने क्या दे रखा है यार? लेट मी चेक एक बार। यहाँ एचपी हाइड्रो डैमेज बोनस लोल, आपको एचपी 38 के कहाँ से मिला है? ऐसी डबल हाइड्रो टीम में है लगता है ये लान, तभी 38 के एचपी है। डबल हाइड्रो टीम में है ये लान, आई सी। ओके एचपी परसेंटेज, ओके। क्रिट रेट ठीक है, ये भी ठीक पीस है। क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, एचपी, ओके ओके। ये काफ़ी सॉलिड पीस है यार। आई मीन लिटरली कितना बोलो, 22 एंड 20 ऐड कर लो भाई, 42 क्रिट वैल्यू पीस। लेट्स गो, ऑलमोस्ट 42। हाइड्रो डैमेज बोनस भी सॉलिड है यार। एंड क्रिट डैमेज क्रिट रेट, ओके।
डबल हाइड्रो टीम में है, तभी ये लान की HP 38 के दिख रही है। मैं कहूँगा थोड़ा सा क्रिट रेट लो, कर लो, क्रिट डैमेज दे दो यहाँ पे, या तो वहाँ पे HP दे दो, और भी HP हाई हो जाएगा आपका। गार्ड के कैरेक्टर के लिए मैं HOD एक सेकेंड मैं कंफ्यूज हो गया। एंड उसका गार्ड के कैरेक्टर की अच्छा माँ होती लाइव एक्शन में। ओके माँ होती, ओके 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 ओके, समझ गया। अरे यार देखो यार, अब मैं क्या बोलूँ यार, लाइव एक्शन मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़िया निकला। हाँ एक्चुअली देखो यार, हमारा लाइव एक्शन का बार काफ़ी लो था, ठीक है, सीरियसली बताऊँ तो उन्होंने उसको तोड़ दिया, ठीक है। आई मीन लाइव एक्शन अच्छा हो सकता है, इन्होंने बताया कि लाइव एक्शन अच्छा हो सकता है, देन 70-70। हाँ तो वो अच्छा रेशियो है यार, पैशन एडिट मैं कहूँगा वो ज़्यादा बेटर है। पूछो क्यों? याद हो तुम यहाँ पे ये भी काम कर सकते हो, ठीक हो, सच्ची बताओ ना, मैं कहूँगा तो यहाँ पे HP सर्कुलेट दे सकते हो। HP सर्कुलेट दे के क्रिट डैमेज क्रिट रेट अच्छा हो उस पर, ठीक है, अच्छा पीस हो तो तुम्हारा क्या होगा ना, ओवरवर्ल्ड में तुमको डबल हाइड्रो यूज़ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे यलान की HP ऑलमोस्ट 35-36 के चली जाएगा। डबल हाइड्रो में यूज़ करोगे तो 40+ हो जाएगा यलान के HP। तो HP कभी भी आपको डिमिशिंग रिजल्ट नहीं देता, मतलब आपको कभी भी मतलब ये नहीं होता कि हाँ HP से आपको घाटा हो रहा है, पर आपका ज़्यादा क्रिट डैमेज क्रिट रेट होगा ना, आई मीन क्रिट रेट नहीं, क्रिट डैमेज ज़्यादा होगा तो वो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं आता। मेरे ख्याल से क्रिट डैमेज से ज़्यादा मैं कहूँगा HP प्रेफर करूँगा यलान पे, ज़्यादा से ज़्यादा HP हो। तो मैं तो यहाँ पे पता है, मैं यहाँ पे मेरे पास भी ये है, क्या बोलते हैं, पैशन ब्रो, मेरे पास भी क्या बोलते हैं यार, aqua है। तो मैं यहाँ पे ना HP यूज़ करता हूँ, तो मेरा भी रेशियो इज़ लाइक इतना ही है, 70-26 है मेरा रेशियो। पर मैं यहाँ पे आर्टिफैक्ट में सर्कुलेट यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा सर्कुलेट काफ़ी अच्छा है। इट्स लाइक 40 CV का सर्कुलेट है HP पे, तो मैं यूज़ करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा यलान का डैमेज आता है मेरा, ऑलमोस्ट मतलब कि समझ लो कि इससे बेटर ही है, वो काफ़ी अच्छा डैमेज देगा। मेरा भी रेशियो हो सकता है 70-70 से अबव, मेरा भी 70-280 के आसपास रह जाता है अगर मैं क्रिट डैमेज डालता हूँ तो, पर वो HP ज़्यादा डैमेज निकाल के देता है। एक बार आप ट्राई करना, चेक करना आपका डैमेज कितना जा रहा है। आप ये चेक कर सकते हो क्रिट डैमेज सर्कुलेट डाल के और HP सर्कुलेट डाल के चेक कर लेना, ठीक है, कितना डैमेज जा रहा है। मैंने टेस्ट किया, मेरा ज़्यादा डैमेज आ रहा था, फिर मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा, आप अपने हिसाब से देख लेना। कौन सा कैरेक्टर बोला आपने अगला? आयका सिग्नेचर, ओके 38-263, नाइस रेशियो, बहुत अच्छा है। क्रिट डैमेज आई मीन क्रिट डैमेज क्या कर रहा हूँ, सर्कल क्या बोल रहा मैं यार, ब्लिजर्ड स्टेयर, ओके। अटैक क्रिट रेट क्रिट डैमेज, नाइस क्रिट डैमेज। पीसेस तो आपके अच्छे हैं यार, आई मीन ये क्रायो पीसेस काफ़ी सॉलिड है भाई, एकदम बैलेंस है। ये थोड़ा एवरेज हो गया यार, डैम ये थोड़ा एवरेज हो गया, पर ठीक है, फिर भी ठीक है, नॉट बैड, ये भी ठीक है, आई गेस काम चल जाएगा। आएगा अच्छी आपकी, नाइस आएगा भाई। मिस स्प्लिटर आएगा नेक्स्ट लेवल है यार, मिस स्प्लिटर आएगा, बहुत तगड़ी है। मैं आपका ये भी देख लेता यार, वंडर विड्थ R1, ओके 68-203, ओके ठीक है। डेजर्ट पेविलियन, नाइस। वंडर ठीक बिल्ड है यार, अच्छा बिल्ड है। I'm gonna ignore the live action like I ignore the non canon One Piece material. Exactly, तुम कर सकते हो इग्नोर यार, exactly कर सकते हो यार। मैं भी मूवी कम देखता हूँ, unless and until वो तगड़ा हो यार। वंडर अच्छा है यार, बस R5 बिट से चाहिए इसको, that's it, nothing else। वंडर भी अच्छा आपका। आर्टिफैक्ट तो रोल कर लिया यार, ढंग के आर्टिफैक्ट मिले नहीं अपने को। ओके ये है अपना, सिर्फ एक क्वेस्ट बचा हुआ है, ओके। हाँ ओके, मेरे ख्याल से इस अकाउंट में सब कुछ डन। मेरे ख्याल से इसमें सब डन है। मैं सोच रहा इसमें एक कैरेक्टर बिल्ड करने का, मोना बिल्ड करना है मेरे को यार इस अकाउंट में, आई मीन बस अपग्रेड करना है एक्चुअली। ये असेंड कर सकता है लॉल, लेट्स गो, असेंड कर सकता है गाइस। मेरे को लगा मैं असेंड नहीं कर सकता। डबल 70 मोना, मेरे को लगा असेंड नहीं कर सकता मोना, ऐसी कर सकता भाई।
मिसप्लेटर बैंड इज बेटर देन मिसप्लेटर आएगा। ए भाई मिसप्लेटर बैंड इज नेक्स्ट लेवल। गाइस 69 कर रहने दे क्या? अपनी मोना को भाई 69 पे रहने देते हैं, ठीक है? मोना अपनी 69 पे रहेगी, अच्छी रहेगी मोना। रेशो ठीक है। क्या दे रहा आर्टिफैक्ट एम्बलम, ठीक है। Bro, what are you talking about? Gap, Kobe, Hellmappo are actually more spotlight than the Destroyed. हाँ ये कह सकते हो। I mean maybe यार वो थोड़ा सा स्टोरी फोकस टाइप का करना चाह रहे थे कि हाँ Hellmappo। I mean देखो एनिमे में तो भाई वो सब साइड कैरेक्टर है। अब यहाँ पे लाइव एक्शन में किसी को तो कुछ तो बनाना पड़ेगा ना यार। रीजन ये भी तो है ना, वो देखना है एंड्रॉइड। अब एनिमे जैसा इग्नोर मारेंगे तो भाई सबसे बड़ा बैडी तो अभी सबसे बड़ा बैडी तो भाई अपने को पहला आर्क में तो सबसे बड़ा बैडी तो वही मिलता है। क्या बोलते हैं यार, आई गेस क्या नाम है उसका, आर्लोंग, ठीक है। सबसे बड़ा बैडी तो अपने को आर्लोंग मिलता है। अब उस हिसाब से चलते तो भाई वन पीस के कितने लाइव एक्शन बनाने पड़ जाएंगे उनको, सोच लो कितना एपिसोड। ओ तभी अगर ऐसे इस हिसाब से चलते तो भाई आर्लोंग को आने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा फास्ट पेसिंग रखा और थोड़ा सा स्पॉटलाइट दिया सबको। बाद में तो ये सब हट ही जाना है यार, जब ग्रैंड लैंग में एंटर करेंगे तो ये सब तो आएंगे भी नहीं। गार्प को यार आई मीन थोड़ा सा इन्होंने स्पॉटलाइट दिया लाइव एक्शन में। गार्प को ठीक है, खराब नहीं है वैसे। ओडा सेंसे भी यही कह रहे थे कि स्टार्टिंग में गार्प को उनको हाईलाइट करना चाहिए था। मैं फर्स्ट एपिसोड ही देखा अभी तक। अच्छा यार देखो फर्स्ट एपिसोड में एक ही मैं भी मतलब एक एपिसोड देखा, एक आधा देखा है, अभी बाकी है। डन। चलो गाइस अपने दूसरे अकाउंट में चलते हैं। टाइम टू स्विच टू PS5। तो लॉन्डो क्विट, यहाँ क्विट करते हैं। Game capture off, PS5 on. ये रहा। I'm complaining I changed the changes they made, but the gap is just doesn't feel like gap that। हाँ वो गाप जैसा फील नहीं आ रहा, थोड़ा सा नहीं आ रहा। बस डिजाइन सेम है लेकिन गाप वाली फीलिंग नहीं आ रही। गाप वाज लाइक नाइटमेयर फॉर लूफी इन एनीमे। लूफी को जब भी गाप लूफी को जब भी देखता है इट्स लाइक ए नाइटमेयर फॉर हिम। वो भागता है लूफी जितना जल्दी भाग सके। मैं पूरा देखने के बाद ही बोलूंगा कुछ नहीं। आई मीन जहां अभी तक डाला है फिर उन्होंने आई मीन आई गेस मेरे को भी अभी पूरा देखने दो। जहां तक रिव्यू वगैरह पड़ा था वहां तक तो क्या ही रहता है। आई मीन ओके सा है। होई अपग्रेड टू PS5। ओके पैसा वैसा नहीं है भाई, गरीब हो गया मैं अभी, ठीक है बाद में करेगा अपग्रेड। ओके पर हाँ काफी बेटर है यार दूसरे लाइव एक्शन से। तो मैं तो सच्ची बताऊंगा काफी बेटर है यार, लिटरली बहुत बेटर। क्वालिटी ठीक आ रही है ना गाइस? क्वालिटी खराब तो नहीं आ रही है ना? मेरे ख्याल से क्वालिटी खराब नहीं आएगी, क्वालिटी तो ठीक ही होगी। मैं कहाँ जा रहा भाई? ये रहा अपना गरीब स्ट्रीमर। गरीब हो गया मैं, ठीक है बहुत गरीब भाई, फुल गरीब हो गया रे मैं एकदम। थानोस भाई आप मेरे को UID भेज देना, ठीक है वेलकिन के लिए। ओके यू नो गाप इज लाइक नो फक्स गिवन। एग्जैक्टली वो कभी सोचता नहीं है, जो उसके मन में आया वही करता है। वो गाप भी लूफी जैसा है, ठीक है गाप भी लूफी जैसा है। जो उसको लगेगा वही ठीक करेगा, वो जो उसको ठीक लगता है वही करता है। इसमें तो गाफ को जहाँ तक मैंने देखा है गार्प को इज लाइक
सोचने वाला बंदा है, यू नो। हाँ वो आई मीन थोड़ा सा ह्यूमन टाइप का रखा है उन्होंने यार। एनिमे में तो तुम फंकी बन सकते हो ना, अब इसमें फंकी नहीं ना बनोगे। इसमें फंकी बनोगे तो यार थोड़ा सा बेकार लगेगा वो। अरे टीसीजी कौन खेलता है भाई यार? टीसीजी काय को डालते हैं यार, मेरे को ये बताओ। गाप गोभी को बचाने के अभी, अबे चार्ज मत बोल बे। नो 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 स्पॉइलर। इसके टाइम पे गांड जल गई थी। अरे यार बहुत दिमाग खराब हुआ था। आई मीन ओडा इज लाइक, मैं क्या कहूँ यार, वहां पे सच्ची बताऊं तो इसको मरने की जरूरत नहीं थी यार। लिटरली इसको मारने की जरूरत नहीं थी। मैं भी काफी डिसअपॉइंट हुआ था यार, अब बुरा भी लगा था यार। डूड लिटरली अभी जिस हिसाब से पावर स्केलिंग हो रहा है, अभी जिस हिसाब से पावर स्केलिंग दिखा रहे हैं, इसके हिसाब से यार उसको तो मरना ही नहीं चाहिए था यार। आई मीन बिल्कुल नहीं मरना चाहिए था यार। आई गेस क्या ही कहें फिर। एस को यार, एस के टाइम एस का बात कर रहे हैं यार, एस का। ऑलरेडी देखो लिटरली लूफी ऑलरेडी अपना बॉटम हिट कर चुका था। उसने देख रखा था कि हाँ भाई वो इनफ नहीं है हराने के लिए। ऑलरेडी वो अपने क्रू को खो चुका था, ठीक है, वो सब कुछ खो चुका था ऑलरेडी। उसको और भी उसको बॉटम में ढकेलने की जरूरत नहीं थी। आई मीन वो अपना आर्क समझ गया था कि हाँ उसको स्ट्रांग बनना है, उसको ताकतवर बनना है, उसको और भी ये करने की जरूरत नहीं थी। उसको पता चल गया था कि ग्रैंड लाइन में सरवाइव करने के लिए उसके पास इनफ करेज नहीं है। उसको किजारू ने दिखा ही दिया था यार वहां पे साबाओडी आइलैंड में। अरे आता नहीं यार, ऑफ कोर्स आता। अरे किजारू ने उसको दिखा नहीं दिया था उसका औकात, जब वो जोरो को नहीं बचा पाया था। क्या बोलते अपनी उसके आंखों के सामने से उसके सारे क्रूमेट्स गायब हो रहे थे। अरे फट गई थी लूफी की भाई उस समय, तो लूफी कुछ नहीं कर पा रहा था, ऑलरेडी उसकी फटी पड़ी थी भाई वहां पे। लूफी गॉड हैंकॉक था। अरे यार हैंकॉक यार लव है यार। देखो 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 कैसे चल रहा है साले। तू भी चल रहा है हरामी। हैंकॉक ने क्या तेरा बिगाड़ा भी? लूफी मेरे, हाँ एग्जैक्टली। आई मीन कह सकते हो यार। कौन सा एनिमे में बात हो रहा है? लूफी द स्ट्रो हेड। लूफी द स्ट्रो हेड के बारे में बात चल रहा है। बैकग्राउंड सॉन्ग सुनाई दे रहा है ना गाइस? ये पहले बताओ। मोस्ट अनोइंग फकिंग कैरेक्टर इन वन पीस। अच्छा बेटा अच्छा, तेरे को अनोइंग लगती है। उसके जैसा भाई वन साइडेड प्यार करने वाली कोई नहीं है भाई। कितनी प्यार करती है यार लूफी से वो। लूफी के लिए कुछ भी कर सकती है वो, जान तक दे सकती है। अरे किजारू के साथ एक लड़का जैसा दिखने वाली लड़का जैसे दिखने वाली लड़की रहती है। वाइस वर्सा का भी ओरिजिन रिवील हुआ है। ओके हाँ वो उस मोटे का ना, क्या बोलते हैं उसका यार, क्या नाम है यार उसका? जी से कुछ का नाम है यार उस मोटे का भाई।律令直呪言。はっはっ直
हाँ वो मोटी मोटा जो भी है, हाँ एग्जैक्टली लड़का है वो, हाँ लड़का ही है वो, लड़का ही। 2 पीस सारे नारे गेम गॉड ऐसे नहीं बोलते यार, कम ऑन। हिजड़ा वुड बी नाइस टर्म लॉ भाई। जब लूफी ने अपना हाकी दिखाया तो उसकी क्या फटी थी भाई। फिर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था लूफी स्ट्रॉ हार्ट कैन यूज भाई, यू नो स्ट्रॉ हार्ट कैन यूज हाकी, उसकी क्या फटी थी भाई। याई मिको का बिल्ड क्या थी दिखाना, ओके दिखाता मैं यार। मिड रूटो, एक सेकेंड। अरे मैं पूछ रहा था इस बैकग्राउंड सॉन्ग सुनाई दे रहा है ना कि नहीं सुनाई दे रहा है? नारुतो गे है साला। अरे एक्चुअली सच्ची बताओ ना यार, आई मीन नारुतो भी ठीक ही था यार, उतना भी मतलब आई मीन बिग 3 है बस, कह सकते हो। मेरे को सच्ची बताओ तो उससे बेटर लगता है मेरे को, क्या बोलते हैं ये, अगर स्टोरी वाइज बोलूँ तो मेरे को उससे बेटर ये लगेगा, क्या बोलते हैं, नथिंग टू ऑब्जेक्ट है, किसी को मैं खराब नहीं करा वैसे, लेकिन मेरे को भाई ब्लीच का स्टोरी ज़्यादा अच्छा लगा, आई मीन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा नारुतो से। और नारुतो के फिलर्स तो भाई मतलब ऐसा है ना भाई, तुम इग्नोर मार सकते हो यार नारुतो का फिलर, लिटरली। मिडरूटो इज बोरुटो भाई, बोरुटो तो और कचड़ा कर दिया यार। चलो लास्ट में तो फिर भी यार बेटर था, क्या बोलते हैं, नारुतो तो लास्ट में थोड़ा बहुत तो बेटर ही था भाई। शिनोबू आर्क जो था वो बेटर था। शिनोबू का वॉर वाला आर्क जो भी था अच्छा था। हाँ ठीक है, उससे छोटा भी वरुण भी लाइक है। एक सेकंड ठीक है, हो गया बुराई। मैं नारुतो का फैन, वन पीस नारुतो दोनों का फैन है। कोई कुछ नहीं सुनेगा। मिड स्लेयर साले, डेमन स्लेयर को मिड स्लेयर मत बोल साले, आराम। डेमन स्लेयर अच्छा है, आराम कहीं का। नारुतो में मैंने मादरा के मरने के बाद ड्रॉप कर दिया। हाँ एग्जैक्टली, जब तक मादरा था ना तब तक इंटरेस्टिंग था यार। डूड ही वाज लाइक क्या ही बोलूं यार, खतरनाक भाई। और उसका जो वॉइस एक्टर भी था ना यार मादरा का, भाई मादरा पेन जब तक थे भाई, नारुतो भाई था पीक पे, सच्ची बता रहा हूँ। मादरा के मरने के बाद कागुया आती है ना, मादरा के मरने के बाद नहीं एक्चुअली, अब कह सकते हो हाँ, डिफीट करने के बाद। कागुया तो बाद में लाते भाई, बड़ा खराब लगा। आई नेवर हर्ड वर्ड टुवर्ड देन दिस। अच्छा ऐसा है क्या? मैं बीजीएम बोल रहा था। बीजीएम ठीक ही है, तू आवाज बढ़ा दूं क्या बीजीएम के बारे में? आवाज बढ़ाऊं क्या थोड़ा सा, अगर आवाज नहीं आ रहा। छोटा भीम सुप्रीमेसी भाई, छोटा भीम नहीं भाई, सबसे बेस्ट भाई अपने को तो सबसे बेस्ट भाई टॉम एंड जेरी भाई। टॉम एंड जेरी इज लोब भाई, टॉम एंड जेरी इज लोब। चाहे तुम कुछ भी बोलो, तुम्हें बुरा लगे अच्छा लगे भला लगे, आई डोंट केयर, टॉम एंड जेरी इज लोब। और उसके बाद होगा कोई दूसरा तो करेज द काउडी डॉग, ये भाई बेंटेन। अरे बेंटेन सुप्रीमेसी भाई, अबे साले मैंने बेंटेन के सारे एपिसोड देखे हैं सारे। ओमनीट्रिक्स क्या बोलते हैं रिबूट के बाद तक, ओमनीट्रिक्स रिबूट करते हैं ना वो, क्या बोलते हैं, वो भी देखा मैंने यार। हाँ दिखा रहा, सॉरी माय बैड, भूल गया रे, मैं भूल गया। मैंने ओमनीवर्स नहीं देखा है, बस ओमनीवर्स देखा है मैंने। हाँ ओमनीवर्स यार उतना अच्छा नहीं देखा है तो कोई दिक्कत ना है, सच्ची बताओ तो। ओमनीवर्स नहीं देखा है तो चलेगा। ओमनीवर्स उतना कुछ खास नहीं था यार, ओमनीवर्स उन्होंने बहुत खराब कर दिया था।
मेरे से पूछेगा तो ओमनीवर्स में उन्होंने हक दिया था भाई, एनिमेशन से लेके सब कुछ। अल्टीमेट एलियन अच्छा था। हाँ अल्टीमेट बहुत अच्छा था यार, अल्टीमेट मेरे 同 को 点に पसंद つ आया いて था のご यार। 質問でしたらい वो つ था で बस もお聞きください वो मस्त था, बस अल्टीमेट एलियन समझ नहीं आ रहा था। अल्टीमेट एलियन इज लाइक वो अल्टीमेट वर्जन थे सारे, जितने भी बेंटन के एलियंस थे ना वो सारे अब अल्टीमेट वर्जन में आते थे। अल्टीमेट और उसका तो ओमनीवर्स में क्या हुआ ना कि अल्टीमेट जब खत्म हुआ ना तो उन्होंने आई मीन ओम ये कर दिया। एक सेकंड, ये क्या भाई? हेलो, हाँ ये क्लाउड है या वाटर? आई एम कंफ्यूज राइट नाउ। हाँ ये कुछ अजीब सा दिख रहा है पानी, आई डोंट नो व्हाई। गाइस तुम लोगों को पानी अजीब सा नहीं दिख रहा? क्या इनको का बिल्ड दिखा दो। R1 विडसित है, वैसे मैं स्विच करता रहता हूँ R5 विडसित से, ठीक है। हाँ R1 विडसित है, ओके भाई विडसित मेरा R2 हो जाएगा। रुको रे गाइस, वेट R2 विडसित, ओके। तो मैं स्विच करता रहता हूँ, ठीक है। रेशियो मेरा देख लो 79, आई मीन क्रिट रेट काफ़ी हाई है, ठीक है। मैं इसको आराम से 70 कर सकता हूँ। 70 मेरे को और अच्छे पीसेस मिल सकते हैं, मिलेंगे तो देखेंगे भाई। ये रेशियो है 80 एंड 205। आर्टिफैक्ट फुल गिल्डेड है, ठीक है। ये देखो ये पीसेस है, एवरेज से है यार, ठीक ही ठाक है, कुछ ज़्यादा कुछ खास। आई मीन मैं यहाँ हटा के क्रिट डैमेज यूज़ कर सकता हूँ। सिग्नारी यूज़ कर रहा है इसको। अच्छा ये देता हूँ तो क्या होता है रेशियो मेरा? 54 to 46 हिट कर सकता हूँ मैं, इससे ही बेटर हो सकता है। ट्राई टू हिट ये ऑफ पीस है ना, दूसरा कोई ऑफ पीस है क्या मेरे पास इलेक्ट्रो डैमेज में? और कोई दूसरा इलेक्ट्रो わらわにとって普遍も一種の美 じゃが属性とはいつまでも変わらぬまま続くものではない。 क्या बोले यार, मेरे को कुछ भी बोले लेकिन मस्त लग रहा है सुनने में। थैंक यू। 61 to 38, ओके। और भी बेटर हिट कर सकता है क्या? अटैक में यहाँ पे और क्रिट डैमेज दे सकते क्या मैं? यहाँ तो एलिमेंटल आई गेस नहीं है मेरे पास। इससे बेटर है क्या मेरे पास? ये ऑफ कोर्स राइडन यूज कर रही है माई पैड। आई गेस बाकी ये होगा मेरा बेस्ट गैंग को बिल्ड। 61 to 38 बट आई प्रेफर ज़्यादा क्रिट रेट अच्छा, यू नो। EM कितना? 120 EM है। यस अपग्रेड वाज कूलेस्ट दो। हाँ अपग्रेड तो ठीक है यार। सबसे बेस्ट बेंटन एलियन अल्टीमेट एलियन फोर्स। हाँ वही भाई यार। आई मीन मेरे को ओरिजिनल बेंटन भी काफ़ी पसंद आता था यार, और मेरे को उसमें का सबसे फेवरेट कैरेक्टर तो मेरे को एक्सेलरेट लगता था यार। एक्सेलरेट सबसे बेस्ट यार। आई नीड अपग्रेड। 最近の八重顔の小説は異世界転生ものが多すぎる。 Imagine upgrade fuse with your PC by 100 1000 FPS गेमप्ले है। क्लासिक बेंटन भी अच्छा लगता था यार मेरे को, उसमें का सबसे बेस्ट भाई। और अपग्रेड तो भाई ऑफ कोर्स यार, वो तो किसी से भी फ्यूज कर जाएगा यार, वो तो उसका बात ही हटाओ यार, वो तो नेक्स्ट लेवल था यार। मेरे को एक्सेलरेट सबसे बेस्ट है। ओरिजिनल बेंटन का थीम सॉन्ग सुनिधि चौहान ने गाया था। वो क्या इसी ये है बेंटन भाई। क्या सॉन्ग था यार, लेकिन कुछ भी का यार, सॉन्ग बड़ा मस्त था यार भाई एकदम। मतलब अकॉर्डिंग टू पावर लेवल बेंटन यूनिवर्स में लेवल 7 या 8 थ्रेड को बराबर है। एवेंजर लेवल 4 थ्रेड के लिए आते हैं। एक सेकंड में समझा नहीं। अकॉर्डिंग टू पावर लेवल
बेन मार्वल यूनिवर्स का लेवल 7 या एक सेकंड, बेन मार्वल यूनिवर्स का लेवल 7 या 8 थ्रेड के बराबर है और मार्वल एवेंजर लेवल थ्रेड लेवल 4 थ्रेड के लिए आते हैं। आई मीन ये कह रहे हो कि बेन 10 में 7 या 8 पे बेन 10 आता है, राइट? और एवेंजर लेवल 4 पे आते हैं उसके थ्रेड, आई मीन थ्रेड होता है तो लेवल 4 पे एवेंजर्स आते हैं, आप ये कह रहे हैं, राइट? निक फ्यूरी तो कहता है, वैसे निक फ्यूरी तो बोलता है थ्रेड लेवल 4 फर्स्ट एवेंजर में। हे एमजे भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। बेन 10 का हिंदी थीम सॉन्ग तो मस्त था, हाँ काफ़ी मस्त था। यूट्यूब में आता था? नहीं भाई, मैं यूट्यूब भी नहीं, मैं सीएन पे देखा हूँ, कार्टून नेटवर्क। उसमें ग्वेन का वॉइस मस्त था, हाँ ग्वेन का भी वॉइस मस्त था। छोटा भीम स्टिल स्ट्रॉन्गर। पहले हिंदी डब कितने अच्छे होते थे, कोई एक सेकेंड होते थे, अब तो कोई पैशन ही नहीं दिखाता करेंट हिंदी डबिंग में, पता नहीं। नॉट एग्जैक्टली गैलेक्टस और डोरमामू पूरी दुनिया के लिए लेंगे, पूरी दुनिया के ले लेंगे। आई मीन एवेंजर को तो पता भी नहीं चलेगा ना, पूरी दुनिया के ले लेंगे तो। डोरमामू को तो अकेले हरा दिया यार, और गैलेक्टस अभी तक आया नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते यार इसके मामले में। तुम देख लो, छोटा भीम लड्डू खा के सबको हरा देगा, समझ रहे हो कि नहीं? टुनटुन मौसी की लड्डू खाएगा छोटा भीम। आई इज लाइक भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम 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 भाई, टायरस भी हार जाएगा एवेंजर की हमसे की किरमाड़ा सोलो लॉस। डोरमामू वापस आ रहा है आफ्टर दिस मल्टीप्लेयर। ओके ठीक है, आई सी। देखते यार, मैं तो अभी फॉलो नहीं कर रहा यार मार्वल को। टुनटुन मौसी भीम कल लड्डू ना खाने लगे। एक सेकंड, टुनटुन मौसी का ही लड्डू ना। ओके ठीक है एमजे भाई, मासी बोलता है वो। हेलो मतलब मार्वल यूनिवर्स में विलन्स के थ्रेड लेवल होते हैं, एग्जैक्ट लेवल 4 थ्रेड से एवेंजर लड़ते हैं। हाँ एग्जैक्टली वही कह रहा ना, मैं आपका बात समझ गया, तभी मैं कह रहा। आपने बेन मार्वल यूनिवर्स लिखा था ना, मैं इस बात पे कंफ्यूज हो रहा था। आप ये कह रहे थे यस थ्रेड लेवल 4 होता है। अरे पहले एवेंजर में बोलता तो है निक फ्यूरी थ्रेड लेवल 4 इन्फॉर्म करो सबको। लोकी आई मीन यू नो, तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। पहला एवेंजर देखोगे तो वो बोलता है जब वो टेसरैक्ट आई मीन ये लेके जाता है माइंडस्टोन, टेसरैक्ट ये और माइंडस्टोन दोनों। भाई उस समय अगर वो पुराना फिल्म देखो तो अब ध्यान आता है, अरे भाई दो उस समय भाई ये थे इन्फिनिटी स्टोन एक साथ थे। कोई ना, फिर भीम चुटकी बजा देगा। अरे लाल चुटकी तो ऐसे ही अब समझ रहा है तू क्या कहना चाह रहा है? भीम चुटकी बजा देगा। भाई देवे चुटकी और भीम बहन है रे, भाई बहन है रे। शादी तो इंदुमती से होगा भाई। मैक्स थ्रेड लेवल किससे पता है आपको? एमसीयू में मेरे को नहीं पता यार मैक्स थ्रेड तो। फॉलोइंग ओके, चलो आर्कन क्वेश्चन स्टार्ट करते गाइस। मुझे क्या, मैं तो लाइक करने आया था। ए सुभजीत वेलकम बैक। ए टुनटुन मौसी का लड्डू नहीं खाएगा तू? हैं भाई बहन है, व्हाट द फक, ये कब साले भाई बहन पहले से ही थे आराम से। राजू चुटकी बजा देगा। सेलेस्टियल ओके, सेलेस्टियल है ओके। मैक्स थ्रेड सेलेस्टियल है, क्या बात कर रहा हो सच्ची में? भीम और चुटकी कब से भाई बहन हो गए? स्वीट होम अलबामा ना करो। एक सेकंड, अरे भाई बहन ही है डूड। अरे कम ऑन, भाई बहन थी यार, जब हम देखते थे तो भाई बहन थे यार। वो तो लिटरली इंदुमती से शादी होने वाला था भीम का तो। हेलो गाइस, अब पता नहीं उन्होंने स्टोरी चेंज कर दिया क्या? बताओ राजू ही तो जॉनी भाई है। राजू सही बोला राजू जी, तब सही पकड़ा भाई। राजू ही तो जॉनी भाई है भाई, राजू ही तो जॉनी भाई है। माइटी राजू किन लोगों ने देखा है भाई? माइटी राजू, एक सेकेंड ऑडियो मेरे को ना म्यूजिक ये करने दो। और ये बैकग्राउंड म्यूजिक हटा रहा क्योंकि आर्कन क्वेस्ट करते हैं, ठीक है? भीम ने तो टुनटुन मासी प्लस चुटकी को अपना लड्डू खिलाए हैं। अच्छा ऐसा है क्या भाई? ये क्या कह रहे हो यार? ऐसे मत कहो यार, लॉल।
ना रे सालो हट साला, मैं जब देखा भाई भाई बहन दे बिजी व्हाट द फक। मतलब ये काम こ मेंशन の店は私が小さかった頃 लॉल にパパと अरे 何 यार 回か来たことがあるんだ。 इंग्लिश करना था लॉल में बोल で रहे も大 जापानीज きくなってからはあんまり来てなくってね。口に合うといいんだけど。心配すんな。それにオイラたちこういうレストランで食べ कुछ भी る तो の यार って久し पाइमोन ぶ का りだ वॉइस から क्यूट है यार すっごく楽し जापानीज み में だぜ。じゃあ注文 वन してく अब るか ऑल らちょっと待ってて。 अभी क्रोनोलॉजी, अरे हमने ध्यान नहीं दिया यार क्रोनोलॉजी, सच्ची बता रहे हैं। 美味しそうだぞ。フォンテーヌ時 चैनल 代 भाई वो तो ओनली एक रेफरेंस है स्टैनली, そうよ。 उसका कोई प्रूफ नहीं है もしよ मांगा ろし में। ければ आई मीन नहीं है यार, कम ऑन डेडपुल जाके मिला है भाई, もらうから。 वन अबव ऑल डेडपुल जाके मिला है वन अबव ऑल से, ठीक है। それでもやっぱりスピナディロー बीसी ス एक शो आता था, इंडियन शो था, बेंटेन की कॉपी था, लाइक उसमें 5 एलियन थे, कार्टून नेटवर्क पे आता था, वो भी सही था। उसमें तो बेल्ट से एलियन बनता था, पता नहीं भाई ये नहीं बात। तुमने पोगो पे छोटा भीम देखा? 祝勝会にしてもいいんじゃないか。 मैं पोगो पे देखा यार, मैं पोगो पे देखता था, पोगो पे ही सबसे स्टार्टिंग में आता था यार, अल्बामा टीवी पे नहीं देखता था मैं, ठीक है। मैं ओहायो से नहीं हूँ गाइस, मैं पोगो पे ही देखता था, ठीक है। Certainly worth celebrating. Let's go. 言われてみれば確かにそうね。めでたいこ Kids とだ from し。 Ohio. マスター、 ए पोगो पे ही देखता था मैं, of course पोगो भाई। 別に料理を追加しろって意味じゃない。 जितने बार नाविया को देखता हूँ उतने बार सोचता हूँ बिना रीजन, लिटरली बिना रीजन उसके थाइस शूट किए हुए। एक सेकंड तानस भाई, हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। ओरिजिनल सीरीज थी पोगो का, हाँ एग्जैक्टली ओरिजिनल सीरीज। अल्बामा टीवी क्या है बीसी, मेरे यहाँ क्यों नहीं आता है था। 踏み出した。確か अरे に अल्बामा कहने का मतलब वो ऐसे जोक 少 मार 女 रहे に यार, 意図的に ठीक 溶 है। かす組織がいるのは判明したけど、 Come そ on の guys, 本 तुम 当 लोग の को 目 पता भी 的 नहीं はま अल्बामा だ क्यों 明 कह ら रहे か हो। になってないし。目の前で見てなかったら人が水に溶けるなんて到底信じられないことだよな。 चुटकी के साथ हो या 誰も भाई 想 तू 像で मुझे きないよう स्वागत तो な भाई 異質 राजू な ही 要素が बनाएगा, 連 लेट्स 続 गो 少女 भाई। 失踪事件には存在する。 हाँ だ साले か तुम लोग ら स्ट्रीम そ पे の आज 調査の चुटकी और 鍵 भीम とな कर る部 लो 分 आज, も ठीक ず है っとつかめてないの यार। かもしれない。 लिटरली यार मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, तुम लोग कह रहे यार चक्कर, मेरे あ को い तो つが पता 真 चला भाई। 実を最後まで言え वही तो नाविया का फेस それ में がまさか क्या ही 真実まであと一歩ってところなのに。 तारस भाई हमारे पता नहीं कहाँ こうい कहाँ った देखते 事 हैं 件 भाई, の調 गलत 査で बात। はたとえあと一歩に見えても手がかりが完全に立たれればそれは超えられない溝 बेन に एक्स な ग्वेन る。 कर लेते हैं फिर। हाँ एग्जैक्टली कर लो これ गाइस, から बेन 行 एक्स われ ग्वेन るであろう公的な लिंक 調 भी 査 भेज につ दूं いて क्या? は माय बैड मेरे को नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। मेरे को नहीं पता गाइस, गलती हो गई। ए मनन भाई रिलेशनशिप क्या हाल चल, कैसे यार, कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? 違う視 कैसा 点 है, が必要 कैसा だ क्या と思う तुम्हारा から वीकेंड यार? ね。ずっと同じ視点から見てたら意図的に隠蔽されたり警戒されやすくなったりする。時に अपने は視 टीवी 点 में を कौन 変 कौन え से ない हैं? と राजू को 真 तो 相が見えて टुंडन こな मौजी い。 को रोज だからこそ私たちスピナディロースが存在す टुंडन る。 मौजी को रोज हो जाता है, एक सेकंड होता है रियाज मौजी का अलावा टीवी है तो चाइल्ड नहीं देखे, नहीं डूड है नो। मैं भाई 手 कार्टून の नेटवर्क 届か देखता ない रहा, 視 ठीक 覚に है। こびりついた汚れ मेरे は को मत काउंट करो 私た उसमें ちを取 सालो। り除くってわけ。おいらちょっと तारस भाई को 考え क्राइम すぎてたかも。 क्राइम स्टोर में एक सेकंड क्राइम स्टोर मिल गया लगता है, एक まあ送別会なんだ सेकंड। しこの話題はもうやめよっか。 हाँ लग रहा है, それよりも別の लग रहा है क्राइम 話を स्टोर मिला है। हाँ? そうだ、これからあんたたちはどうするの？ We want to ask the Hydro Archon for some information. そうそう。さっき審判が終わった時もずっと話を聞く機会がなかったし、場所も場所だったから。 पता नहीं क्यों मन कर रहा है なるほど。 पाइमोन को मुंह पे मारने का। 一番の目的は डोरा द एक्सप्लोरर 数字とお भाई しゃべりすることね。 डोरा नहीं बोलते उसको, でも ठीक है। डोरा द ずっといい एक्सप्लोरर 機会が इसको 見つからないってわけか。 अंधी प्रो मैक्स フリーナ様 बोलते に हैं 会 भाई うには इसको। 長い अंधी 列に प्रो 並ば मैक्स ないといけないって聞いたことがあ ठीक है, る。 वो डोरा नहीं है, अंधी 今 प्रो 日逃 मैक्स し है たら भाई। しばらく待たないといけないだろうね。だよな。水準 सही は बोला, जोरो द 今回ので大人気だって अरे 前 इसको に कुछ 聞いて दिखता ही る नहीं し。 था भाई। आपके 直 पास 接話 कौन す सा の फोन っ है? て मेरे पास やっ आईफोन ぱ है। り難しいんだな。 जोरो द एक्सप्लोरर, हाँ जोरो की तरह उसको नहीं दिखता था। सही बात है यार, एकदम एकदम सही है भाई। क्या तूने एकदम परफेक्ट बोला भाई।
正当じゃない手段を取 अबे る भाई हम लोग भी भाई बचपन में बीसी वो पूछती थी तुम्हें दिख रहा है ओ बीसी हम लोग भी खुशी खुशी कहते थे वो रहा देखो डोरा वो देखो वो रहा उधर उधर डोरा देखो और कुछ देर में साला चूतिया वो जब करता था कहते थे हम लोग कितना खुश होते थे भाई अरे हमने बता दिया मैच हमने बता दिया 公演が終わった後にフリーナ様と面会できるよう要求するの。続きが気になるフリーナ様はきっと演劇を साला 最後まで टीवी 見 में た देख い के と कहते थे 思う वो रहा डोरा वो रहा वो रहा वो そうすれ देखो ば वो देखो こっちの तुम्हारे 要 पीछे 求に何だって答 स्नाइपर えてくれるでしょ वो कहते थे ना क्या बोलते हैं स्वाइपर नो स्वाइपिंग स्वाइपर नो साला अभी तक याद है मेरे को what the fuck डोरे बन के चले एवरीथिंग डोरा अभी तक मेरे को याद है स्वाइपर नो स्वाइपिंग लॉल फक 劇だって覚えなきゃいけないしだったら मैं तो अभी डोरा को रहा था बता ベッドの下に忍び込んで夜中に起 हाँ こすの सॉन は द सिप どう भाई निकलोडियन भाई निकलोडियन इज लव यार सॉन द सिप यार वहाँ पे फिर स्पॉन्ज बॉब देखता था मैं निकलोडियन में भाई वो कहते थे स्वाइपर नो स्वाइपिंग 3 बार बोलो हमारे साथ स्वाइपर नो स्वाइपिंग स्वाइपर नो भाई हैज अ स्मॉल लाइट तुम्हारा चढ़ा कर दिया そういった状況でどうやって捕まらないかを考えないといけないんじゃないか मैप 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 कहो मैप ड्रैगन डेल्सियस ड्रैगन टेल्स भी काफी अच्छा था यार उसके चुन्नू बंदर का क्या नाम था बूट्स था यस एग्जैक्टली बूट्स निकलोडियन इन दया की वॉइस है लॉल ओ माय गॉड क्या बोलूं यार मतलब まあ冗談 ओ は भाई ここまで पुरानी に याद し है て एनीस フリーナ様が休む時 स्लग に टेरा 隙間 फैन に ना 投げ込む स्लग くら टेरा い क्या なら होता है できる भाई んじゃ हमें な नहीं い पता वो स्लग टेरा 特に नहीं あんた देखता は था 今 मैं 日の法廷でフリーナ様 अच्छा を打ち明 ड्रैगन か बॉल した जी でし देखते ょ थे गाइस तुम लोग उस समय ड्रैगन बॉल जी देखते थे उस समय ड्रैगन बॉल जी देखता था यार मैं 片やあの方はリネに濡れ衣を着せるところだった उस समय कार्टून नेटवर्क में स्लग टेरा डिसकंटिन्यू नहीं स्लग टेरा तो नहीं देखा मैंने उस समय ड्रैगन बॉल जी भी आता था あ वो い भी つが देखता था 休んで मैं る時間帯を狙って उस समय फ्रीजा आग चल रहा 法 था 廷 यार での負い目から断れ कौन な आ い रहा っ है てことだろ अबे साले मैं क्वेस्ट कर रहा मैं आर्कन क्वेस्ट बग नंगा बंदर सिर्फ शूज पहनता था सही बोला सिर्फ शूज पहनता था 食事が終わったら早 रात 速 को 10 बजे आता था ना रे सुबह आता था रात को 10 बजे भी आता था सुबह भी आता था रे मैं स्कूल जाने से पहले देखता था 私の本頼んだ नहीं मैं ये किडबू नहीं देखा था मैं ये देखता था क्या बोलते हैं उस समय मैं जब मैं देखता था तब फ्रीजा आग オ चलता イ था ラの近くに置いてあったからついもう一杯 उस समय गोकू सुपर सेन बना था यार वो क्या हाइप था यार もう食事 बीसी も終わるし大丈夫 वो क्या हाइप था डिस्कॉर्ड चेक कर एक शॉट भेजी है वो देख अभी もう नहीं 注 देखेगा 文 मैं しない方がいいと思うぞ सुबह अपन なんか बेंटेन देखता 味 था がしょっぱかったし बेंटेन तो यार शाम को भी 全然 देता था 美味しく यार なかったよな बेंटेन तो हर एक समय देता था यार उस समय बेंटेन काफी ये था अच्छा दया बेन निकल लोड़ी एक सेकेंड निकल लोड़ी अबे भाई लाल भाव भी लाइक मेरे से पहले कौन आ गया बे भाव भी लाइक भाई हिंदुस्तानी भाव भी लाइक है एक सेकंड मेरे से पहले कब आ गई दया बहन मेरे से पहले से है भाई इस बिजनेस में गाइस लाइक करो ना कौन कौन लाइक नहीं किया यार लाइक करो रे स्ट्रीम गलत बात मुझे ड्रैगन बॉल जी समझ नहीं आता था क्योंकि वो एपिसोड में आता था और घर वाले कंटिन्यूअस देखने देता अपना निकल लोडियन भाई निकल लोडियन だったらこのお店のポンタはブラックリスト入りってことでみんなお腹いっぱいになった मैं तो सिर्फ लड़ाई के लिए देखता था अरे नहीं मैं फॉलो करता था यार ड्रैगन बॉल देखता था यार ओरिजिनल सीरीज नहीं देखी थी लेकिन जी देखना चालू किया था मैं ड्रैगन बॉल जी देखना चालू किया था食べ過ぎたぜもう食べないぞ Would you try walking you know इतना お前と一緒じゃ普通すぎるだろ今月の組織の経費はあとあれ
ナビヤ、そこで何してるんだ? हाँ ड्रैगन बॉल से पहले ड्रैगन बॉल जी देखा है सबने. सच्ची में ड्रैगन बॉल नहीं देखा है मैंने, ड्रैगन बॉल जी देखा है भाई मैंने. पाइमोन ने अबे वो कह रही है खाना, उसने पेट भर गया भाई, उसका पूरा पेट भरा हुआ है, इतना खाना खा लिया. तो कितनी क्यूट लग रही है यार. बट डूड लिटरली 4K में देखने में ना नाविया क्या दिख रही है यार. उसका आंखें देखो पे गाइस, तुम लोगों को पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन भाई उसकी आंखें देखो यार. आई मीन कितनी चमक रही है यार. ओ माय गॉडनेस, लुक एट दोस लिप्स यार. कैनस भाई इसी पे तो तुम फिदा नहीं हो गए चार जब या पर्क देखे. किसी को निक का इंट्रो याद है? बच्चे गंदे गंदे हरकत करते थे, स्क्रीन में लगता था, स्क्रीन में लगाते थे एंड द निक पाइमोन इज बांड. ड्रैगन बॉल बाद में देखा है. हाँ एग्जैक्टली. कैन सी गिव डीजे तो कुछ इसी से. पल्लवी भाभी को देखो, पल्लवी भाभी देखो इस हरामी को. एक सेकंड, मैंने कहा कुछ कहा भाई. Look at those thighs, look at those thighs. भाई अंडर वाटर मजा आएगा भाई. वेरी नाइस आइडिया. अबे नाविया को भी अरे अरे देख रहा गाइस, थैनोस भाई भी लाइक अपन भाई निकालेगा. मैं अभी लिप सिप्स कर रहा था, साले ताइस कर रहा है. मैं कह रहा कैरेक्टर डिजाइन बात कर रहा मैं, ठीक है हरामी साले है. देख रहा साला ठरकी हो गया ये चार. मैं तो भाई कैरेक्टर डिजाइन की बात कर रहा था. भाई PS5 में भाई 85 GB का गेम है बहन को. ओ गाइस यहाँ पे कटसीन आएगा. डैम नाउ आई नो, यहाँ पे कटसीन आएगा. कैन यू यूज दोस थाइज एज पीलर्स? उससे बेटर पिलो है ना मेरे पास. हेयर स्टाइल लाइक ब्रॉनिया. हाँ कह सकते हो. निंजा हथौड़ी में आ गया. हथौड़ी निंजा हथौड़ी भी देखता था यार. हाँ निंजा हथौड़ी. निन 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 भाई असली निंजा वही है भाई. नारुतो तो बाद में आया भाई, पहले निंजा हथौड़ी उसके बाद नारुतो. There aren't many people around anymore. Looks like that boat तेरा that took कट हो the जाएगा. areas might have been the last one. Looks like we're back here again. Huh? Traveler? Are you hearing voices again? Yes. Ugh, that's kind of spooky. Are you sure we don't want to come back in the morning? पसंद मुझे भागने वाले और फाइट वाले कटसीन नहीं है. अच्छा पसंद नहीं है. ओके है. चॉकलेट रोल लेट्स गो भाई. सीजर अभी आने वाला है भाई. सीजर क्लोरेंट करेगी सीजरिंग. इस पे क्या बोलते हैं? आई मीन माय बैड. सीजरिंग क्या बोल रहा है? आई मीन फाइट करेगी क्लोरेंट मेका एनिमीज से. डूड व्हाट द फक यार, पागल हो गया क्या? मैं भी क्या बोलता रे, कुछ भी वर्ड बोलता है. नारुतो की एफके निंजा थोड़ी लुमिन का फेस यहाँ बहुत क्यूट था. अच्छा ऐसा है क्या? Stop walking. Come on, wake up. अबे यार वो बढ़िया था यार. मैं क्या बोलूं भाई. हेलो तो बस कुछ है एक्सप्लेन करने के लिए डूड. आई मीन क्या बोलोगे वहां पे? वो उसका कोई वर्ड है क्या? जब तुम्हारा आई मीन कोई अगर तुमको जांघों के बीच में दबा दे और उसके बाद तुमको उठा के पटक दे, इसको क्या बोलते हैं? तुम मुझे बताओ मुझे उसका कोई वर्ड है तो बताओ. Are you my dear Vache? क्लोरीन रोबोट को अपनी थाई में दबा लेती है. एग्जैक्ट चोको है. एक सेकंड. एंड्रोस भी लाइक चोको है. Do you know where my love is? I'm afraid not. I'm चोक स्लैम. साले उसको चोक स्लैम नहीं बोलते हैं साले. थाई में दबा के चोक स्लैम बोलते हैं आराम. चोक स्लैम गर्दन पकड़ के करते हैं साले. वो भी हाथों से हरामी. घुटने क्या बोलते हैं? थाई में दबा के चोक स्लैम नहीं करते. साला आया बड़ा चोक स्लैम कर. dissolved amidst the tide, never to be recovered. How much have I lost? How many things that I once held dear while on land have I since forgotten? Crystal crush between thighs. Okay, ठीक है. एक सेकंड. क्या
You once were. Yes, that is what I was once. But now, ताई से भी चौकी I am बोलते but हैं the ना, रहने consciousness दे of चुप one रहे. who is lost. लब नहीं पता therefore. लेकिन लड़ा लगवाना है तो लड़ने आ जा. ठीक है भाई. ट्रांस बन जाऊंगा वुमेन रेसलिंग में जाने के लिए. अच्छा भाई देख रहे हो भाई बंदे आजकल क्या क्या कर रहे हैं. मुझे भाई क्या बोल रहे हैं ये उसने 50 रुपए कार्ड बहुत I only vaguely remember being covered in light blue आरआर water. कर रही है. अरे भाई रहने दे भाई क्या बोलोगे अब. बाद में जब स्टोरी पता चलेगा तो तू कुछ नहीं कहेगा इस पे. एमजे फिर भी विन होंगे डाउट है. क्या मतलब कह रहा है कि भाई लड़की से एमजे भाई हार जाएंगे. कहेंगे कि हार में भी मेरा जीत है. एमजे भाई कहेंगे हार में भी मेरा जीत है भाई. Loved exploring places कोई of बात नहीं हार peril. जाएंगे लेकिन मेरी जीत हो रही है भाई. No matter where I went, Vache would go with me. I knew how dearly he loved me. And I also loved him equally. कोई फायदा as much. नहीं. रूल्स निकाल दिए नहीं. अच्छा ऐसा है क्या. We can no longer go back. The pain of such parting. I never knew how heavy it could be. भाई ईथर को देखो यार कैसे दिख रहा है. एकदम मस्त सेक्सी. No. कौन से रूल्स मेरे को भी Our नहीं. reunion no longer has any रेसलिंग का तो नहीं पता meaning. मेरे को. There is no way for us to create any new memories. मेरे को ब्रूटली हारना है. अरे The thought of me लेट्स gives him no succor. बस तुम उठते रहना बाकी काम So हो let जाए. it lie forgotten beneath the waters. If you meet Vache, tell him not to look for me. Tell him to move on. That is the only thing I still remember. I believe it will be hard for him. Perhaps that is so. As I was submerged in the waters, losing consciousness, I Trans saw people Vache above the surface. aren't allowed in women's His sports eyes anymore. were filled सच्ची में नहीं with हुआ. such हो गया sorrow. क्या हटा दिया. बहुत अच्छा भाई. Such longing. आरआर only चल I रहा could है. have कोई बात comforted नहीं कोई बात नहीं. थोड़ा और देख ले आरआर. Told him that I did not तू suffer. भी तो साले आरआर करता है कभी कभी है. Indeed. भूल गया साले I had felt जब तू a आरआर great करता था. warmth. हाँ? Is that what you call it? Dissolving. If anything, I consider it a form of release. ना रोहित भाई अभी कर It रहा was है a यार. state of neither fear nor frenzy, नहीं करता with अपन only करता an साले. endless peace, like the water's still surface. चांद पे अपन घंटा चांद पे है. I could also साले liken अपनी it खुद to की being गांड a पे thirsty कह रहा person who चांद पे drinks है. water for the first time, and only then sees how they have lived for so long in फालतू a में मैंने world of अपना काट endless दिया अपना. एक want सेकंड. and anxiety. क्या काट दिया एमजे भाई. I think I hear your एमजे भाई क्या काट दिया. companion. It's time for you to go, I think. क्या काट डाला. Is that time? Farewell then. I am glad that you were able to sense my presence. Guys, cutscene coming. Remember, कटवा लिया. if you see Vache, tell him not to seek me out any longer. Wake up! Come on, hurry! Navi is outnumbered! Hi. Demoiselle, look out! अभी पिचकारी गन से मारेगा. ट्रैवलर देखो गाइस. Here comes the mommy chlorine. Let's go. Quick, now's our chance!
राइडन क्लोन ना बे एक्सेप्ट स्टाइल फाइट में भाई उस बटन को कोई छोड़ दो भाई. Thank you for lending us your sword there, Clorand. But before I do so, could you explain how you managed to show up here? I followed you. It seemed to me that danger has followed you more closely as of late. I believe that following sorry, someone Mom. without their knowledge is actually called stalking, is it not? स्टॉक. अरे Mr. यार आज Thomas's सबने last लगाना wish चाहिए था. was for me to क्लोरैंड ensure हाँ your भाई ये भी safety. रैंड फैमिली से And I will not betray his trust. ब्रोनिया He रैंड would do the same. कोकोलिया रैंड फैमिली से ये भी Do क्लोरैंड. not speak of my father. बटन देखो हाँ बटन ही देख रहा है मैं भी. Sorry, demoiselle. I was not strong enough. Thank you for your aid, Miss Clorand, but do keep an eye out for your manner of speech. I believe we all wish to avoid unnecessary emotional harm. Sorry, I did not consider your feelings. भाई इस मॉमी को तो निकालना बनता है. What else do you know? How did you come to the conclusion that I'd be in grave danger? I doubt I You know know much that more than you. reference Iron But I Fist वाला believe that the अच्छा. mastermind behind the serial disappearances is very powerful. अबे अंबुजा Your सीमेंट से performance बनी tonight will almost है. certainly किंग चैन attract their भाई attention. अंबुजा सीमेंट से बनी है. वेलकम बैक. I'm sure they've known about me. नाविया का एक To चीज be देखा honest, ना I'm shocked दिखा. it's taken them this long to act क्या against दिखा me. रहे हो नाविया का दिखाओ जरा. And what about these Gardamex? I thought only those associated with the Maison Gardiennage could control them. None of these mecha have serial numbers. I was sure to check a moment ago. They are not the ones used by the authorities to enforce the law. I can only conclude that some powerful or wealthy party must have obtained them via illegal means, deploying them as a private force of sorts. What? Your point being that they're out of Spina di Rosula's league then? Yes. Be careful and do I not need these act bitches rashly. right now. अच्छा. I will continue Sale? investigating no matter what. We will bring the truth to light. That's ठीक my था father's true है नाविया के. अरे हमने देखे हैं भाई. रोहित भाई तुम रहने दो यार. रहने दो हमने देख लिए भाई. Clorand. But if you get any ideas, दोनों वाइफू tell चाहिए me सीसी first. में. I अरे don't much चाहिए appreciate चाहिए being दोनों followed. चाहिए. खासकर ये I वाली do तो not और think ज्यादा that they'll strike चाहिए. again anytime soon. So I shall stop भाई following तकिया you. बनाना है इसके. Good day, all. तो मुझे भी भाई. Oh my god. Right. I suppose that's the best news we've कब got आएंगी today. यार पता नहीं भाई. Mademoiselle, I believe that Miss Clorand was being sincere with you. If we tried, we could attempt to thaw relations a little. I know, I just... She's... मुझे बोल रहे थे कहाँ देखते हो मोर थाई थिक्स कब आए. अरे भाई इसी के वजह से तो साला गेंशिन जिंदा है भाई. इसी के वजह से है गेंशिन जिंदा. वरना भाई ये भी कब का टावर ऑफ फैंटेसी हो गया रहता भाई. Oh, thank goodness! Between 4.3 Those Gardamex 180 डेज का वेलकिन ले ले. मैंने देखा गरीब आदमी को किंग चैन भाई स्पॉन्सर कर दो यार. ये यूआईडी रहा. भेज दो जरा एक वेलकिन. किंग चैन भाई भेज दो यार गरीब Oh, आदमी. and there was that champion duelist named Clorand who came out to save us too. We got lucky there. गॉड गई चा मुडेन. मैं क्या कह रहा है. गॉड गई चाह मुदाने. अच्छा गॉड गई चाह मुदाने. अच्छा तू कह रहा है आर्कन को कह रहा है क्या. मैं इन पर पुल कर रहा है. ओके ठीक है. थिक थाई सेव लाइव्स. लेट्स गो. थिक थाई सेव लाइफ. हाँ सही बोला. नाइस मोटो यार एमजे भाई. नाइस मोटो. थिक थाई सेव लाइव्स. लेट्स गो गाइस. सो यू आर फाइटर ना पाइमोन. Oh. कुछ भी कहो यार. Come पाइमोन now. अपना साइड नहीं Forget all that छोड़ती है. polite talk. That wasn't really a मैं भी अभी farewell गरीब meal हो we had गया. back there. झूठे आदमी Not for किंग me, चैन anyway. आदमी झूठ बोलते हो. In समझ truth, नहीं आ रहा. I शर्म ना आ hope रही that झूठ every बोलते meal हुए. we have पाप together लगेगा shall तुम्हें be a पाप. victory feast. As such, we're still partners. There's no need to thank me. It will take 50 years for me to match Demoiselle's magnanimity. If it were Minus. me, I would have joined the Spina di Rosula on account of her goodwill long ago. All right, you two. That's enough. Actually, Navia, how did you know that we were in danger? You sure did show up in the nick of time. Well, to be honest, you're the one who tipped us off, Paimon. Huh? Really? Paimon contributed somehow? 6 वेलकिन लिया मैंने. Paimon's even more amazing than she thought. Yeah,
Yes. गरीब आदमी All को thanks एक to you वेल्किन भी नहीं grabbing दिया my किंग drink चैन by भाई। mistake. हाँ ये नहीं सोचा कि रियांश को दे देते, एक वेल्किन 5 रख लेता मैं। That help? After we parted ways, I was on the way back to one of our bases when I suddenly thought of what you said. That the Fanta tasted kind of salty and icky. Wait, do you mean that? Okay. Fanta only comes in sweet flavors. So how could it have tasted salty? The color of the drink, if I recall, had also Fanta. been a bit off. क्या So मतलब the भाई? Fanta फोंटा had है, been spiked फांटा, with फैंटा, water from the primordial sea? फैंटा भाई, फैंटा, फोंटा क्या होता है? फैंटा। Yes. So if you hadn't ट्रैवलर drunk जीन that का cup for me, इंटरेक्शन सुना है आपने? वो Spina टैटू di लेने Rosula हैं, is देखते preparing हैं the क्या होता है। grandest of डेली तो awards 90 for you प्रीमोस as ही we मिलेंगे speak ना for यार। saving the boss. किंग चैन ब्रो। Really? फॉर्चुनेटली पाइमन नाइदर ऑफ अस आर फ्रॉम फॉन्टेन। नहीं तो भाई पाइमन कब का डिसॉल्व हो गई रहती, मजा आ जाता भाई। आई I मीन sent मजा नहीं people आता to यार। Hotel de Boer to investigate. But whoever did this left no trace at मेरे को all. बचा हुआ 5 ही That's दे when I देते figured out भाई। that अरे you लॉर्ड। might be in danger and hurried here as quickly as I could. But why would they go after us too? All we did was defend Lenny in court and help clear his name. वो सिंगल चांस लीव नहीं you करता were उसको caught up in ब्लश this mess कराने में। too, अच्छा aren't ऐसा है क्या? लाइन मारता है You did follow a ट्रैवलर plan that they were टीम को। probably डैम, pretty मेरे को proud नहीं of, ध्यान, मैंने ध्यान and नहीं almost दिया got इस their बात name in पे। the process. Speaking of which, did anything strange happen when you drank the primordial seawater? Well, it can't be a coincidence that the traveler fainted just now. He said that he heard that voice calling for Vashe again. Oh, and this time Paimon heard it too. But it was real faint. Does this situation have to do with the primordial seawater then? प्राइमोर्डियल सी वाटर है कहाँ? ये भी तो मैं कंफ्यूज हूँ। Does that mean the primordial seawater raises someone's sensitivity to hydro when it's used on people who are not from Fontaine? That doesn't sound like too much of a bad thing, to be honest. I'm also gained some new New intel? While you were out cold? हाँ। Well, let's hear it, shall we? Me who is aiming for at least 5 to 6 5-star in whole 4x update with my shitty luck. रोहित भाई तुम अकेले नहीं हो, हम भी एफसी में गोल्डन एप्पल रिलेटेड वीडियो मिलेगा तो भेजूंगा। ओके ठीक है। The voice is the fountain belong to one of... Okay, nice. Oh, that is important. हाय एमजे भाई, क्या बोल रहे हैं? That name ज्यादा doesn't सोच हो ring गया, a bell. एग्जैक्टली ज्यादा सोच हो गया। I suppose he क्या hasn't बोला stepped तुम forward दूध as a देते हो witness भाई? Since he saw that young woman dissolve, he was at least at the crime scene. लॉर्ड, But he never तुम gave दूध देते हो? testimony or any information regarding हंस people रोहित भाई, dissolving in हंस the अरे primordial भाई, हंस भाई seawater. हंस तुम। Could he have ठीक been है threatened? चार्ज भाई, हंस भाई हंस। ओके दूध देते हो तुम, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। नीचे से इतना पतला है Yes, तुम्हारा? हाँ? Thank you. This is very important information indeed. We will continue to investigate. All right, partner. Oh, you mean you'll help us investigate? Well, you did say that our farewell meal didn't really count. That means we're still partners, right? And besides, we're in this now whether we like it or not. You're not gonna let those people who targeted us get off the hook so easily, are you, traveler? Messing with us will cost them. Okay. Demoiselle, do try not to look quite so pleased. You are the face of Spina di Rosula, after खाओ all. हाँ, देखो कितनी खुश लग रही है वो। You talk too much. Damn. Well, in that case, let's head back to one of our bases, She looks shall so we? happy, I'll Ray. arrange accommodations for you. We also have some plans to go over, and hopefully we can deepen our bonds as partners. But we'll take that one step at a time, I guess. Don't worry, you two. With us around, our आपने base is चखा है, मैं definitely थोड़ी secure. चखा है। वो कह रहा है ओ लॉल गेम गॉड, ये देखो एमजे भाई, हेलो क्या बोल रहा है ये? ओह अपना दूध चखा है क्या आपने? हेलो लॉल एमजे ब्रो, गेम गॉड क्या बोल रहा है तुम्हारे बारे में? Watch your mouth guys, watch your mouth. क्या बोलते हो तुम लोग भाई? ख्याल ध्यान रखा करो, तुम्हारा ही बात तुम पे भारी ना पड़ जाए। ये देखो थैनोस भाई, चीची किडनैप कर रहे हो? हाँ पीडीएफ फाइल हो गए आप।
भाई कल आंटी थी भाई कल आंटी थी या आंटा पता नहीं। Spina di Rizula. Everyone hold hands. मैं सोचा फ्लावर है। It's right up ahead, but let's make sure we weren't followed first. I've been keeping watch, okay, Demoiselle. okay. I haven't spotted anyone suspicious thus far. Very good. But 10 let's है not शायद। let our guard down for now. I shall find rooms for our respected guests. Thank you, Malus. Now, let's continue, traveler. Okay, 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 Navya. मेरा देखने तो जरा जीन के साथ कितना फ्रेंडशिप। हाँ 10 है। Go as one! Go as one! Ha! Ha! Wind, hear me. I swear by my sword. Barbados, guide us. What a pleasant surprise. ये और ट्रैवलर रूम में जा रहे हैं। अच्छा कोई ये है क्या बोलने के लिए? हाँ सुना भाई, दूध पिलाती है भाई यलान अपनी, I mean यल दूध देती है भाई। आप उस टीपॉट इंटरेक्शन सुना है? ट्रैवलर फुल फ्लड करेगा। अच्छा ऐसा है क्या? Today is a day worth celebrating. If you must ask why, well, let me remind you that today is when you, the one who is blessed by the wind, came into the world. Since this is your birthday, I'll allow you to take it easy. Happy birthday to you. Please forgive my presumptuousness. I hope this gift is to your liking. Happy birthday to you. Noel 5 star is equal to Navia, I think है ना ऐसे मत कहो यार, नाविया अलग होगी यार। नोएल 5 स्टार नहीं है, नोएल 5 स्टार है। गुलाबी गिर के मरा मैं। चार्ज जो स्ट्रीम छोड़ के गया वो गेस, अगर स्ट्रीम छोड़ के गया चार्ज टू गेस। You are gay. This is your base? Lol, एक तो हो रहा है Quite आवाज। what Paimon imagined. Your accommodations have been arranged.
Under the present circumstances, I can confidently say it's the best we have. Thank you. Well, our funds have been a little tight lately. After all, we don't allow illegal or unethical profiteering. In fact, our funds often come from citizenry who support us. Seems like it's tough times for everyone. But if you have the support of the people, that does sound like it's worth it. To be honest, our financial situation was a lot better back when my father was in charge a few years ago. I'm afraid I'm not quite his equal. Your father... He was the previous boss of Spina di Rosula, right? Spina di Rosogula. Demoiselle, if you'll allow me to explain. No. I'll explain it myself. I suppose I couldn't run from this topic forever. And as partners, this is something I hope they can understand. My father's name is Callus. Yes, the same one they call Callus the Unfaithful in the streets. 3 years ago, he was accused of murdering his own friend. But he chose a duel to defend his honor instead of standing trial. He died in the duelist's ring. Oh no. But I do not believe my father was a murderer. I'm sure he was set up. At the time, I believed that if he only stood trial and was duly investigated, something amiss would crop up and prove his innocence. But strangely, he not only requested the duel himself, but rumor has it that even after being seriously injured, to the point where he could be deemed as having lost the duel, he refused to surrender, determined to die in the arena. Amul doodh peeta hai 3 years India. later, I still don't understand why he did that. How could he protect his honor if he's dead? Thanos bhai, If kitna भी शेव anything, कर लियो he आपने? gave up his chance to ना defend अभी के लिए himself. अभी तक का. It doesn't seem quite odd. The closest piece of info I have is that my father had been investigating the serial disappearances case at the time of his death. Ah, so that's why you're so determined to get to the bottom of that case. That's right. I've also tried to investigate the murder my father was implicated in, but I haven't found a single new clue in my countless reviews of the investigation records. However, I believe that if the murder case is related to those behind the disappearances, they must know something. I must know what really happened. Was my father coerced? Framed? Even if he really did kill his friend, I must get to the truth. If only he'd been more open with me when he was still alive. He even hid the fact that my mother died due to complications when giving birth to me. And now, here I am investigating his death. You really जा are रहे a हो? handful, Hey, Cyrus bhai, aren't welcome you, to the street. Papa? जा रहे हो? कितना प्यारी बोली रे पापा. Seeking the truth. इस सुंदरी महिला का नाम नाविया है. क्या बोलते हैं साइरस भाई? चाहिए ये वाइफू? इसके थाइस भी काफी अच्छे हैं. थैनोस भाई बोल रहे तो हम उनकी बातों पे ये करते हैं. नाविया. चलो रोहित भाई जा रहे हो तो कि ठीक है. बाय गुड नाइट. Please, if there is anything I can do, anything at all. I also will never believe that Master Callus murdered anyone. There are none whom I respect more than the two of you, demoiselle. Master Callus did so much good in life, yet I am all it loyal to took Kafka. was Sorry, one Navia. murder case for him to be अच्छा dubbed Callus the जिंगलियों का आने तो फिर देखते हैं Unfaithful. तुम्हारी कितनी Even लॉयल्टी our रहती है support काफका has के साथ. decreased greatly due to that incident, hence our strained finances at present. Wait, if Callus was such a good man, wouldn't people at least be a little suspicious when he was accused? No. Perhaps people just revel in that kind of drama. It's not something exclusive to people from Fontaine, really. उसने Everyone's नहीं like पूछा. that. लॉ. People love watching the evil turn over a new leaf, but they also enjoy watching good people fall into an abyss from one slip-up just as much. But how could... never mind. If Callus was really falsely accused, we have to find the truth. He didn't deserve to have that happen to him. There is one other thing.
Master Callus's opponent in the duel was Ms. Clorand. Oh, her? Well, then. ये सिंपिंग बिजनेस में कोई लॉयल्टी नहीं होती है जहाँ She was the one who जहाँ killed कावे him? वहाँ दूध है जहाँ दूध है वहाँ मेरा मुंह है लॉल क्या कह रहे हो एमजे भाई हेलो जुंगली तो बाहर वाली काफका तो एक सेकंड जुंगली बाहर वाली काफका तो परमानेंट अंदर वाली काफका तुम्हें बाहर निकाल देगी टेंशन ना लो Yeah. अरस That's not the भाई sort of thing that you can just let go and move on from. Ms. Clorand has always placed great emphasis on the honorable nature of the duel. दोनों If खतरनाक her वुमेन opponent है doesn't हैंडल नहीं कर yield, पाओगे she will not stop either. She knew Master Callus beforehand and greatly respected him, but seeing how he was resolute in the arena, there was only ever one choice she could have made. It's not that I don't understand her at all, but I just can't deal with this yet. Don't worry, Navia. Paimon knows how you feel. You don't have to force yourself to do that. Afterward, Ms. Clorand told us that at the start of the duel, I have a quote that is Master close to my Callus heart. Wanna requested hear? that she ensured there was Navia's safety. अच्छा होना चाहिए गेम गॉड भाई अच्छा होना चाहिए ठीक है चलो शेयर करो गेंशिन में मैं सिर्फ बाल का लॉयल हूँ अच्छा तुम बाल के लॉयल हो किसके बाल का लॉयल हो कौन से बाल का लॉयल हो आप then that incident okay Yes, that is our understanding as well. Oh, Papa. What madness drove you to ask the person who killed you to take care of me? hey गेम गॉड भाई क्या All मतलब right. तुम भाई लॉटर को ही देख के भी तुम That's the जैक ऑफ कर information I wanted to सकते share हो with you. Even if it did sound like I was just complaining towards the end. oh भाई lol Thanks. You two should go and rest. This was quite a day after all. lol जैक भाई अब तुम पे डाउट हो रहा है पर्पल है Please, Purple hair relax बहुत है and यहाँ get some sleep. We will ensure you rest soundly. सैरस भाई एक और आ रखी है क्लोरेंड ठीक है उसको देख के तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा राइडन शोगन भी थोड़ा भाई तो उसके नीचे लग रही है पता नहीं क्यों Me also loyal to Raiden. Raiden A. Paimon, मेरे को भी जमा यार ये. Feels almost too safe. Booba sword, let's go. Huh? हाँ वो भी बूबा शॉट यूज करती है टेंशन ना लो हेलो साइरस भाई वो भी बूबा शॉट यूज I करती sent है them back to Poisson. It's Spina de Rosula's place of origin, and where we Poisson. have our headquarters. There's not much for them to do here at the moment. Paimon gets the feeling that you're just trying to get them off your back. But never mind that. When did you get back? Were you I love waiting chlorine the whole gas time? एक सेकंड No, I just returned after going out for a क्लोरीन या while. ओके I did क्लोरीन some गैस ओके investigating yesterday मैं क्लोरीन पढ़ regarding the रहा name हूँ Vache. Wait, so you didn't sleep at all? भाई गलती से फिजिक्स How could I after having such critical केमिस्ट्री new लैब में ये मत evidence कर देना appear? क्लोरीन को क्लोरेंड Guess Paimon wasn't speaking for everyone just now, huh? Unfortunately, this name seems to have been wiped from existence. It doesn't seem to have a match anywhere. I suspect that those behind this have already taken steps to hinder an investigation from this angle. But that does prove that this Vache person is a key witness in the गेम गॉड वाह incident. वाह Does that mean we're too late, though? हाँ टू No. लेट तो There is one ray of hope. यार डिटेल तो One दिख रहा है place यार in इस गेम में Fontaine यार that they आई मीन would find almost impossible लुक to एट दोस threaten. डिटेल गाइस No डिटेल matter तुम लोग how को दिख much रहा है they आई नो wanted आई डोंट to. नो स्ट्रीम पे तुम लोग And कितना that क्वालिटी में दिख is रहा है the लेकिन यार archives आई kept मीन by 1080p Chief Justice लेकिन 4K में Neuvillette. यार A डिटेल्स आर place where लाइक detailed files crazy. on all the cases in recent years are kept. If the Oceanid you met is one of the young women who went missing recently, we should be able to find some related information there. So Neuvillette maintains an archive of Neuvillette. case files? Whew. Guess that's the hard work What, ये कैसा फेडिस है? for you. In that किसको बोल case, रहे हो? let's go talk to him, shall we? Aren't you coming along, Navia? Did you get tired? No, it's nothing. लुक एट दोस Let's लिप्स go का see the डिटेल तो Honorable है Chief एक सेकंड Justice. हेलो 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 मेरा कहाँ से कोट आ गया वो तो हम ऐसे ही बोल दिए थे ठीक है
सेक्सी थंबनेल कीरो भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल? काफका का जैसा कव गेंशिन में किस किस का है? काफका का जैसा कव यलान का है, जीन का है, जो सेने का है, और किसका कव बताऊं बोलो? हाँ, सेने का जैसा कव तो काफका का भी नहीं है। सेने का कव तो नेक्स्ट लेवल है, उसके जैसा कव तो किसी का भी नहीं है। रोजारिया का है, रोजारिया का कव तो कम करना पड़ा भाई, गेम वालों को लगा कुछ ज्यादा हो गया है। राइडन शोगन का उससे बेटर कर्व है, अब बोलो है। राइडन शोगन का तो नेक्स्ट लेवल फिजिक्स है भाई, वो चलती है तब ऊपर नीचे होता है सबसे ज्यादा उसका तो। I mean, मैं सो भी काफका एंड यूला का सेम है ना? काफका यूला सेम कह सकते हैं। हाँ, काफका का तो चलो भाई ये है, यूला का तो बट चिक्स भी जिगल करता है यार, सोच लो उसमें कितना जिगल फिजिक्स है भाई यूला में। आई लव कर्व्स स्पॉट्स में ऑब्वियसली। अच्छा है, ऐसा है क्या? चलो चलो, सीधा बनने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। तो मैंने पुल किया था, गेम इंस्टॉल करके फिर डिलीट कर दिया जब पहली बार आई थी। अच्छा ऐसा है क्या? यूला का अंडर वाटर कर्व्स तो उफ भाई नेक्स्ट लेवल है भाई। अरे अमीर खानदान से आती है ना यूला, तो उसको सब पता है एटिकेट, क्या क्या कर रहे हैं क्या क्या नहीं। The palais is right up ahead. Come on. पहले 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 एंटर द पैले मेमोनिया मरमोनिया ममोनिया ममोनिया या मरमोनिया। अंडर वाटर चले क्या एक बार कर्व देखने? मेरे शादी होने तो बीवी को सारे कैरेक्टर कौन से लेकर आए? बीवी घर से निकाल देगी तुम्हें, टेंशन ना लो साइरस भाई, घर से बाहर निकालेगी तुम्हें। कैसे 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 शौक पाल रखा है ये मर्द आदमी, ये मर्द है। मैं कह रहा मर्द आदमी बोल रहा मैं तो, कहेगी बीवी कहेगी कैसे कैसे शौक पाल रखा है ये इंसान है। लेट्स गो। अच्छा गेम गॉड भाई तुम भी इसी कैटेगरी में हो? Please state your business here. The Chief Justice is presently occupied with official matters. Me too. This place does look pretty heavily guarded. Guess that proves that Nervalet's files are really secure. Hey, don't you recognize us? काफका का कॉस्ट ले तो 100%। मीनवाइल साइरस की साइरस के एक बार शादी हो जाने तो फुल अपने मन का करूँ चलाऊंगी। might be related to. Our rules make no exceptions. See? They've got great discipline too. Yep. Paimon can tell. If you're here just to crack jokes, I can point you towards the exit. Unlike some, we're busy, so please leave if you don't have a reason to be here. No. What I meant to say is, shouldn't you remember us from a few days ago? We were at the trial of the great magician Lenny. सर क्या मतलब भाई, मैं अपनी बीवी से करा रहा, तुम क्यों मांग रहे हो भाई सॉस? You must be Lenny's attorneys. It's all coming back to me now. We're here today to report and archive some information on a follow-up case. Huh. Is that even a thing? एक सेकेंड, उसको मन का चलने दो। मैं अपना हथियार रोज चलाऊंगा। अच्छा एमजे मतलब Right then, I'll let you through. The Chief Justice is just inside. एमजे तो साइरस का दलाल। Thanks so much. एमजे तो साइरस का दलाल समझा बेटा। लॉल साइरस भी लाएंगे। साइरस भाई ऐसा करोगे क्या आप? करोगे क्या है? मुझे पूछ रहा है, सॉस मांग रहा है, सॉस का 4K पे कर दूंगा, दिक्कत क्या है? हाँ ये भी ठीक है, पे कर दोगे।
I guess it's a fair trade guys. पे कर देंगे वो. I am straight lol. Please come in. अरे साइरस भाई समझे नहीं गाइस. साइरस भाई समझे नहीं. ओ आप स्ट्रेट समझे नहीं. रिया दीदी को देख के भी तुम लोग नहीं समझे. नहीं समझे साइरस भाई, नहीं समझे भाई. साइरस भाई तुम्हारी और तुम्हारी बीवी का कॉस्प्ले का कटसीन का सॉस मांग रहा था. साइरस भाई समझे नहीं भाई. Monsieur Nervalet, we lied to get in because we didn't know any other way. It's all right. Please let me know how I may be of assistance to you. So you're not mad at us? वैसे You're एमजी looking for a man तुमने called तो Vache. कटवा लिया था ना. He may have been an eyewitness in the serial disappearances case. Lol. If we can find him, we may be able to unearth some key information on the case. Ah, I see. In लगवा that लिया case, please साइरस wait here a moment while I browse through the files. लॉल है. ऐसा बात बुली करो यार. साइरस भाई को है गलत बात. No feel late. Who knew that Nervalet would be so easy to talk to? इतना इजी है. लॉल इतना इजी है. इसकी आंखें यार कानरिया जैसी मिलती थी यार. मेरे को लगा मैं भी कानरिया वाला आदमी है ये. Unfortunately, I'm quite certain that no one by the name of Vache has been involved in any case, criminal or civil, in the past several years. There are no records of him either in the files or in नहीं my है. साइरस memory. भाई का सॉस बेचना पड़ेगा. ओके नहीं मैं स्किप क्यों करूंगा. Traveler, what if it was really just a dream? अब that आप so? ड्रॉप भी देखोगे. All ओके right लेट्स then. सी. Thank you so much, Monsieur Nervalet. We'll take our Who's leave your now. Novilet? डिटेल देखने को तो मिलेगा भाई. डिटेल देखने को मिलेगा गाइस. अभी देखो भाई. नोविलेट तो सॉफ्टी निकला भाई. सॉफ्टी भाई सॉफ्टी. Miss Navia, I can understand how you feel. Your father, Callus, was a truly exceptional man. We deeply regret his passing. सबको केला देख रहा है. बीवी तो बहाना है. ऐसा क्या साइरस भाई. And हाँ what are you trying to say, Monsieur Nervalet? मैं उसको हार्ड ही कर दूंगा. अच्छा Are you trying to console me? Extend your sympathy? Or just express some tendril of regret? No. ओके गाइस ये कट सीन You देख. are not trying to do any of that. I can hear it in your voice. There's no emotion behind your words. You only said those things because you felt क्यों ना हो like you जंगली should. आके पीटेगा उसको. It's हाय just देख रहे like हो. जॉ last लाइन time. देख रहे हो नोविलेट का. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. In your eyes, the value of a human life is nothing compared to those cold laws you hold so dear. If you truly regret my father's death, then why didn't you call a stop to the duel? Why didn't you give me the power to stop him from throwing his life away? Why did you just let him die, despised and hated Oh by my all? god. Navia ro rahi hai guys. was hanging on a thread at that moment. Just the tiniest effort could have changed everything. There are still so many things I never got to tell him. So many questions he still owes me answers to. If you really have no heart, Thanos bhai. then just look me in the eyes. Crimson bhai welcome to the I, stream. Navia, will show you the true meaning of regret. I'm sorry, Miss Navia. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. नाविया को थैनोस भाई रुला देंगे रात को. अच्छा ऐसा It's क्या. not so much that you can't feel, but that you would never express anything. Oh well. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Justice. My apologies for taking my emotions out on you, Monsieur Chief सच Justice. बताओ तो यहाँ पे हंसी Let's go, traveler. गलत and बात है.
बेचारी इमोशनल थी नाविया और आपने हंस दिया। गलत बात। नाविया नहीं आएगी, 50-50 हारोगे तुम अब नाविया पे। अब पता चल गया नाविया को, हमने बता दिया भाई। क्या रोना चालू है? कुछ नहीं, नाविया रो रही थी गाइस, नाविया रो रही थी क्रिम्सन भाई। Navia, are you okay? I'm fine. थैंक यू फॉर द स्पॉइलर। Rain. It's raining. You're right. I'm Wasn't it guaranteed still we sunny are when we though, went into हाँ। the building? And there shouldn't be any active trials today. How strange. Now that I think of it, on the day my father was convicted of murder, it was also raining. Rain. What is it? Did you think of something? I thought she had short hair. ऐसा है क्या? Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Why? Do you think the rain could have affected the crime scene? That thought has occurred to us before. We've even expanded the search area to try to account for that, but didn't find anything of value. There was something you didn't know at the time. Okay. Oh? Wait. You don't mean... Fact that people can turn into water. Exactly. So you're saying that the true murderer could have been turned into water? डाल दो And कोई then got दिक्कत। washed away with the rain? Yeah. And if that's what had happened, then no one would have believed your dad, even if he explained what he saw to the authorities. I really think I found a true genius for a partner. You're completely right. How did I not connect the dots earlier? All right. हाँ किसी ने Let's go to इवांगेलियन Brazil. देखा? हाँ मैंने With this देखा है। new lead in mind, बोलो। we'll get to the bottom of my father's case for sure. काफी मस्त लगता है मेरे को तो। Yeah, we're gonna make progress for Rey sure Ayanami. this time. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself later? क्या नाम था यार? मैं नाम भूल गया यार, सिर्फ रे का नाम याद आ रहा है। लॉल। We should go while the air is still fresh. Exactly. Great. Let's go then. पुराना वाला, नया वाला नहीं, पुराना वाला। पुराना वाला इवांगेलियन। Go to Poison. पोषण या पोषण क्या बोलती है? Whoa! What a huge ship! Why would a ship be anchored at a place like this? There's no need to be so surprised. While it may look like a ship, it's Hospital actually वाला scene Spina याद di है। Rosula's headquarters. My father was the one who asked for it to be built like जहाँ पे this. वो उसका ये Perhaps चलता our है। taste in exterior design is the only thing we occasionally had in common. A gigantic and glamorous ship embodies discovery, opportunity, ambition, and conquest. It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless future. तो ये स्पिना दी रसगुल्ला का भाई ये हेडक्वार्टर ऐसे अब आया समझ में। And Paimon thought you were bluffing when you said Spina di Rosula had a glorious past. Paimon was confused why a group with such a history would live in the sewers. But now that Paimon has seen this ship for herself, she's been convinced. Well, Poisson is where Spina di Rosula began, after all. It's our main base, our home. I see. अरे सब चलेगा क्या गाइस? लॉल। बताता क्यों आ जाता है? एक सेकंड रुको, मैं भी देखे। मीडिया सेक्शन किधर गया? ठीक है।
हाँ क्यों हंस रहे थे? यहाँ पे हंसने वाली क्या चीज़ है? इसमें हंसने वाला क्या चीज़ है? थानोस भाई बताओ जल्दी से। I wanna know. हाँ अच्छा ऐसा है क्या? हमारे थानोस भाई ख्वाब में रह रहे हैं। कौन से ख्वाब में रह रहे हो तुम? हाँ नाविया उन पे हंसते हुए दिखी। अच्छा आई सी बड़ा आजकल ख्वाब देख रहे हो आप? हैं एक सेकंड, अब मेरे को डिस्कॉर्ड पे किसने टाइम? Something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than रैंक one. अप अच्छा इसमें टैब। लाइक जियो डेड है, ये भी होप है रिवाइव करने का, यही होप है। ओके समझ रहे आपकी बातें, हम समझ। हाँ कोई कोई सेक्सी सा कैरेक्टर नहीं निकाला था इन्होंने यार जियो में। सिर्फ निंगवांग आई थी, वो भी 4 स्टार थी। 5 स्टार थी, बाद में इन्होंने 4 स्टार कर दिया निंगवांग। उसके बाद ईटो ही आया, और कौन सा सेक्सी कैरेक्टर आया? और कोई सेक्सी कैरेक्टर आया नहीं। आया भी है तो वो 4 स्टार थी, वो भी क्या बोलते हैं यूनजी। मेरे समझ नहीं आया, मेरे को भी नहीं समझ आया, तभी तो हम चैनल से पूछा। उन्होंने कहा कि यही एक होप है जियो को रिवाइव करने के लिए। हाय मलूस। Maloose, we're back! Apologies for the wait, demoiselle, and our most important partners. You said before that you still had some business at the court. What brings you back to Poisson so quickly? इसलिए तो डिस्कॉर्ड यूजर ज्यादा बाहर नहीं जाते लोग। About that. It's because my partner here reminded me of something really important. और ऑलमोस्ट ग्रेव नंबर what if my प्लेबल father's जियो case कैरेक्टर had जितने something ही to do हैं with सब water 20 from the primordial sea? You still remember, right, Maloose? On that night, it जियो was एलिमेंट raining. रख दो लॉल। Yes, the case was quite similar to that of Mr. Linney's. Both were what you'd call impossible murders. Could you tell us a bit more about what happened before? Yeah, of course. Many years ago, something called synth began to gain popularity in Poisson. At a glance, it was a kind of drink that could excite your mood and produce many pleasant hallucinations. Wait! Didn't that guard guy who turned into water also mention that the primordial water could be used to produce some kind of potion? Yes, he did. Considering what we know now, it's almost certain that synth is created using water from the primordial sea. If you drink synth for an extended amount of time, you'll suffer many side effects, such as losing the ability to focus or control your emotions. And if you were to stop drinking it completely, you'll experience flashes of paranoia and anxiety while lacking energy to do anything. It's an extremely dangerous substance. As he oversaw Poisson, my father was compelled to put a stop to synth abuse and called for a complete ban of it. Boss's uncompromising attitude incurred the synth vendor's wrath, but no matter how much they threatened or bribed him, he refused to yield. Not only that, Boss became determined to find the mastermind behind the synth operation, put an end to the problem once and for all. Yes, Idea is yours now. but the enemy was very cunning. So he could never get anything out of the dealers.
all of whom only sold the stuff and weren't privy to the rest of the operation. ये cutscene के Recognizing बाद मैं ना that, stream off my कर रहा, father मेरे को आ रहा decided to नींद, contact the भाई, सच्ची dealers बता in रहा हूँ। secret and I cultivate don't know personal why, पर आ रहा है relationships guys, with नींद them. आ रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। Finally, he was able to convince someone to become his Inhibitor informant. next level है, हाँ, The man's Inhibitor name was काफी अच्छा है यार, साइरस भाई, ये तो He मैं felt कहूँगा greatly यार, Inhibitor ashamed काफी about his अच्छा है। work after seeing लेकिन many जितना skill families point destroyed by hungry है यार, synth वो थोड़ा दिक्कत देता है। That night, my father hosted a banquet at his countryside estate. He planned to meet Daniel, up सब and तो उसको exchange Daniel बोल रहे information हैं with यार, Jacques over Daniel। some food. Daniel, But then, Daniel। we heard 2 gunshots from the courtyard. We raced to the scene and found my father, still holding a gun, and Jacques, who was already dead on the ground. Huh? How did that happen? Aren't they on the same side? मैं जा रहा हूँ थोड़ा RDR2 खेलने। Sounds just like Lenny's case, doesn't it? एक सेकेंड। In both cases, the... Hey। देखना चाहोगे? एक सेकेंड, मेरा गेम लाइब्रेरी किधर है? ये देख रहे हो इधर? रेड डेड रिडेम्पशन 2। ओ भाई फ्लेक्स, देख रहे हो? रेड डेड रिडेम्पशन 2 लॉक पड़ा हुआ है क्योंकि मैं इसमें सीटी डालूंगा तब खुलेगा। देख रहे हो, पड़ा हुआ है इसी तरह अभी तक खेलने के लिए। क्या करेगा इस, इट्स लाइक दुख दर्द पीड़ा। ओके सारिस भाई, बाय बाय, गुड नाइट। बहुत लंबा गेम है यार, बहुत लंबा गेम है डूड, खेलते खेलते थक जाओगे यार। कॉल ऑफ ड्यूटी खेला जाए क्या गाइस? कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर। अरे PS4 वाले इनको अपग्रेड करने लगे भाई। इसका 1000 रुपये मांग रहा है, इसका तो नहीं मांग रहा, ये तो हो जाएगा। इसका 1000 रुपये मांग रहा है भाई, इसका 1000 रुपये मांगेगा भाई, ऐसे थोड़ी होता, अपग्रेड करना पड़ेगा। RDR2 मस्त गेम है, खेलो RDR2। खेला भाई, खेला। अरे साइरस भाई खेला है मैंने RDR2, बहुत लंबा गेम है, खेलो तो सही, खेलो मजा आएगा, खेलो। बहुत लंबा गेम है यार, करते करते थक जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं, बहुत थक जाओगे, बहुत ज़्यादा लंबा गेम है। हमें क्यों नहीं खेला होगा भाई, बहुत लंबा गेम है भाई। 200 मेरे ख्याल से 150 GB का गेम है वो, I mean PS में, तो जहाँ तक लगता है। Precisely. It's all thanks to you that I made the connection now. Back then, we all just thought they were some costumes that Jacques used to disguise himself at the banquet. But, considering it now, it's almost certain that they belong to a third person at the scene. With one extra person, we'll also need to reconsider why the 2 shots were fired. You're right. We still don't know what happened. But my intuition tells me that we're on the right track to figuring it all out. खेलो लेकिन खेलो, मजा आएगा। I'm finally headed towards the truth. Jacques was an empathetic man who was infinitely remorseful for his past actions. It's मैं जब भी unlikely करता that he था ना, turned मैं on अच्छे boss with घोड़े zero ढूंढता था, warning. एकदम प्यारे I घोड़े think this और third बंदूक, person is probably the key to the full truth. और टेंट खरीदने On की that कोशिश note, करता था कि however, टेंट मिल जाए मेरे को ढंग का। Even though this will not please you, demoiselle, as you're and your father's butler, I must still offer a word of warning. Our opponent is insidious and cruel. They are extremely difficult to deal with, and Boss has already lost his life trying to bring them to justice. Titan Even though planet का Spina console de इतना Rosula advanced has lost नहीं most of its former glory, Poisson has welcomed a new time of peace, and we have been allowed to live out our lives. There is no need to follow your father's path. It would be both wise and in line with Boss's wishes. Bird to भाई, step क्या back, जोक give मारा, up on the let's go। case. If that's indeed what he wished for, then he should have told me that और himself. खेती करके उतने मनी नहीं Was I होते। not the closest person to him? And yet, I was the one most kept in the dark. What was the point of him dying without sharing any of the secrets he knew? Did he manage to protect anything in the end? भाई गुस्सा हो गए, भाई गुस्सा। Is still here. Callous the unfaithful is still his epithet. And Spina di Rosula is barely getting by. Nothing has changed. Did he think I'd just accept his meaningless death and live out my life just as meaninglessly? I've never accepted that. Ever. Not since that day, and certainly not now. I want to find out the real answer for everyone's sake.
for the missing girls, for the victims, Okay, and okay, for कल मिलते हैं myself. गेम गॉड, कल मिलते हैं. Lavia. Bye bye, good night, take care brother. This is indeed the best नहीं, moment ये to कटसीन act. खत्म होने के बाद हम भी चलते हैं Your सोने यार. मेरे partner को बहुत appears नींद to आ be रहा है. quite I don't know why, reliable, but and हो जाता more है. importantly, demoiselle, I think you're मैं जब also सो के ready उठा to यार, take तब भी this मेरे को नींद आ on. रहा है. I don't know. So you do know something else, Maloose. You don't know something else, Yes, my loose. I भाई do. पकड़ ली भाई चोरी. In fact, even before that banquet, Boss already knew of the connection तुम्हारा between कल आज हो Synth गया, and the हाँ. serial disappearances case. कोई ना, But कोई what ना. drove all the tensions to the boiling point was the revelation that you, demoiselle, had been selected as the next target to disappear. What? हाँ? Boss also didn't tell you that he had been diagnosed with a rare illness. The doctors told him that he had no more than 5 years left to live. And the Okay. serial disappearances case caused him great मेरे पॉइंट्स anxiety. जा कहाँ रहे हैं? आपके पॉइंट्स तो आप ही के पास 5 है यार. years was nowhere near enough time to इतने सारे resolve पॉइंट्स this तो है आपके पास. long-standing 56 conflict. 100 तो है. आप But कितने once he चाहिए? passed away, all the danger would pass on to you. Knowing all of this, he decided to use one final intimidation tactic before his death. He claimed to have already gotten his hands on some key incriminating evidence for the other side, and even told some members of Spina de Rosula about the details. But as long as you remained safe, he would not share the evidence with the public. If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately expose all they knew about Synth and the disappeared victims. Right. So nobody would be able to get off scot-free. As we've seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been gone for a long time, the other side has not tried to take Demoiselle's life. No, I don't believe it. He never appeared to look sick to me. No father wants their daughter to see them weak and haggard, especially someone as proud as Boss. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the unfaithful was still far preferable than losing face in front of his daughter. So he chose to die in silence, so that he could protect me. I'm afraid you're not understanding this correctly, demoiselle. What Boss wanted to hand to you was not a parasol, but a sword. If Boss's spirit could hear you telling me that you want to find the answer for the sake of everyone involved, I'm sure he'd be extremely proud. That fool. Couldn't he have just given it to me straight? No. He might have set up everything फिर से रो रही precisely है. फिर because से रो रही है he थानोस never भाई. thought I'd be able to understand him. कितना Is रुलाएंगे भाई that गेम the वाले? amount of confidence he had in me? And what if I was never able to make it to where I am now? I gave you choice to leave how you want. Yeah. I suppose that's true. With the way he'd set things up, if I had wanted, I could have just lived out my life without a care in the world. But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. In this case, he really didn't need to give me an easy way out. Maloose, what was the key evidence that he shared with you? It's the location where Synth is produced. Essentially, it's the enemy's headquarters. When he was threatening the enemy, Boss didn't share the specifics of the incriminating evidence he found. But if you want to use it against the enemy, you'll still have to take several things into consideration. Why? If we know where the place is, can't we just go storming in? You mustn't forget that we're fighting करता. against a mysterious and dangerous organization that's been in operation for decades. There's no telling what might be lying in wait at their headquarters. We also have no idea what kind of evidence we may be able to find inside, nor what people we may be able to capture. But a single visit to their headquarters would be tantamount to a formal declaration of war. The worst case would be that we leave empty-handed, but also open ourselves up to full retaliation. Then, in that case, why not work with the Fontaine authorities?
Well, you saw one of them dissolve during Mr. Linney's case. We have no idea just how thoroughly they may have been infiltrated. Huh. That's true. भाई Seems my उनके ऊपर father really 3D had no textures नहीं है रे. choice. But things are different now. It should be a lot easier to prove the other side's guilt, now that we've connected Synth with the disappearances case. You sound like you've put a lot of thought into this, Maloose. I am the butler, after all. Butler, I live okay. but to serve the boss and Demoiselle's will. I've always been willing to take on any kind of risk for your sake. But considering my relative lack of ability, I've spent my time keeping secrets, performing basic investigations, and waiting for the right time to come. Thank you for all of that, Maloose. Have you discovered anything new in the past few years? Let me think. One conclusion I came to is that the enemy must be quite familiar with Spina di Rosula, or at least have an informant planted here. When I announced orders to the organization's members on Demoiselle's behalf, I used to deliberately keep a few people in the dark and observe the reactions of the synth vendors. Hey, If the Gautam bhai, very vendors good to didn't see you. change their क्या हाल चाल, plans, then the कैसे हो? individuals informed of our orders must be innocent. If the vendors packed up and fled, however, then someone must have given them the news. After several rounds of testing and investigative tracing, I've narrowed the suspect list down to 3 people. The first is कैसे आप? अरे मैं मस्त हूँ गौतम भाई. Spina di अपना बताओ. Rosula's senior advisor. क्या हाल चाल, क्या चल रहा है, कैसा रहा आज का दिन आप? Florent? Yes, surprising, isn't it? He was one of the people Boss trusted the most, which also means that he was someone who understood Boss really well. Thanks to his position within Boss's innermost circle, he always knew our upcoming plans and could thus avoid capture this whole time. There's someone else like him too. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Uncle Marcel. Confrérie, okay. It's a guild in Poisson. Boss helped it to grow to its current size and prominence. In the beginning, they were only reselling some daily goods, but now they're one of the richest guilds around with a lot of business connections in the city. So, they're like a sister organization of Spina di Rosula? Yes, you can say that. When we Spina were di fighting Rosula. against the synth dealers, they provided us with plenty of support. It's a bit difficult to imagine someone using their own money to hunt down themselves. The final suspect is Thierry, the man responsible for coordinating information between Spina di Rosula and the guards. Although the guards mostly leave us to our own devices, there are still many activities we have to report to the local authorities. Since Thierry is always in the know about our current activities, he You could remember me? theoretically always plan one step ahead. गौतम भाई, of course. I see. These are all people who I नाम change किया communicate क्या with वैसे quite आपने? regularly. पहले कोई और To नाम था think क्या? that the enemy we've been fighting against याद has दिलाओ, been right याद आ next गया to है? me all along, among ऐसा those जैसे I याद आ रहा trust है, the नाम देख के most. तो याद आ रहा है क्या कुछ दिन पहले से ही आ रहा है. Almost too hard to believe. न्यू सब. If you want to investigate them, please take every precaution to not alert the quarry. Judging from our remember experience, the तुम्हारा enemy नाम is गौतम. extremely cautious. Of course. And thank you, Maloose. You Thank you, provided us Maloose. with a lot of great information. You're too kind, my lady. बहुत ओल्ड सब. I'm just doing my duty. सच्ची में. And Damn, before I Gautam bhai. forget, फिर तो ध्यान नहीं proving है यार. Boss's innocence would also mean Damn. clearing him of blame in Jacques' death. नहीं अभी तो After that अभी incident, अभी Jacques' फिलहाल wife मेरे and ख्याल से daughter अभी were आ पा taken रहे हो into the राइट. Spina's रेगुलर care. आई मीन. They still कुछ live दिन in पहले भी देखा Poisson था आते हुए. today. उसके पहले तो If it देखा might नहीं. help, you could थोड़ा also हिंट तो pay दो. them a हाँ visit. एग्जैक्टली हिंट तो दो. I can make the necessary arrangements. Oh, thank you so much, Maloose. You really are the best. A new case awaits, my dear partner. Leave it to me. I hope we can work together to uncover the truth and end this case once and for all. The callous case report, okay. कहाँ जाना है?
किडनी दे दो आपकी. अच्छा किडनी ले रहे हो हमारा. It is settled then. Please excuse me and enjoy your conversation at your leisure. Thank you for arranging everything for us, Malus. Excuse me, miss. Do you need anything from us? तुमने अपना कैसे करा? अब यार नहीं गौतम भाई सच्ची बता रहा. Hey, Navia's all quiet. This isn't like her at all. Let's not bother her for now. Okay. I'm sorry that I only came to visit after all this time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. Almit yaad If it's hai. about that, Almit bhai. there's no okay, need to got it. apologize. Got it, got it. After Almit my bhai. husband died, Okay, okay. Spina ठीक है, समझ गया. Sula sent us a lot of mora and support. I understood your guilt and apology to be genuine. But अरे अलमित भाई aren't बोलो ना all यार, of सब those ध्यान आ things जाएगा. nothing Got it, compared to got the it, loss of brother. Jacques? I can बड़े आदमी का नाम understand the लिया kind देखो of अब pain ध्यान आ गया. that comes with losing a father so needlessly. You don't understand at all. I didn't know how to face you, because I didn't know what I could possibly bring as a consolation gift. I know ना, नहीं only समझा. the full truth could bring closure to you. And to all of us. हाँ हाँ उनके चैनल I'm पे था. sorry. हाँ. I appreciate the sentiment, but you don't have to हम carry लोग all किडनी that बेचने की guilt. बात कर रहे थे क्या? On the matter regarding Right? my husband, नाव्या का हेड my में daughter and blue I jewelry have ने- more or हाँ, less jewelry found है. our answer नहीं already. कभी वो Would कार्टूनिस्ट you mind sharing it with me? वो I really कार्टूनिस्ट can't जैसा believe भी that दिखता my है. father could ever bring himself to shoot Jacques. I always Ah, knew I that see. my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never go into the synth business again. He had many regrets, and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, he thought Mora was everything. So when Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost immediately. हमारी He कितनी सेल tried to कर be रहे as थे आप careful as he हैं? could, यार, but even फिर तो so, मैं कहा था he was गौतम still भाई बहुत found पुराना out by बात the कर रहा है फिर. higher-ups. They found out उस समय अलमित about भाई his ये betrayal? खेल रहे थे क्या? क्या बोलते हैं? Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be टूम रेडर ungrateful. खेल रहे थे क्या? हाँ? Before he left that day, he told me that he had no choice. कितने It कमाल was only है लॉल. later that I realized it was his final farewell to the two of us. नूवलेट या फुरीना क्या लूं? कोई भी ले ले, कोई भी निकाल ले. दोनों अरे दोनों के लिए विश हो जाएंगे यार. बस ये है कि एक में 50-50 जीतना पड़ेगा तेरे को. बैक टू बैक 50-50 जीतना पड़ेगा. क्या वो कहते भी? I don't know that for sure, but you could say that's Genshin Riot the list ले लो. conclusion I eventually came to. सब कह उसको हाँ याद है. Which is why I'm the one who should feel guilty. Callis Allah had yaad always hai. taken great care of us, I both won't when die. he was still alive and I don't after he passed I don't away. wanna die. Okay. Even if he fired Kyun? the shot that killed my husband, it was likely in self-defense. It is impossible for me to hate him for what he had done. But Mama, why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Papa always wanted to be a good man, so why did he have to do a bad thing in the end? Well, 100 pulls है मेरे पे. things aren't always as they seem. You Brawl still वाला feel याद है. like ना, your Brawl papa वाला was a याद good नहीं. man, right? गौतम Yeah. ब्रॉड वाला के बारे में याद. Papa was a really good man. The best in the whole world. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing, then he must have had his reasons. Regardless of whether he left you a parasol or a sword. He must have done so to give you a better life. Oh, Thank you for everything you've told me. I will definitely find the truth. The current state of things is not something I'm willing to just sit back and accept. Thank you. I'm very grateful to hear this from you. Even though your personality is quite different from your father's, Your your determination, determination when you speak is really similar. You really think so?
the first time anyone said that to me. सच्ची बताओ गौतम भी बड़ा हार्ड मतलब बहुत हार्ड होता है यार याद करने के लिए यू नो। एडेले ये कैट से भी बातें कर सकते क्या इधर? और दो बिल्लियां हैं भाई। Are you okay, Navia? I'm fine. Don't worry. Let's investigate the 3 suspects next. Florence should be nearby, and we should be able to find Thierry and Uncle Marcel in the city. I'll get myself together on the way, so please don't. Greetings, boss. How गेंशिन may I वालों को be of पता है लोग assistance उसको today? उसको स्किप करेंगे गेंशिन वाले इसलिए उसको Someone अच्छा got किट turned देंगे into water right in वो front of वर्थ us. लोगा ले लो। Okay, Yeah, I I've see. heard. With something that आप क्या dramatic, लगा रहे हो हैं? I'm Reverse sure psychology journalists will milk it for काम नहीं all it's करेगा। worth. And it'll be all the talk for the next several weeks. It also reminded me, on the day that the incident happened with my father, it was raining outside, and we found some clothes left at the scene. बल्कि जो हाइप रहता After है my उसको partner बिगाड़ here देते हैं, put the सही dots कहा। together for me, जो I हाइप feel कैरेक्टर like रहता है we उसको should बिगाड़ try to देते हैं। reopen his case. क्लोरेंट का Can you do डर me a लग रहा है favor भाई, and try to क्लोरेंट के साथ recall what स्कैम ना हो happened जाए that यार। Let me think. Mr. Callis was feeling pretty upbeat that day. So he was drinking and bantering away with us at the table. After that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go बीच में without यूट्यूब thinking पे much of नहीं it. आ रहा Who knew that we would hear 2 gunshots ring out right after? डायरेक्ट My first reaction was that Mr. Callis's life was in danger. So I grabbed my holster and made a mad dash toward the scene. यार मेरे को भी But थोड़ा when I बहुत got फिक्स ही there, किया, जोंगली को it फिक्स was कर दिया, already लेकिन too साइनो को late. यार साइनो को तो Mr. totally trash Callis कर was दिया। standing over a dead body with a इतना gun cool in his कैरेक्टर है hands. साइनो। All we could do was look back and forth at each other. जबकि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा knowing स्केलिंग what to बढ़ा say. देना है। So you also remember 2 gunshots then? Indeed. The guards said that the first shot didn't hit anyone, while the second killed पार्टी Jacques. छोड़ने का I've टाइम हो never गया। really bought that explanation. Reason being, वाह, Mr. गौतम, Callis सच्ची had में? left his gun on the table. I even made sure to confirm that before running to the scene. But according to the guards, that doesn't mean he couldn't have had other guns on his person. About the clothes left at the scene that you mentioned, do you think there was a third person there who was turned into water? It's very possible. At least from our perspective, my father had no reason to kill, so he would also have no reason to bring an extra gun with him. The gun he was holding probably belonged to Jacques, or a third person on the scene. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callis ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? But hold on. If that's what had happened, then why didn't he share the truth with any of us? He didn't even want to face the Oratrice machine, and chose instead to prove his honor in a duel. Did he lose all faith in the courts after seeing someone dissolve right in front of his eyes? About that, Malus told me a thing or two. So, I think I can understand why he committed to the duel. I'll tell you everything once the whole truth has been revealed. I understand. Then I'll leave Mr. Callis's honor in your hands, boss. Okay. And if I may just say one more thing, the whole Callis the Unfaithful epithet has been a thorn in my side since the day it was invented. Many people have laughed at me for still calling him Mr. Callis, even after so many years have passed. But it was Mr. Callis's trust that allowed me to rise through the ranks of Spina di Rosula अच्छा and live the life I lead today. थैनोस भाई No इसका matter what others might say, he'll always be the man I respect the most. And he'll इसका vision always किधर be है? my boss. किधर लगा रखे Don't अपना worry. विजन? I दिख will नहीं रहा, पीठ definitely के find पीछे the है क्या? truth. You and all our other comrades at the Spina deserve to know the truth as well. कंफर्म किधर गई?
गेंशिन इस तरह से सोचो, तुम एक रिच सिटी में रहते हो जहां तुम्हारे तरह सबके पास फेरारी है, या फिर सबके पास फेरारी है तुम्हारे पास विंटेज कार है। What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. It's me. Oh, now, Idhar yaar, what Navya brings ka you vision. here, Miss Navia? I've heard that you made quite the name for आपने क्या yourself at लिखा the है वो Opera समझो ना। House. मैं आपका कॉन्टेक्स्ट समझ गया, So लेकिन you've आपका got news ये of that आपने क्या already. लिखा वो नहीं समझ। Oh, आप ये okay. कह रहे कि हाँ सबके पास ये है, Hey, I'm also आपके a पास member of wish the है, you know? guards, you know. The way you make it क्या sound, context people करे would वो think I ठीक was है, sent लेकिन वो off नहीं to समझे कि Poisson आपने लिखा because I क्या। had done something wrong. Are you sure there isn't a little हमने bit of बता truth दिया in विश that? तुम्हारा है। Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city already? I mean, where I work is really up to me. Let's just say I हमने बता enjoy the दिया विश ambiance तुम्हारा at है, ये Poisson. कॉन्टेक्स्ट में। Callis did a fantastic job running the town, building Spina di Rosula from the ground up and clearing many obstructions in my way. It would be next to impossible दो for पार्ट me एक to साथ लिख find दिया, a डिकोड करता हूँ। similarly हाँ। easy but high-paying job in the city. Anyway, enough chit-chat. Are these two friends of yours? You, here for some formal business? अरे रे रे, These two क्या हो are गया? my partners. What happened at the Opera House made us realize that Linny's case and my father's may be related. We're trying to reinvestigate the details of my father's old case. Ah, I get it. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved into water, right? हाँ, यहाँ पे विजन हो क्या? flabbergasted दिख गया, when दिख I गया, first दिख heard गया of it. guys, विजन दिख गया। If you want to go through the original files from your father's case, ओह, I can हैंड help पे you है look इसका for them. विजन तो। Let's go। That'd be much appreciated. हाथ Thank you. पे, I see। Actually, I have another question. Do you have the authority to dispatch Gardamex? Of Ferrari course. means meta hype Without them, character. I couldn't possibly handle Poisson on my own. Why do you ask? We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your father's अरे वो case. तो चीज से समझ ही गया था। You see, just recently, we were attacked by a horde of unnumbered Gardamex in the city. लिस्ट विश So- कैरेक्टर। If you Vintage यहाँ पे ये भी हो hypothetically सकता है, wanted to पुराने do something characters। against me, all you would need to do is get rid of the mecha serial numbers and send them after me. Then you think too highly of my मैं abilities. आई गेस फुरीना पुल करूंगा। मैं भी Dispatching फुरीना के लिए जा रहा हूँ। मेरे mecha पास is दो very अकाउंट है, तो एक different में from फुरीना, एक में controlling नोवेलेट। them. उसमें If I नोवेलेट है, had उसमें to make an फुरीना। analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but not to massage your shoulders or carry your baggage. If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your तो मैं mind and गेंशु को ignore you लिखा completely. The same goes for me and my Gardamex. Removing a serial number is also not as easy as you might think. There are a lot of फुरीना का weapon ले लेना। complex steps to it, and it's almost impossible to keep it a secret. So I can promise you, those mecha were definitely private units. They're certainly not cheap. So Exactly. whoever their owner is must be super या rich, मेटा की तरह बन powerful, जाओ या फिर both. Now that you mention it, though, being in the synth business would definitely be profitable enough to afford this. Makes sense। Oh, then you're officially in the clear, Thierry. देखो उसके हाथ पे विजन है डूड। Oh, well, thank you for the vote of confidence, Navia. Jokes aside, I'd like to wish you all the best with your investigation. I'll be staying in the city for a little while, so just come find me if you need any support from the guards. My promises are not for ER or EM weapons। देखो सिंपल सी बात है, फुरीना का वेपन काफी तगड़ा होने वाला है, ठीक है? तुमको बता ही है, प्रीमोस। आई नो। रियाज भाई एक बात बताओ ना, मुझे नारुतो शिपुडेन किस पे देखते हो? नारुतो शिपुडेन? अरे लॉल, मैं कैसे बताऊँ?
आई मीन यहाँ पे बता सकता है यार क्या बोलते हैं पायरेट साइट के बारे में बोल सकता 9 एनीमे क्या बोलते हैं एनीमे एनीवेव करके सर्च करो एनीवेव करके साइट आएगा वहाँ पे तुम जाके नारुतो शिपुडेन देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं एनीवेव साइट करके एक आता है एनीवेव गॉड इट अरे हमको तो उसी समय समझ में आ गया था टीवी पे देख नहीं रहा टीवी पे नहीं देखना है अरे टीवी पे नहीं बोल रहा मैं मोबाइल पे वेबसाइट ही है वेबसाइट का बता रहा मैं वेबसाइट है वो वेबसाइट पे देख सकते हो डाउनलोड नहीं करने की जरूरत है वहाँ पे तुम आराम से देख सकते हो अगर एचपी हुआ तो फुरीना भी पुल नहीं करूंगा भाई तेरी मर्जी तेरे को जो पुल करना है पुल कर हम कहाँ तेरे को रोक रहे हैं आर्कन आर्कन होता है यार ऑफ कोर्स आर्कन ऑलवेज बेस्ट वेंटी बेवड़ा को छोड़ के कॉन्टैक्ट मार्सल नहीं यार फिर तो तुम नहीं देख सकते यार फिर तो ना फिर तो तुम्हें यार आई गेस क्रंची रोल वगैरह पे सर्च करना पड़ेगा यार क्रंची रोल पे हम गारंटी नहीं बोल सकते तुमको इंग्लिश में मिलेगा यार क्रंची रोल पे तो सारा ये मिलता है क्या बोलते हैं जापानीज वर्जन मिलेगा तुमको इंग्लिश वर्जन का गारंटी नहीं दे सकते यार वहाँ तुमको नारुतो मिलेगा जोरो तो मर गया Hello, how may I help you? I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure. I will let him know right away. Navia, hello. Sorry to keep you waiting. Anyway, generally, I'm not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Uncle Marcel. There's no need to stress. I just wanted to talk to you briefly about what happened in the Opera House. I'm sure you saw everything too, right? Yes. स्किल ब्राउजर है Never seen anything so है strange. इंटरनेट ब्राउजर है उस पे इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो गूगल खुल सकता है गूगल खुल सकता है तो फिर देख सकते हो That's right. I went there with Navia to see the magic show. Who knew it would turn into a whole murder mystery? I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite impressive. इंटरनेट To beat the Hydro Archon at her own game on her own turf, Internet skill I can already imagine skill everyone in browser Fontaine है, discussing your exploits over a few glasses of wine. एनीवेव वेबसाइट का नाम है एनीवेव Paimon doesn't want to become the talk of drunkards. Apologies. It's just how Fontaine is as a nation. Everyone loves drama and theatrics. Uncle Marcel, you've also noticed that other thing, right? The fact that humans can dissolve in water? Yes. I was reminded of your father's आर्कन case बैनर right away. हमेशा अच्छी यूनिट Is that को what लेके you're जाता है राइडन investigating योइमिया now? बैनर लेके गई नाहिदा नीलू का जॉम्बी Exactly. चाइल्ड का I चाइल्ड में still तो फिर don't भी have लोगों ने much solid पुल किए proof, थे but यार I can sense that the other नीलू side पे has भी अच्छे already खासे लोगों ने begun to किया act. कैन यू टाइप Oh, एनीवेव and ए एन what आई makes you say that? डब्ल्यू ए भी We were attacked on Araneus by some unnumbered Gardamex. And Anyway, search there was करो ना, आ also जाएगा। an attempt to get me to drink water from the primordial sea. If not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't even be here talking to you right now. Oh, you're giving us too much credit. Wasn't it you who protected us? Alas, it seems things are heating up again. The peace that Callus sought so dearly will soon become a thing of the past. But rest assured, Navia, Poisson will always remain a safe haven for you. If you're scared, you can always return there. If anyone dares to lay their hands on you there, the Confrérie of Cabriere will use its funds to the last Mora to bring them to justice. Thank you, Uncle Marcel. But I don't intend to go into hiding. I'm going to strike while the iron's hot. Do you have any new thoughts on my father's case? About that. Sorry, my age is catching up with me, so it'll take me a while to ये recall my वीकेंड बोल memory. रहा है हैं लॉल मैं लिंक भेज देता हूँ The डिस्कॉर्ड पे Confrérie was अब पता नहीं responsible for डिस्कॉर्ड that से तुम वो banquet, so I फायर was स्टिक out पे and चला about the whole पाओगे time making sure things were running smoothly. क्या बोलूँ मैं फिर I didn't even have the time to drink with the guests. Then I heard the sound of a gunshot.
and the rest was history. Oh, it's okay. Genshin No need to बस push yourself. बता रहा हूँ पैटर्न We'll ask Genshin को around पता some more. होता है See if there are they any respect valuable करेंगे clues तो elsewhere. Sounds good. Just let me know if you ever need more. एटलीस्ट रीरन पे विश करेंगे हाँ एग्जैक्टली जब उनका रीरन होगा तो विश All my करेंगे wealth उनको ही comes पता from है ना Callus's patronage कोई and भी support. आर्कन के लिए जाएगा ही I'll जाएगा spend however much it takes to clear his name. Go over the cruise with Navia, okay. गेंशिन इम्पैक्ट छोड़ने का टाइम हो गया मुझे छोड़ने का गेंशिन इम्पैक्ट छोड़ने का टाइम क्या बात है टाइम नहीं मिलता क्या खेलने को We've talked to all three suspects, purely based on their conversations with me. None of them sounded particularly suspicious. सारे के सारे सच है भाई I suppose that's to be expected, though. हिंदी वीक If a है हर single कोई ना कहता भाई conversation's all इंग्लिश that's बोलो needed to चलेगा find them अरे out, बोलो इंग्लिश ही then my बोलो कोई father दिक्कत wouldn't नहीं have needed to investigate the case for so many years. Anyway, even though we didn't make a breakthrough, let's still compile what we were क्या able बात कर to रहे हो तीन find. बैनर एक साथ आ सकते हैं ऐसे ए आया नहीं था यूला अल्बीडो और क्या बोलते हैं है ना यूला और अल्बीडो एक साथ आए थे ओके उसके पहले एक और बैनर आया था ऐसे तीन बैनर एक साथ अभी तक नहीं आया Right. Flora mentioned that Callus probably only ended up with the gun because of circumstance. That makes sense. According to Jacques' family members, he already told them that he had been discovered and that he had no choice before he left home that day. If I had to guess, he probably received an order from the synth boss to kill my father. Had he refused, he and his family's lives would have been forfeit. So, Jacques fired the first shot? if I was shocked okay Oh? And why is that? could he guaranteed his safety after killing Callus Ooh, that's a good point. Jacques probably already knew that he was just being used as a tool wait for 1 murder. minute I am And coming once he had completed his mission, TV पर he'd मिल be गया of होता no more use to his boss. So, what would make more sense from his गौतम perspective लगा नहीं तुम would सही be to लिख रहे turn हो his back on the order and seek protection from my father. seems the third person was the one who derailed everything. Makes sense. But without evidence, that's still just a theory. Besides Jacques, the attack from the Gardamex has been bothering me quite a bit as well. It's obvious that our enemy has become more antsy after the secret of the Genshin Impact primordial छोड़कर seawater time was हो गया। revealed. Do you think he अच्छा ये कह रहे हो कि knew Genshin even Impact then छोड़े that हुए we'd टाइम हो follow गया this lead to the end? I see Given everything that's happened since, काफी टाइम हो गया it's आपको quite Genshin Impact छोड़े possible. हुए I see कब But से नहीं खेल who रहे हो among वैसे the three suspects would have the ability to control privately owned Gardamex? Marcel Uncle Marcel? My father did really trust him. And they worked together on a large number of projects. Maybe that's how he got to know Jacques. And with funds from the Confrérie, he could also afford a large number of Gardamex. It's still really hard for me to imagine, though. After all, Uncle Marcel has been around since I was just a child. Also, wouldn't this mean he has been spending a whole lot of mora and energy to fight his own synth business? maybe it was something else
Lorraine. Thierry, you say? Huh. It is possible that he's figured out a way to convert the Gardamex for personal use. But I didn't feel like he was lying when he was talking to us about the mecha. I also don't think he'd be able to keep that kind of tampering under wraps. Yeah, had he actually tampered with the mecha, we'd be able to prove it with a simple check of the guard's inventory. If the mecha were taken from the guards, it should be pretty easy to find out when and how that गोल्डन happened. आर्किपेलगो इवेंट लास्ट थोड़ा ध्यान से खेला था। ओह अरे तो फिर तो काफी टाइम हो गया यार, 1 साल हो गया तुम्हें गेम छोड़े हुए फिर तो। मोर देन 1 ईयर हो गया। फ्लोरेंट ओके। Florent? It is true that he was closest to my father, and thus had the best chance of learning about his dealings with Jacques. But as Spina di Rosula's advisor, his work mostly deals with personnel and security, so he shouldn't have much means when it comes to finances. So you're saying he's too broke to afford a mecha army? हाँ अलित भाई को आईडी He देके can't. गए थे, I see. And even if he could, I don't think he would be able to dispatch a whole group so quickly. Who could it be? I think it's a master. Konnichiwa. Hey Genshin Shorts, welcome to this stream. मेरे अकाउंट में लास्ट फुल होमा एंड हंटलून हुई थी। हंटलून कौन है? पूताओ पूताओ कह रहे हो क्या? Hey Genshin Shorts, welcome to this stream. गेंशी तू है क्या? You know, if you think everything through, Uncle Marcel is indeed the most suspicious Sorry of होता them all. हंटलून Could we be missing other suspects? Melissa Then we were didn't sure, know about the people turning into water thing when he narrowed it down to these three, Okay, did of he? course गेंशी bro, कर देगा मैं, why not? Malus has always been very reliable, and his judgment of others' trustworthiness has been fair and well आईडी दे दो considered. गेंशी शॉर्ट्स, आईडी दे When दो he अपना। laid out his case for the three, the rationale he gave me made a lot of sense as well. The suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs, has the means to dispatch Mecha to assassinate us, and possesses significant intellect and foresight. Even if I don't want to believe Okay it, गेंशी bro. I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Marcel. Game of Khans, okay. नहीं पता मेरे को इसके बारे में, एक्चुअली सच्ची बताऊँ तो गौतम भाई। Well, we still have another trump card on top of all the theorizing and speculating. Synth production base. Yes, Malus did say that charging straight in there would be extremely risky, but we don't have any other options right now. We need far more solid proof before we can hope to go charging in on our enemy. Navia, here you are. Oh, I've been looking for you. Huh? Aren't you the guy from the guards? Did something happen? Yeah. News came from Irenaeus just after you left. We've got another trial on our hands. Wasn't that place built specifically for holding trials? What's so newsworthy about this one? I know. But they said the person they're putting on trial is a Fatui harbinger called Tartaglia. हैं? लॉल। टाटगलिया किडनैप ये हो गया? अब wait, क्या? What? Is that someone you know? Yeah, we know him. Maybe even a little too well. Well, इसी देख क्या हुआ? he's वाह been भाई accused of being लौंडा the अमीर हो true गया है? culprit behind the serial वाह भाई disappearances इतने दिन case. का है वेल्किन। It's absurd, पैसा don't वाला you लोग think? भाई, पैसा वाला देख Wait, देख भाई। how? None of लिया? our investigations have Master had तू लिया? anything to do with him. इसकी आईडी है? That's what I thought was strange about it, so I came to tell you the news right away. If the charge against him stands, then it'll be next to impossible to get the guards to support any of our planned investigations. Right. Because they'll think they've already found the culprit.
Yeah. 250 And it'll be a ticks lot मेरा idea. harder than to 250 clear Mr. ticks. Callus's name. हैं? Ticks? Okay, yeah. I understand. I see. कारुटा का Well, कितने टिक्स partner, में मिलता है बे? What do you think we should do? We still haven't found any conclusive evidence. Let's split up. Huh? Split up? And a permanent dealer What मिल do you गया mean? है ऐसे 90-80 ओके 8 का 24 हाँ तो ठीक तो है यार आर्कन क्वेस्ट है शायद ओके हाँ आर्कन क्वेस्ट चल रहा है Just as expected है of my partner. कारुटा Since this is a trial about the serial disappearances case, the करो corporate's attention इसमें भी will डर है be वेलकम focused बैक on नोयर भाई Arrhenius, leaving his home base कहाँ चले गए थे नोयर भाई wide खाना वाना खाने open. गए थे क्या I mean You're right. it's like This the- is our best opportunity. All right then, let's do this. I'll stall them at the opera house and charge Marcel होगा as the बैन true एक सेकंड culprit. टेंशन मत ले होगा I बैन won't या have ना any होगा बैन chance क्या of लिख making रहा that charge stick, है though, ओ ब्लॉन्ड unless मॉमी we find more अरे evidence. क्या It'll डिटेल be दिख up रहा है to नोयर you भाई to make 4K it back में in time and सच्ची hand the बता रहा मैं decisive evidence to me. भाई मास्टर नहीं अरे वो कह रहा है नहीं होगा बैन ये कह रहा है नहीं होगा बैन काय को बैन होगा बे बैन क्यों होगा ये तो बताओ एटलीस्ट Just like you helped us in Lenny's trial. Demoiselle, please allow us to accompany you. I'm ready. Ah, Malou, Silver, when did you two get here? We heard that you'll be leaving Poisson and figured that you might require our assistance. हां देम It's our आर्टिस्ट hope द that बूम बूम your बूटी confidence अच्छा will be अच्छा वो bolstered बैन with the two देते of us by your side. क्यों बैन देते हैं आई मीन किस लिए Thank भाई you so much. Then, let's make haste for Arrhenius. Paimon, Traveler, I'll see you at the opera house. Ooh, I see. Damn, dude. It's like a illegal things. बीसी तुम लोग का रिपोर्ट मार रहा मैं रुको भेजो तुम लोग का बैट करा रहा मैं रुको लॉर्ड Now that Navia has set out for Arrhenius, we should also get going. The location has already been marked on the map, so let's head over. वो देखो गाइस अबे मेरा नींद भाग गया बीसी मेरे को नींद आ रहा था मेरा नींद चला गया मेरा नींद भाग गया बीसी छोड़ो अब कर लेते लंबा स्ट्रीम तेरे रिपोर्ट से कुछ नहीं आएगा कहाँ गया वो छोड़ो इसको क्या मारेंगे भाई Huh. According to Malu's info, the synth production base is underwater. Let's go and try to find the entrance. ये देखो गाइस ये देखो यही कह रहे थे ना तुम लोग हैं अनसेंसर्ड हो जाता सालो देख रहे हो मेरे से ज्यादा ठरकी थी तुम लोग चैट पढ़ रहा ये दो छोकरे क्यों लगते हैं नाविया के साथ रहते एक सेकेंड अच्छा ऐसा है क्या है बॉडीगार्ड है आपके जैसे बंदों से बचाने के लिए हाँ ओके अगर तुम ठरकी नहीं हो तो मर्द नहीं क्या मतलब हम क्यों ठरकी हो भाई हैं अब हम ठरकी क्यों हो हमारे रीजन बताओ ठरकी रात को नाविया इनर केविन दोनों को एकदम अच्छा Finally found it. नगर भाई गलत बात नहीं ऐसे नहीं So बोलते this is the entrance that leads to the synth production base. It sure doesn't seem out of the ordinary at all. Ah, you're right. An important place like और this पाइमन is कैसे bound नहीं to डूब have a रही ton है of protective measures and mechanisms. Navia's probably arguing up a storm right now. to अरे stop आज her. नावर अच्छा ठीक है नगर भाई कह लो मीनवाइल इनसाइड द ओपेरा एपिक्लेस ओके वेट गाइस यार मेरे को आईडी रिव्यू करना था रे मैं इधर आ गया है
It would appear that I must repeat my question again, Mr. Tartaglia. Mr. Tartaglia. Do you accept the charge that you are the true culprit behind the serial disappearances case? To be perfectly honest, I don't understand your country's complicated court system or the reason why I'm being charged with something I've never even heard of. God. However, I did hear that people who have been charged food can है, choose कहीं to पे भी participate in a duel to clear their name. Adaptable है, I Is see. that right? तुम In भाई which अभी भी case, खाने की तरह as देखते long हो as I FiFine का accept the गलत बात charge, Genshin shots है. I can have an all-out fight with that champion duelist Clorend, right? I've got to admit, that's one of the most enticing offers I've ever received. When I privately sparred with her last time, she was obviously holding back. मेरे को तो Really भाई ये देखना है disappointed. क्या बोलते हैं इसको. Hey, don't you understand? हाँ ये You're इसको currently भाई. the prime Purina. suspect for a major case. This isn't the place for you to be looking for fights. Oh? Sounds like the Hydro Archon wants to lecture me on the ways of the Opera House. Then why अच्छा don't you दूसरी बात. duel me देखो too? हमारे सती बाका I'm the भाई kind of स्ट्रीम के student that सती learns बाका best in आदि the heat भाई. of battle. देख रहे हो? कहाँ से No. That's not what I meant. Lord. Alas, it would appear that communication with the defendant is going poorly. We have made very little progress. In that case, let me explain everything from the very beginning again. पुरीना भी The लगा हुआ है goal of दूर रहा है this मेरे से trial is मेरे to को फाइट determine नहीं the लेना culprit तेरे से behind the हैं? serial disappearances case. That case had nothing to do with him. You've got the wrong man. Huh? अब What's होगा going शायद on? चाइल्ड वर्सेस नोवेलेट. Why is she interjecting again? I told you it couldn't be one of the Fatui harbingers. Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court with a key eyewitness. But that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you with contempt of court for your Wrong man. interjections. तो असली पति कौन है? Oh, एक सेकंड. please. Did you ever think I had any respect for this place's pointless theatrics? We can put that असली पति discussion कौन है? aside for now. इसका I'm असली not here पति to है? argue हेलो with you. भाई हैं? I'm here to charge the true culprit behind the serial disappearances case. And if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent by default. Correct? Oh, a young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I'd gotten half bored to death by all these rules and procedures anyway, so I'll take you up on that offer. So, Your Honor, is there nothing else for me to do now? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. चाइल्ड भी ठरकी. Now then, Miss पुरीना Navia, का होती हो माय who बैड is वो the भी person you would इधर like के. to charge instead? That person is. इधर का पर्व का शिकार हो जाएगी. ओके नर भाई. कुछ भी कहो यार, ये जो है ना, ये मेरे को ना इसका याद दिलाता है यार, जॉबलेस रीइंकार्नेशन का वो जो नहीं है वो लड़की, उसका याद दिलाती है यार. फुरीना का जो वॉइस एक्टर है ना. Marcel, the head of Confrérie. अरे of फिर मेरे को Cabrera. सब टाइटल पढ़ना पड़ता है यार. What सब टाइटल Confrérie? पढ़ना पड़ जाएगा. Never heard of कौन them in उतना my पढ़ेगा life. यार सब टाइटल. I've heard of them, but weren't they I know, Spina अच्छा di लगता है, लेकिन- Rosula's sister organization? Oh, is this going to be a friends to enemies type situation? Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone is an incredibly serious matter. Committing to the charge also means taking on the legal responsibilities associated with it. And if the charge fails, depending on the circumstances, you may also be Japanese, charged with the I crime mean, of of making course, a false गेम तो पूरा accusation. जापानीज में ही खेलता हूँ. जब Knowing जैसे this, आर्कन क्वेस्ट या do कोई you क्वेस्ट still करना wish हो to तब charge इंग्लिश this करता हूँ. man? Yes. जापानीज ही था, I फिर do. बाद में इंग्लिश किया मैंने. In that case, I declare अब the तो charge जापानीज to ही be यूज कर valid. रहा था. Miss Navia and attorneys, please take your places on the court. Members of the guards, please contact Mr. Marcel right away so that he may stand trial. नोर भाई यार, कंट्रोलर बड़ा गंदा हो रहा है यार. व्हाइट कलर का है बीसी. बहुत गंदा रहा है. अरे गेंशिन Mr. शॉट Marcel, सर, you इसको will not फेमस require an कैरेक्टर को भी attorney. Is that ताड़ना correct? होता है तो सबटाइटल नहीं देखता है. Apologies, sir.
It all just happened so quickly. I still haven't figured out what's अच्छा going ना on. हैं? I think an अपनी बात attorney कर won't रहा be है, necessary. अपनी बात कर रहा है. This is probably just a misunderstanding गलत between बात me है, and मैं मत Nadia. घसीटो इस बात में. Very well. हम बहुत शरीफ In that आदमी, हम case, सीधा since both शरीफ sides have इंसान. now arrived, Miss मेरे भाई, हम Nadia, कहाँ please सीधा present शरीफ your आदमी. charges. I would like to take everyone back to 3 years ago, to the case of Callus the Unfaithful. Only through elucidating what really happened in that case can we connect all the dots for the I serial feel मेरे भी disappearances हैंडल्स पे case. काफी मैल लग गई really है. think Exactly. I was the one who बहुत killed गंदा your होता है father? यार नोयर पे वाइट. Come on. मैं कवर खरीदने Why would I do that? Callus was my benefactor, and remember, both you and I only ran to the scene when we heard the sound पसीना of होता है the ना gun. साला गर्मी की If वजह that's से. ये enough तो to अलग make ही me a प्रॉब्लम. suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect as well? I think there's no point in getting into the specifics right now. The audience doesn't even have the big picture yet. Even I'm struggling to remember some details of that case. Exactly correct, Your Honor. I must refresh everyone's memory about that case before I can explain my charge and reasoning. अरे I गेंशिन see. भाई सब पता है In वो. which case, I will recount the findings about that case as originally हाँ वो reported ड्राइड by स्वेट लग Maison जाता है. हाँ Gardiennage. पोंछना पड़ता है. ये तो है. अरे गेंशिन भाई सब 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 पता है. लीसा ईसा सब हम ट्राई मार लिया. वन स्ट्रीम टेंशन ना लो तो. On the day of the murder, Spina di Rosula hosted a large banquet in a countryside estate owned by the Confrérie of Cabrières. During the banquet, all attending guests heard 2 gunshots from the courtyard. ये पूरी ना अपने बाप को भी गिल्टी साबित करेगी. अरे नखरे वाली आर्कन है. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect, Callus, holding a gun, while his acquaintance, Jacques, lay dead from a gunshot wound. The guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, they concluded that the suspect's first shot must have missed, while the second must have taken Jacques' life. The suspect did not dispute this conclusion, and also declined to defend himself in court. Instead, he chose to prove his innocence through a duel. Callus was defeated by champion duelist Clarand in the ensuing duel, and soon succumbed to the injuries. Okay. These are the known facts about the case. मेमोरी अच्छी है भाई, बुद्धि तेज है भाई नूवेलेट की. हाँ? अब हमको काउंटर करना है इसका. Okay. The one with the motive to kill was Jacques, not my father. And even so, Jacques still had no reason to pull the trigger. In truth, the third person shot Jacques first, and was shot in turn by my father when my father seized the gun from him. After that, the true culprit turned Best the dragon third ever, person Noveleta. into water, erasing all traces of him from the scene. Thank you for the summary, Your Honor. Of course, the guard's conclusion appeared quite sensible to us at the time. However, we should revisit the case now that we've gained new information about the abilities of water from the primordial sea. During the Something's not right. क्या क्या एविडेंस है अपने पास? जैक्स फैमिली. The testimony of the victim's family confirms that Jacques had thoughts of assassinating Callus when he set out for the banquet. However, in the end, he reconsidered and instead shared everything with Callus, hoping to seek the latter's protection. Unfortunately for Jacques, the true culprit had already considered this possibility and had sent out another assassin. Okay, loopholes. This assassin first shot Jacques, then turned to shoot Callus, only for Callus to wrestle the gun from him and kill him instead.
clothing was found at the scene. Okay. The Review guards करना मत once भूलना। believed they were used by Review Jacques करना मत as a भूलना। costume to हाँ disguise हाँ, himself. अरे तो But स्ट्रीम पर now रहोगे it तभी is ना, अब चले clear जाओगे that तो the फिर clothes कैसे were रिव्यू proof करूंगा that मैं? there was a third person करने at हुआ the खत्म scene, होने दो यार, कर and देता that they were turned into water Wait, कर लो after जिंशी committing भाई। the murder. Since it was raining that day, the culprit was confident that they could use the rain to wash away all traces of their dissolved accomplice. Realizing this, the true culprit caused the hired assassin to dissolve into water, leading everyone to believe Callus was responsible for Jacques' murder. This is the true version of events. अरे भाई आराम से टाइम लो। अरे कोई नहीं, चलो मैं चलता। गुड नाइट रियांशु। ऐसे नहीं होता है नोर भाई, ऐसे नहीं होता। आओ तुम हैं, मजे लो, भाग जाओ स्ट्रीम पर से। ऐसे ये सब चोल भी ना, ठीक है? ये सब चोल भी ना। किधर भाग रहे हो पहले ये बताओ। हाँ successful refutation, okay. So that's what happened. Wait, you're telling me something as dangerous as water from the primordial sea has been used for all these years? What a great theory. It also explains Callus's and Jacques' respective motives. I guess they didn't shoot each other after all. Mr. Marcel, you are the one being charged with a crime. You should provide a rebuttal if you wish to prove your innocence. But I think I agree with everything Navia just said. In fact, there was nothing in her speech that directly implicated me. Then, may I ask some questions? In my opinion, we primarily need to determine two things. One, do you have the evidence to back up your claims? I'm afraid not. At least not at this very moment. Boo! मार इसके मुंह पे बू कर रही है। You should just go home. जाना I may फिर। not have the evidence with me, but I know where I could go to collect it. If we look up the deserted clothes against a record of people who went missing around the same time, we should be able to find a match. Considering the serial disappearances case, the guards probably kept careful records of all missing persons from around that time, regardless of age or gender. That makes sense to me. Monsieur Neuvillette, I would consider this to be a reasonable investigative direction. अच्छा एक क्वेश्चन है, अभी वो बू करी तो वो नोविलेट को नहीं लगा कि वो कोर्ट के प्रोसीजर को ये कर रही हैं? नोविलेट Alternatively, she's become more diligent after charging an innocent citizen in the last trial. My second question has to do with the ensuing duel. If the truth is indeed as you described, then why didn't Mr. Callus explain himself in court? If he had testified that a person had been dissolved, he could have at least mounted a defense. I thought about this too, and the answer is actually pretty simple. He felt there were things that were more important to him. The dissolving power of water from the primordial sea अरे हाँ मुझे भाई कर रहा है यार, नींद चला गया भाई, नींद भाग गया मेरा। मैं सोच रहा था स्ट्रीम ऑफ करूंगा लेकिन भाई नींद भाग गया भाई। पता नहीं कि इतने टाइम में नींद आ रहा है, उसके बाद अगर ना सोया इंसान तो नींद चला जाता है। Rosula was in dire straits, and his reputation had already been shattered. He had no guarantee that going forward with the truth would allow the culprit to be brought to justice. What was certain, however, was that it would paint a gigantic target on my back. Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target of the serial disappearances case. What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with Espina right there and then. I wouldn't have been the only one in danger. All of us would have stood to lose our lives. Of course, the guards might eventually figure out the truth of the matter and determine that we were in the right. But what good would that do? How can a hollow verdict protect anyone? Had this opera house ever given my father any kind of confidence in its brand of justice, Spina di Rosula would have had no reason to exist. But by staying silent, we retained the ability to deter our opponents and continue the stalemate. I was able to become Spina di Rosula's president, which made me harder to target, as well as giving me more time to grow and learn. And once I have figured out the truth and stepped up to the challenge, I will do what this opera house cannot, and restore my father's truth and honor back to him. So,
You mean to say, your father intended to die in the duelist's इस साल हो जाएगा तो That's जल्दी हो right. जाएगा. अब तो भगा तो नहीं सकता ना गेंशी Do भाई. you have any proof? Of course. 2x में तो कर नहीं सकता है All इसको you जल्दी जल्दी need भागे. is to ask his opponent, Lorraine. Florand. I don't need your apology, your guilt, or your support from the shadows. You don't have to do anything for my sake. But since he entrusted his will to Lorraine, you, that's, Florand, you should tell us Navia. the truth about his sacrifice. So, during the duel, did you believe that Callus was intending to die? Yes, I did. As a champion duelist, I've fought many battles and taken a countless number of dishonored लेकिन कुछ lives. भी कहो यार, क्लोरेन In के my line चिक्स of देखो work, रे, गाल देखो रे. I've seen all kinds of people give their all for the faintest hope to continue living. Some हाँ were भाई, क्वेस्ट को determined, समझने के लिए others सबटाइटल भी पढ़ना passionate, पड़ता है. Too much. and some even मतलब manic and नहीं twisted. भाई. Just one look and I can tell if a duelist is क्या hoping to कहना live चाहते हो यार? or if they're गेंशी भाई? looking to I'm die. confused. I hereby swear on my name and honor as a champion duelist that Mr. Callus never intended to leave the ring alive. फिर रोएगी क्या नाविया? Since that's लॉल. your testimony, I have no more questions. It appears there really are good grounds to reopen this case. I concur. However, Miss Navia, you still have not explained the link between your father's case and the serial disappearances case. Right? What she said was fascinating, but At the end of Linny's trial, the culprit also only dissolved the victim in front of everyone because they realized they were at risk of being identified. The culprit could जरूरी नहीं है only भाई. time their actions so Japanese voice precisely होता तब if समझ they were सुनने की जरूरत है already यार. at the scene. देखने की जरूरत है नहीं. Coincidentally, जापानीज वॉइस से ये Marcel होता तो. इंग्लिश में attended तो यार आराम both से the सुन के भी banquet कर सकते. and the trial. So that's why you suspected me. Even after hearing your reasoning, I still can't help but find it a little preposterous. I'm used to it, though. You've always been an impulsive and sentimental child, Navia. It's one of your most endearing traits. Mm-hmm. No need to appeal to pathos. I won't try to refute your points one by one, but even if everything you just said was true, can you prove that I was the only person present at both events? On top of that, does a person have to be physically present to control the timing? Can't someone remotely monitor the place? अभी खुद को ये कर रहे हैं. हाँ? I don't know what she can say to that. I know that even with that, you might still think you can reduce the list of suspects with some further investigations until I'm the only one left on the list. Alas, who won't feel at least a little hurt by an accusation of murder from a girl you see as your own daughter? But if I were to dismiss this completely, you'd also think I'm not being considerate of your feelings. Ah well, let Uncle Marcel teach you another lesson. Do you know what the biggest flaw in your reasoning is? I suppose you're gonna tell me anyways. It's timing again. I'm a businessman by trade. From that standpoint, there's no reason for me to kidnap young women. It's a high-risk action with nothing to gain. In addition, I left my home in Snezhnaya when I was young to come to Poisson and work in some trade. My business only thrived when I received Callus's patronage. Music देखो भाई कितना But intense है. the disappearances began before I ever stepped foot in Fontaine. I do apologize, demoiselle. This was my mistake. No, it's not your fault. I'm sure he had come prepared. Is there anything else मैं you'd यहाँ like पर to fail हो say? गया and Would you लेने like to check मर the गया date of मेरे my वर्ल्ड first से. business license against Seriously? the first known हाँ? case of the serial disappearances? ऐसा You होना can चाहिए था also ऑप्शन take a यार. look at my कि border आप entry कैरेक्टर खोदो. records, or ask my friends and family when I left Snezhnaya for the Teach you a first lesson, time. Navia. Could those records and testimonies do something to appease the unspeakable anguish in your heart? Seems like she got the wrong guy. At this rate, Navia will be convicted for falsely accusing him. I think you've done a superb job of dissecting your father's feelings as he neared the end of his life. But aren't you going against all of his wishes and expectations right now? He wished for you to become more rational, collected, and conscientious, instead of dwelling only on your own feelings. Once you've learned to be more considerate of others' feelings and to stop rushing headlong into अभी things, you'd लेनर have met तुम तेरे most से of his इंस्पिरेशन ले रहा expectations. है. Okay, okay.
This isn't just about me, and it never has been. The biggest difference between me and the rest of the victims is that I still have the ability to search for the truth. ये सारे While मिलकर that हमको same पागल बना रहे agency हैं। has long been taken from them. The people whose families were destroyed by synth abuse, the people who lost their loved ones to the serial disappearances, and the people who suffered tragic ends due to their sense of justice. Many people's images are flashing दो before दिन my बचे eyes. अब ना मिलने वाला I'm अब sure ना मिलने some वाली are coming बुक। to अरे those कितने of you in विशेष the कर चुके हो audience ये as तो well. बताओ। And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vache? फंस गया भाई फंस गया। So you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. 60 कर लिया, okay. Meanwhile, a little while earlier at the entrance at the synth production place. Okay. हाँ भाई wait. अरे डोमेन है क्या ये भी? ओ भाई मेरे को लगा आईडी रिव्यू कर देता यार मैं अभी। फिर ये डोमेन है तो। चेस्ट वेस्ट है क्या भाई नीचे? तो नहीं। पार्टी सेटअप नहीं करना अभी। पार्टी सेटअप जरूरत नहीं है पार्टी सेटअप करने के लिए। Emerge. Busted. स्टार्ट। एक सेकंड को टेस्ट वेस्ट तो नहीं है यार इधर। ये ना टेस्ट भी छुपा देते हैं भाई। पॉइंट आउट भी नहीं करते भाई इधर चेस्ट वगैरह है। ओके नहीं है कोई चेस्ट। अरे जीत जाएगा 50 टेंशन ना लो पर कोई 5 स्टार नहीं मिलने वाला। अरे मिल जाएगा यार। That guy really prepared a lot of stuff for this place. Door of resurrection activated. Paimon thinks we need to go up, but Paimon doesn't see a way. Let's take a look around. Maybe we'll find a hidden mechanism that'll show us the way up. हाँ और कुछ है इधर? नहीं और कुछ नहीं है। वाटर लेवल बढ़ गया थोड़ा सा। गेंशिन का वेपन बना बहुत क्वालिटी है वो तो है यार। इसमें क्या ही कर सकते। But this is still a ways away from where we need to go. केकड़ा किधर है भाई? जरूरत ना पड़ जाए उसको उसकी। I see everything. तुम्ही से तो डर लगता है ना एकदम। सब देख लेती हो तुम आजकल।
This is order. Dude. Done. एलान पे पुल्स किया फिर भी 60 पेटी तक पहुंच गया था। फुल फ्री टू प्ले फिर भी नहीं मिली। अरे मिल जाएगी यार, टेंशन ना लो, मिल जाएगी। अभी 2 दिन है ना, हो सकता है, चांसेस है। तुमको 1-2 विशेष चाहिए बस। आई मीन सच्ची बताओ तो हार्ड पीटी हिट करने के लिए है। एक सेकंड चेस्ट तो नहीं टूटा ना मेरा कोई। नहीं, मैं वेपन बैनर का बात कर रहा हूँ। 64-65 पे हो जाता है ना काम एक्चुअली। वेपन बैनर इज लाइक 64-65 पे मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं सॉफ्टवेयर। I see everything. Right now. Gotcha. Things are about to get dicey. Okay, done. क्यों जा रहे भाई हम? After all that, we finally made it to the innermost sanctum. Though, as expected, the mastermind isn't here. He's being charged by Nafia as we speak. That's right. Then let's hurry up and find some हाँ evidence यही तो so है, we कोई can इवेंट get back to वगैरह नहीं है ना the एमजे Alpha भाई। Navia. कोई इवेंट वगैरह होता तो 2 पुल मिल जाते यार, 2-3 पुल हो जाते तुम्हारे पास। अब तुमको निकालना पड़ेगा भाई पूरा एकदम ग्राइंड करके। Oh, look! There's an important looking basin over here, and it's full of water. That means this is where they make all the synth, and that special water is the main ingredient. नहीं एक्चुअली वर्थ इट है ये वाला वेपन बैनर, वर्थ इट है एमजे भाई। But the पुल pure करना stuff वर्थ can इट है। dissolve a human. Paimon will take notes on this incriminating evidence. Let's see what's written here. Nothing escapes Detective Paimon's eyes. चलो वो वाला चश्मा पहन ले वापस से पाइमोन, मजा आएगा। Alice, Navia's father. Oh, this seems to be an investigation report on him. वो एक फरूशी ट्री का आसपास मिलता है ना, ऑरेंज कलर का। वो भी प्रीमोस देते हैं शायद, पता नहीं यार। फरूशी ट्रीज। Yep, it's about finding someone to assassinate Jacques and Callus. पैसे क्यों यार, वेलकिन परचेस कर लेते, 2 हो जाता है यार आराम से तुम्हारे पास। This should prove the existence of the 10 third पुल person, खरीदने की right? जरूरत ही नहीं था तुमको। 2 वेलकिन परचेस कर लेते, तुमको 4 पुल मिल जाता है ऐसे। We still have 4 not पुल एक साथ मिल determined जाते the हैं exact content और of the 2 key दिन में 2 पुल और हो information जाते हैं Callus तुम्हारे has passed on to certain members of his organization. The old dog's a real menace to deal with. Even if he abides by the promise he's made to us, he will still have the upper hand. ये ऑफर करोगे तो 100 He प्रीमोस can देता है act इसलिए। whenever he wants to make our lives miserable.
The only option left is to remove him from the picture entirely. I concur. Let's send someone to kill him. He won't declare war as long as we don't touch Navia. Oh, seems like we've got a bunch of correspondence between the higher-ups. Okay. They're all just so evil. पाइमन देखो कितनी गुस्से दिख रही है भाई, एकदम गुस्सा में गुस्सा। और कोई और एविडेंस है? एक एक करके देखते हैं भाई। What's all this? It's a bunch of really cute 70-100 क्रिट पे ही रहेगा हमें। accessories, a अरे ना haircut, मिल जाएगा a यार, टेंशन ना लो। even a makeup box. Oh, Paimon sees it too, but why are all these cute things labeled with different girls' names? They probably belongs to the victim. Huh? You mean the girls from the हाँ serial गेंशी भाई देखता यार, कैसे देखूँ ये तो बता ना एटलीस्ट। अभी टीसीजी वाले इवेंट के अटैक वो यूज And all the boxes of things, these names. That means अभी टीसीजी वाला इवेंट के अटैक वो, अच्छा टीसीजी से अटैक वो मिलता है कोई? ओके ये डन है ना? ये अभी भी क्यों जल रहा है बे? ओके सारे जल रहे हैं। Whoa, there's so much synth हाँ देखता ना, देखता सबका देखता। दो आदमी का है। गेंशिन शॉर्ट्स का देखना है, तुम्हारा भी देख लेंगे। बस ये वाला डोमेन से बाहर जाने दो यार। Mixing in progress. Ready to drink? Stock sample? Huh. They've also got all the synth pretty clearly labeled. Whoa, there's even fruit-flavored synth? Yep, it's super obvious. Obvious, okay. ये वाला भी डन। What's this over here? Looks like some kind of place for research. Experiment number 16 aims to verify Jacob Ingold's research conclusions on the primordial sea and use his theory as a foundation to achieve a breakthrough. The experiment was a failure. No individual managed to resurface from the water from the primordial sea. Female specimens 22, 23, and 24 were dissolved. Paimon. Sorry, traveler. Paimon will try her best. It's just that Paimon's never read something so scary before. Lol, Paimon. How can someone write something that terrible in such a matter-of-fact tone? You read the rest. Paimon's too scared to keep going. Actually, Paimon काफी ये हो गई है यार, क्या बोलते हैं? I mean, एक्सप्रेशन काफी अच्छे दे रही है आजकल। पहले फ्लैट एक्सप्रेशन होता था, एक दो हाथ ही हिलाती थी। काफी I mean पाइमन के एक्सप्रेशन ना आ रहे हैं, अच्छा बात है। I mean at least. So that's why he did all of these experiments. But did he really think he'd be able to find a way just by dissolving people over and over? That's just insane! Huh? Isn't that the name you heard by the fountain? Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances case. He's the researcher. You mean Vache is the one who did all of these... experiments? The voice I heard from the fountain was a veneer. So that's it! Vache was no victim, but personally took his lover and...
If that's the case, why would he want people to resurface from the water? In any case, Paimon will write it all down. Okay, Paimon. We've looked at almost everything here, and it seems like our theories were spot on. But Okay, MJ bhai, wait karo. Who really is Vash? yeah, we haven't found anything that reveals his true identity. No wonder even Nervalette wasn't able to find anything. Whoever... वापस से क्यों दिखा रहा है यार? You take that side and Paimon will take this side. Check everything carefully. We'll find something for sure. Ugh. Nothing at all. And Paimon can't even find snacks either. Whoa, really? Let Paimon see. Vinier. Isn't that Vache's lover's name? Then you found her diary. Let's see. Aw, it's just a normal diary chronicling their love story. She was so sweet too. Oh, Paimon feels even worse for her now. She made a list of baby names. Okay. So many! A whole page's worth! But they're all crossed out. Was she unhappy with all of them? The final name she decided on was... Marcel. Wait, but Marcel's pretty old. Has this case been going on for so long that he's Vache and Vinier's grown son? Hey! Paimon still hasn't कितना सवाल figured out पूछती है? yet? कितना सवाल पूछती है पाइमन? चलो हम उधर बताते हैं। डायरेक्ट कोर्ट लेके जाएगा क्या कि मेरे को टेलीपोर्ट कराएगा? ये भाई रीसेट हो गया रे। And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vache? Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. Navia! We're back! Lol. As expected of my partner. I just knew you'd return in the nick of time. Just how often do you intend to flout the rules of this court? It's all right, Monsieur Nervalette. Given their confidence, I expect they've found the crucial evidence. बाकी के जो बोल रहे हैं वो कुर्सी पे बैठ के वो नहीं कर रहे कुछ। ट्रैवलर खड़ा होके बोल दिया तो भाई को भाई ऐसे काई को बोला तू? है कौन है तू बोलने वाला? ठीक है भाई। But the truth of it, Marcel, ए गूंगा is बोला। that you've always been Vache. हाँ, wait, what the hell? भाई गूंगा बोला रे। We've investigated your lair and we already know everything. After your lover, Vinier, was dissolved, you kept abducting young women to experiment on the hopes of bringing her back to you. You even created Marcel as a new identity and destroyed all records of your past as Vache. So that's it. Even the villains in opera performances rarely go that far. And with that, Marcel's motive has now been established. This information regarding your past also dismantles your prior timing defense. Well, Marcel, do you know where you went wrong? अब भाई इसकी बारी।
You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. So, you never noticed how we changed, or how we grew as individuals. You also never understood Boss's real expectations for his daughter. Or our determination to see things through. Your determination. Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Otherwise, the trial will move on to the next stage. Do you really think I wanted to do any of this? Pay attention to you? What for? Have you ever paid attention to me? अरे कब खत्म होगा? अरे क्या ही बोलूं मैं? Genshin भाई. Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your eyes? No one helped me. No one even believed me. All those decades ago, even the officers from the Maison Gardiennage were laughing at me. They said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone mad from grief. Vignier's death was brushed away by all of you as if it didn't matter at all. Well, now you know, don't you? Ha! Well, it's too late now. All those who were dissolved are gone forever. You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice. Your beloved drama. आशिक की वजह से गेम का क्वेस्ट बढ़ गया. To the suffering of the people. Vignere is dead. We promised each other that we would always be together. Wherever she goes, I will follow. But I'm not from this blasted place. Oh, wait, so what? I can't be dissolved. No matter what I do. किधर से रे तू साले? मैं बोलने वाला था पानी पी ले भाई. Hey, is that water from the primordial sea that he's drinking? Dead. I can't dissolve. Can't dissolve. Can't dissolve. मेरे को लगा ये यहीं से है. लॉल अभी पता चला. Do you all see? I can't go. I can't follow. So if I can't go where she is, what choice do I have but to try to bring her back? I did all of that, and in the end, that accursed callous still got the better of me. I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his idiot daughter at the very end. Idiot daughter. The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guards, please restrain him. Don't touch me! Don't anybody come near me. I still need to save Vignere. Our promise. We made a promise. Vignere. Vignere. Please, Vignere. Don't think badly of me. All I want to do is fulfill our promise. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia no longer have any basis. Fine by me. I was in a bad mood, but after a show like that, I'm actually feeling pretty good. Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth behind the serial disappearances case. Okay. Sample all the evidence. The man now known as Marcel was originally named Vacher and worked as an adventurer with his partner and lover Vignere. During an underwater expedition, Vignere accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Vignere back to life. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to operate a business in Poisson. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synth. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came into conflict with Spina di Rosula. After exchanging blows with Spina di Rosula for many years, Vacher decided to assassinate their president Callus at a banquet. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the scene. And just recently,
Vache attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case, using a similar method. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vache's machinations that he was eventually successfully charged in court. Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth revealed to all. बच्चे कोर्ट में क्या कर रहे हैं भाई? हेलो. The oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vache. ये गया मेमोरी कार्ड. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Mr. Vache is guilty. बच्चे तो अलाउ भी नहीं होते कोर्ट में. पता नहीं कौन सा कोर्ट है. Guards, take Vache away. मुजरा देख के आए बच्चे. It's what he deserves. With that, the serial disappearances case is over now. We really just witnessed history. Who would have thought the true culprit would be such a polite and well-spoken guy? Yippee! We helped Navia bring the bad guy to justice! और He's कैसे hurt बोल? so many innocent people and now he's finally getting what he deserves. Huh? Are you okay? Navia. Demoiselle, you were absolutely brilliant. The day our late boss had always hoped for has finally come. You can rest easy now, knowing justice has been served. Okay. Yeah. It's finally over. It's all thanks to you guys. And my partner. See, Papa? Spina di Rosula's still doing well with me at the helm. Well, now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served, past wrongs have been righted, and it's a big ol' happy ending. Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to attend to. So, if you'll excuse me... Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. What now? None of this has anything to do with me. According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, तभी तो Genshin Impact खेलोगे ना. अगर नहीं करती तो फिर कैसे खेलोगे तुम Genshin यार? Genshin Shorts ये बताओ. अगर वो नहीं करती तुम खेलते Genshin Impact? Is this really necessary? Haven't you already caught the real criminal? Isn't it time for side characters like me to exit stage left? Please respect the laws of Fontaine. This has always been the rule. All right, but this sure is a lot of hassle. All I need to do is stand over there, right? Let's just get this over with. बात तो सही है. Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established that Mr. Tartaglia has no direct connection to the serial disappearances case. The guilty party has been identified, and thus it is logical to suppose Mr. Tartaglia is innocent of the charges. We now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale to render the final verdict on the charges. और छोटा नाम नहीं लिख सकते थे. Short form नहीं है क्या इसका? Oratrice Mécanique. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Mr. Tartaglia मुंह नहीं दुख रहा क्या इसको बोलते हुए? Guilty. What? What? Hey! That's not funny. Didn't you just say I'm supposed to be innocent? हम तो इस गेम के लिए What's with this verdict? Is your justice machine malfunctioning? Huh? This has never happened before. The Oratrice actually returned a different verdict from the Chief Justice. I mean, have you ever heard of an innocent Fatui Harbinger? Do you think the Oratrice might have just convicted him on general principle? But weren't the charges about the serial disappearances case? No matter what else he's guilty of, it shouldn't affect the verdict in this case, right? Child has been declared guilty by the Oratrice. Okay. The judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale is, by law, the final verdict of the court. बोल दे भाई. iMac नहीं है, OMac है ये. The guilty verdict. Guards, please take the suspect into custody. Guys, देख रहे हैं? Protocol. Fontaine में iMac की जगह OMac है. Cutscene आया भाई.
So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too! Dude, child के cutscene तो एकदम hot है रे. Boom. What the hell just happened? I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. Oh my goodness. लेकिन लगा तो जरूर इसको भी ये देखो. सुला दिया चाइल्ड को. क्या मतलब चाइल्ड से बेटर हाइड्रो कैरेक्टर है ये. Hey, Monsieur Novelette, what's going on? Shouldn't they have been cleared already? I'm sorry, Bob. Apologies. This is also the first time I've encountered such a situation. However, according to the rules established at the conception of Fontaine's court system, the oratrice's judgment One shot is the कहते final child को, verdict of हाँ. the court. All I do is follow court procedure. As for why the oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable than me. If even the justice doesn't know her, Chief Justice. Why are you looking at me? Lord. I had nothing to do with it. I don't know what happened there either. Hey, stop staring at me! What does Lady Why? Farina mean by that? इसके नखरे भाई next level है भाई dude. It's like मेरे को काय को देख रहे हो बे? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं She किया. says she has no idea either, but that's impossible. Didn't she create the oratrice herself? Yeah, so are the verdicts reliable or not? Can results like this really be called justice? पुरने के फट गए. My dearest citizen, अब acting देखो भाई. did you इसका really next think level we'd है. allow an incorrect verdict to be handed out in this court? Did you really believe that the judgment could be mistaken or be the result of some sort of random mishap? Don't tell me. You thought even I had been blindsided by the oratrice's result. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what was going on. However, given the state of things, I shall give you an कुछ भी कर सकती explanation. है. Everything that just took place, including my supposed shock and bafflement, was a part of an elaborate performance, with every action meant to stir up drama and excitement. Children ने हाइड्रो यूज किया होता तो इम्यून आता. There is a script. Everything has unfolded exactly as I expected from the very beginning. As the embodiment of the very concept of justice, the oratrice shall never render an arbitrary judgment. If you thought Child had nothing to do with the serial disappearances case, it is only because you've been blinded by the superficial appearance of innocence. Everything he's done, Yeah, 70% not to mention hydro the है. danger he सही बोला. poses, are beyond ordinary comprehension and क्योंकि child का completely unforgivable. child का vision तो हमारे All पास है. shall be revealed in time. You will come to understand my noble intentions, as well as the absolute correctness of the oratrice's verdict. Now, having said that, although I hate to leave things hanging in suspense, it is now time for this performance to end. हाँ, As the inventory में lead रखा हुआ है. actress, I shall be the first to take my leave. Lord. Toodaloo. भाग गई So भाई. she chose to make her escape after all, did she? So you're saying we shouldn't put much stock into what she just said? Lord. She probably just put on that performance to save face.
As for the truth, it's unlikely that she actually has any idea. Way to pull the rug out from the from under her. Lol. However, please be assured that I will continue to investigate this case in a personal capacity. Just as I promised, if the judgment has been incorrect, we will do our utmost to clear his name. ऐसे भी सारे फतुई Even कुछ ना though कुछ we feel pretty badly for him, we'll take your word for it for now. After all, he's done plenty of bad stuff. So he should have known he'd go to prison someday, right? हाय पूरा लिए उड़ाने वाला था वो तो अभी है क्या बोलते हैं आई मीन आर्कन क्वेस्ट उस टाइम के ओके भाई मेरे ख्याल से आईडी रिव्यू कर सकता भाई ओके ओके जल्दी दो गाइस किसके किसके यूआईडी थी लौट दो फटाफट यूआईडी बोलो गाइस यूआईडी प्लीज कौन कौन था चैट में गेंशन ओके 8465 95 635 अरे कितने 5 है भाई तुम्हारे आइस में सच हैरिसन वेल्स ओके ओके भाई शाव देखते हैं शाव ओके 73 180 सही तो है शाव आपका यार 135 एनर्जी रिचार्ज ठीक है क्या चाहिए होपिस वर्मिलियन है मैं कहूँगा इसका नॉर्मल अटैक को भी क्राउन करो डैमेज लॉस हो रहा है आपका नॉर्मल अटैक क्राउन करो इसका आर्टिफैक्ट देखते हैं आपका अच्छे पीस है बैलेंस है ये भी बैलेंस पीस है ये भी तो अच्छा है यार ओ ये थोड़ा एवरेज है आई सी ये थोड़ा सा एवरेज है ठीक है चलेगा एंड ओके आई सी यहाँ पे कोई क्रिट रेट नहीं पर अटैक परसेंटेज ठीक तो है ठीक है क्या दिक्कत है बस थोड़ा सा क्रिट डैमेज कम है बट इट्स ओके 73 180 काफी अच्छा रेशियो है 135 एनर्जी रिचार्ज के साथ 2.2 के अटैक है क्या तो काफी अच्छा है यार आपका टाइपिंग प्रो मैक्स अरे यार क्या करे यार आई मीन कंट्रोलर से फिर करना पड़ता ना PS5 में अब कीबोर्ड थोड़ी काम करेगा अच्छा यार बस नॉर्मल अटैक लेवल अप करना हाँ नॉर्मल अटैक लेवल अप कर लेना ठीक है नॉर्मल आपने क्राउन तो कर दिया अल्ट को भी नॉर्मल भी करना होता है इसका ठीक है नॉर्मल भी कर लेना फिर डैमेज आएगा अच्छा शाव है एकदम बैलेंस शाव है एनर्जी रिचार्ज क्रिट रेट क्रिट डैमेज एकदम परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं दूसरा आईडी क्या था डबल 88 101 4865 सच एमजे कौन सा कैरेक्टर देखना है आपका तिग्नहारी ना हाँ ओके आई सी ये वाला वेपन यूज कर रहे हो 65 193 एंड बस क्रिट डैमेज चाहिए एक्चुअली सच्ची बताओ तो क्रिट डैमेज ही चाहिए देखते हैं आर्टिफैक्ट्स आपके क्या क्या अरे यार ये तो एवरेज है यार टोटली एवरेज है ये भी एवरेज ही है एलिमेंटल मास्टर सारे एवरेज पीस है यार आपके ऊपर तो लगे हुए आई मीन ये अच्छा पीस है ऑनसेट है ये अच्छा है 13% क्रिट रेट है ठीक है बाकी सारे एवरेज है यार क्रिट रेट क्रिट डैमेज हाँ एवरेज पीसेस है यार आपका रेशियो तो आराम से अच्छे से मैनेज हो जाएगा यार सच्ची पूछो मेरे से पूछो तो सच्ची बताओ ना तो ये वेपन जो है ना क्या बोलते हैं एक 3 स्टार वेपन आता है ठीक है एमजे भाई एक 3 स्टार वेपन आता है जिसका नाम है स्लिंग शॉट ठीक है उससे आपको क्रिट रेट मिल जाएगा ठीक है और यहाँ पे आप क्रिट डैमेज दे सकते हो ठीक है फिर आपका रेशियो मैनेज हो जाएगा अगर आपको वेपन नहीं मिला तो क्योंकि मैं अपने टिग्नारी पे R5 स्लिंग शॉट यूज़ करता हूँ उस पर चार्ज अटैक का बोनस है 60% ठीक है और क्या बोलते हैं मैं 4 पीस वैसे वंडरस तो नहीं यूज़ करता मैं ये यूज़ करता हूँ क्या बोलते हैं क्या नाम है यार उसका गिल्डेड यूज़ करता हूँ फिर डैमेज सर्कुलेट नहीं है आई सी मैं पहले बता रहा एक आता है स्लिंग शॉट करके वेपन आता है 3 स्टार है वो तुम यूज़ कर सकते हो टिग्नारी पे काफ़ी अच्छा है पर हाँ तुमको एनिमी से थोड़ा क्लोज रहना पड़ेगा 4 शॉट मारने के लिए ज़्यादा दूर मत रहना एनिमी से ठीक है
फिर तुम्हारा रेशियो अच्छा मैनेज हो जाएगा, ठीक है। 150 हिट कर पाओगे इजीली। हाँ तो लेवल अप करो इसको, R5 है तो दो इसको वेपन वो चिपकाओ। तुम्हारे पास वंडर्स हैं ही, और फिर यहाँ पे क्रिट डैमेज ढूंढ लो, जैसे तैसे मिल जाए यार, ट्राई करो मिल जाए, एवरेज भी मिल जाएगा तो चलेगा। दो फिर देखो तुम्हारा टिकनहारी मारता है कि नहीं डैमेज, डेफिनेटली मारेगा डैमेज। बाकी ठीक है टिकनहारी भी। यार 55 हो यार, आपको आर्टिफैक्ट मिलेंगे आगे चल के, टेंशन ना लो। चलान देखना। अरे Something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one. बोलो यूआईडी बोलो वापस से, रुको देखने दो कहाँ गया। 88 यलान पवोनिया 6400 क्रिट डैमेज लो है यार। 55 हो यार, आपको अभी आर्टिफैक्ट फार्म करने हैं, टेंशन ना लो यार, आपको अभी आर्टिफैक्ट फार्म करने हैं, मिलेंगे अच्छे आर्टिफैक्ट यार। 55 के लिए ठीक है अकाउंट। HP हाइड्रो डैमेज बोनस मिल जाएंगे आपको, पीसेस मिलेंगे यार, अभी मिलेंगे, टेंशन ना लो। 90 कर देना इसको। 211 एनर्जी रिचार्ज, ठीक है यलान ठीक है, अभी फिलहाल के लिए यलान ठीक है। क्राउन कर देना ई और इसके अल्ट को क्राउन कर देना, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यलान ठीक है, ठीक है यार। 55 के लिए यलान सही है, कोई दिक्कत नहीं। PS5 पेन ना हो गया, कोई टेंशन ना लो। काजुआ ईएम बिल्ड करो। आपने क्रिट डैमेज बिल्ड कर रखा है, इनो यप आपने क्रिट डैमेज बिल्ड कर रखा है। आई मीन क्या बना रखा है आप ही जानते हो यार। एनिमो डैमेज दे दिया यहाँ पे एलिमेंटल मास्टरी दे सकते हो, यहाँ पे एलिमेंटल मास्टरी, यहाँ ईएम तो दे ही रखा है, ठीक है। हर एक जगह ईएम, ठीक है। एनर्जी रिचार्ज वेपन दे दो, वेपन एनर्जी रिचार्ज दे दो। यहाँ पे तुम ये कर दो, ईएम कर दो, ठीक है। ईएम वेपन कर दो। फवोनियस है तो फवोनियस भी चलेगा, ईएम गॉबलेट नहीं है। अच्छा मिल जाएगा, कोई ना, मिल जाएगा। करो फार्म करो, आर्टिफैक्ट तो अभी फार्म करना यार एमजे। अभी यार 55 को यार, अभी तुमको अभी बहुत आगे जाना है यार गेम में, टेंशन ना लो। नाइदा कोर्ट में झूला नहीं झूलते। Oh, Monsieur Neuvillette! That power you showed when you took him down. Who are you really? I'm the Chief Justice of Fontaine, of course. If officers of the law lack the strength and capability to enforce it, then it makes a mockery of justice. D-Dragon है, D-Dragon। होप करता वो मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं अपने टिकनहारी पे वही यूज करता, दिखाता मैं तुमको अपना टिकनहारी बिल्ड। मेरा टिकनहारी बिल्ड देखो, R5 स्लिंग शॉट 91। आई मीन आर्टिफैक्ट इसके थोड़े चेंजेस है मैंने। हाँ ये है एक्चुअली, अभी मैंने दे रखा है याइमिको को। हाँ अगर स्विच करता हूँ ना तो ये रेशियो है मेरा, 67-180 रेशियो है मेरा। देखो टिकनहारी का सिर्फ एक ये बोस है, मैं गिल्डेड यूज करता हूँ। 67-180 देख रहे हो रेशियो कितना अच्छा मैनेज हो रहा है। अच्छा मारता है यार मेरा टिकनहारी, अच्छा डैमेज देता है। फिलहाल के लिए अभी मैं ये कर लेता हूँ, क्योंकि याइमिको का थोड़ा बहुत मैंने चेंजेस किए इसलिए। Hey, what are you doing? Quick, stop him! Traveler! Hey, Traveler! Marcel! What are you doing over here? Lol. Stop resisting arrest! Cease, or we'll add another charge to the list. No, wait! I just want to ask the Traveler something. I'm not looking to run away. Please, just let me ask this one small thing. Go on. Thank you.
I was being led away when I finally realized something. Where did you first hear the name Vache? I erased all records of that name. So, unless... Yes. Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been convicted. Yes, I met her. Really? You did? You're sure? You met her? But how could that be? How did you manage to do it? Fountain of Lucy? The Fountain of Lucine? Then she's been so close to me all along. और मेरा टिग्नहारी C1 है तो 15% क्रेडिट मिल जाता है. Please give me a chance to talk to her again. Just let the traveler take me to the fountain to see her one last time. This is the last request I'll ever make in my life. You can do whatever you want to me afterwards. I don't care. What? Give an inch and you want to take a mile? Do you think serial killers get to make requests like that? Paimon agrees. Why should we give him what he wants when he's only done a ton of super terrible things? This request, is it worth as much to you as your life? Of course! Wait, no. It's worth even more than my life. Okay. Humans. Will they betray the instinct to live just to satisfy spiritual needs? Very well. I will grant your request. Your Honor, I fear that... I will go with him. You do not need to worry about any escape. In that case, I shall leave him in your most capable hands, Chief Justice. Thank you, Your Honor. Thank you, Your Honor, huh? Is this the place? You said she's here, but what do I need to do to see her? हाँ ठीक है यार, समझो है ठीक है. वो और भी डैमेज इंक्रीज होगा, टेंशन ना लो. Yeah, and even Paimon could hear her after drinking that thing. Didn't you just drink a lot of it on the stage as well? Oh, in that case... Vache! Ah! Yes, that's it! So you heard it too! Vinier, it's me! It's me, Vache! Vache? Vache? I'm here! Where are you, Vinier? I'm coming for you. Can't watch this stream, stop the quest, Kaiko. Hey, wait! Be careful! Hey, wait! Vinier, is that you? It's me, Vache! Vinier! Vache? Why did you come? Didn't I say? You don't need to look for me. You look a lot older than I remember. How long has it been? It's been more than 20 years. I've suffered for over 20 years since the day you left. All this time, only the thought of bringing you back has kept me alive. Nothing else mattered to me. I must be dreaming. Who would have thought I'd get the chance to tell you all of my feelings like this? Vinier, you are my everything. I really don't know how I could live without you. But Vache, if you ask me, this world would be better off without you. What are you saying? If not for you, I would have finished my law degree and probably become a top-tier attorney one day. If not for you, I would have continued to pursue my love of the arts, and my works would have been displayed in the Palais Mermonia itself. If not for you, I would at least have been able to take care of my mother. And she would not have grown old and died alone.
with nothing but the tears on her cheeks. It's all because of your selfishness, Vache. It's all because of you. You... Wait, you are not Vignier. Who are you? Dude, music. You're right. I am not Vignier. I am the sacrifices. Every woman who died by your hand, as our bodies dissolved, our consciousnesses flowed back to the primordial sea. Our thoughts circulated endlessly within the primordial sea, and we were no longer individuals, but we became one, just as streams of water come together in the sea. I'm Cressy. I'm Lemony. I'm Azine. The only one I am not is Vignier. Why? But then, where is Vignier? She doesn't want to see you anymore. Every tendril of her consciousness is avoiding you. This is what you get for your selfishness. Your selfishness robbed us of our lives and our futures. You said time and time again that you'd do any and everything for her. But did you ever consider whether she'd want to see you do the things that you did? If she would despise you for what you became? You are a liar, a heartless murderer, and a cowardly narcissist. The only thing you are not is Vignier's beloved. From the moment your first victim died and her consciousness merged with Vignier's, she has had nothing but pure hatred for you. This quest is dark, eh? They must have wanted No! to kill you. Vignier! She can't hate me. Let me see her, please. Have mercy. Murder June kar diya, lol. You still don't understand. When I said don't look for me, that came from the real Vignier. She really doesn't want to see you anymore. But on top of that, she also said that because it's her final drop of pity for you. She said that because she knew that if you did come here, we will show no mercy to you. Vache. Vache? Vache. 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 Yeah. Vache. This is dark. Drown. Damn, this quest is dark, bro. The guy on a culprit of serial young man case Marshall. Several days later, okay. फ्रेंड उनसे ज्यादा खतरनाक. Finally, we have some time to do shopping. Gosh, it's really been a long time since we've been able to relax. Shopping is stressful. On way though. Okay. Huh. Well met, partner. I knew something great मेरे ख्याल was से going to खत्म होने happen के when I भाई. woke up in such a good mood today. Even this weather can't put a damper on the demoiselle's mood. It's a pleasure to see you both again. Oh, hey, Navia! It's been a few days. Paimon's already started to miss you. Oh, now that I believe. I'm easy to work with and always bring home the bacon. Who wouldn't treasure having a partner like me? Sounds like you're really enjoying life these days, Navia. What have you been busy with since the trial? It's just been one thing after the other. I've been making non-stop trips between Poisson and the courts in Sen. Everyone from Spina di Rosula organized a memorial for my father. We never held a memorial when he first died, since everyone knew that even if we held one back then, no one was going to come. This time, though,
everyone in Poisson, Hey, and Noirba, even many people from the court all attended. अगर वेपन और कैरेक्टर बैनर पिटे शेयर करते तो कितना अच्छा होता फिर वेपन बैनर एक्चुअल वर्थ इट होता It's been the dearest wish of Demoiselle all along. गेंशिन वाले लुट जाएंगे फिर एमजे भाई हेलो That blasted stubborn fool. I was Genshin right to Impact put my जाएगा faith फिर। in him. I'm so glad I didn't give up on the case all those years ago. नहीं भाई आपके पास R5 Songs of Broken Pine है अरे उनके पास R5 सारे हैं क्या बोल रहे तो C6 यूरा वाले हैं By the R5 way, Broken I Pine ran वाले हैं into वो Charlotte just after I left the memorial सारे service. नॉर्मल बैनर के सारे Well, R5 हैं maybe it'd be I more mean, ये- accurate to say I knew she would be there, and there was no way she'd just let me go. Huh? So you know Charlotte too? The Charlotte? Journalist from the Steambird? Yeah, way back when I first became the president of the Spina di Rosula, she was all over me. Wouldn't take no for an answer. all over you. I believe the story was called The True Heart of Darkness, Secret Tales of the Yellow Rose. To be इतना fair दूर है? though, कौन it जाएगा was a इतना really अच्छा flattering इसीलिए feature. भाग गए वर्ल्ड से हैं So, we've been on pretty good terms ever since. She was trying to lean on our friendship to get me to do an exclusive piece on the serial disappearances case. Oh yeah, she told us about that. She's always been super interested in that case, so now her wishes finally come true too. Anyway, I told her to make sure that when she writes about you guys entering the opera house with the critical evidence, that you both sound really cool. Now that's another thing to look forward to. We trust Charlotte's skills with the pen नल्ला for आदमी sure. नल्ला डिपोट नो डाउट And in है भाई other अपने news, डिपोट दिखाना चाह रहा I है also took Clarand out for a meal. यहाँ एक वेपन यहाँ एक वेपन बैनर में 60 पिटे रीच करने में लग While गई you were हैं और investigating यहाँ लोग Bauchet's headquarters, लोगों के पास R5 Clarand gave broken testimony spines on my father's behalf. पैसा वाला लोग है पैसा वाला It was thanks to her that we were able to turn the tide. आ जाओ नहीं आएगा I मैं wanted to thank her. रिलैक्स मारोगे I mean, there's also no point मैंने in एक्चुअली being ये वाला awkward all the time. ये वाला एरिया नहीं बनाया So दूसरा we took एरिया the बना chance रखा to है मैंने reconcile with each फिर other. दोबारा बनाने का मन नहीं था Oh, that's great. Paimon also thought Clarend wasn't actually a bad person. It's always good to have more friends. Anyway, now that the case has finally been solved, perhaps it will slowly begin to fade from the public consciousness. Oh, actually, there's still one last thing I need to do. What is it? I should pay a visit to my father's grave and tell him the truth of what happened, as well as how it all ended. And on top of that, just how much people still look up to him. It's to all this about day. money and patience देख रहे गाइस That कैसे आदमी फ्लेक्स मार रहा है पैसा पेशेंस तो छोड़ दो पैसा का बात कैसे कर रहा है ये आदमी देख रहे हो कितना पैसा है Can I come to We want to go too. We also think Callus is a really admirable person. Sure thing. I'd like you two to share the moment with me. मेरे After पास all, दोनों नहीं है without you, there might not have been such a positive ending. And in that case, everyone, let's be off. Considering the recent weather, Especially we'll be पैसा lucky if we can reach Poisson MJ भाई before सेम यार dark. स्पेशली पैसा नहीं है Yeah, you're अपन भी right. गरीब हो गए It's been raining non-stop for a few days now. भाई बिना पैसा के आदमी कितना हेल्पलेस लगता है यार This is where my father's grave is. To be मेरे पास perfectly सिर्फ दूध है honest, even I haven't been back here for तो दूध बेच के पैसे a कमाओ long फिर time. Huh? There's someone there already. Wait. That figure. It can't be. Isn't that Nervalette? Why would the Chief Justice be here? Huh? Navia? 86 के सेव किए थे प्रीमोस और गानियो एंड शाओरी रन विद ओनली वेल्किन तो सोच लो My apologies. उस I टाइम should have नोयर asked भाई हमारे before coming छोटे to मोटे pay my डूल respects. छोटे मोटे ये थे गोल्ड say फिश थे that. अभी Sorry तो about भाई that. क्या बोलते हैं Oh, I was trying to say there's no need for you to apologize. I wanted to show my father how much I've grown. अभी नोयर भाई हमारे मेगलोडॉन है I भाई doubt I've grown to the point that Well even the being के Chief सामने छोटा Justice would बच्चा feel है compelled to apologize हमारे to me नोयर भाई over and मेगलोडॉन है over. भाई मेगलोडॉन In that case, I will stop वेल भी नहीं है apologizing वेल for भी now. नहीं मेगलोडॉन है हमारे नोयर भाई You really could use some pointers on understanding human आप emotions, खरीद लो 2 Monsieur मिनट में Neuvillette. डिलीवरी In any case,
Why did you come इस to समय Poisson? नोर भाई इवॉल्व हो रहे थे धीरे-धीरे. Well, ever since that day, I've been turning a question over तब and थोड़ा I over was in in my different head. job. Just what is justice anyway? There was once a time YT when I Discord didn't पे want to मैसेज believe भेज that रहे there हैं could be क्या? anything मेरे को more YT पे important to चैट नहीं humans दिख than रहा है life इनका. itself. All message Oh, all message rather करो. than that, it's probably more truthful to say I didn't believe humans were capable of resisting अगर the नहीं most दिख रहा तो basic लेफ्ट साइड instinct of कॉर्नर में जो living मेरा things, चैट चल रहा है ना उसमें that they देखो. could rebel against their own nature or consider certain things to be more important than their own lives. Which is also why I didn't stop your father from beginning that fateful duel. I believed that a truly innocent man would never throw away his life like that. That there was nothing, should have been nothing more important than one's own continued survival. But Mr. Callus proved me utterly and decisively wrong. If not for his sacrifice, the serial disappearances case would have remained unsolved to this day. Mr. Callus made the choice he did for his daughter, for his associates, for many people completely unrelated to him. And in the end, from a certain perspective, अब हम भी चलते हैं ना one भाई. could say that he did it 10 मिनट all हम भी चलेंगे for सोनिया. the sake of justice. A justice that's higher than life itself. So, you asked me टेंशन ना लो, why अब I टाइम came आउट नहीं here. देगा. I वो just मेरा wanted स्ट्रीम to say एलिमेंट. my डोंट वरी, apologies to हमने Mr. उसको Callus फिक्स कर in दिया. person. I should have noticed all of this much sooner. This regret has filled me with a sadness that has haunted me for days. That high and mighty chair in the opera लॉन्डो epic जिन्होंने plays लाइक नहीं indeed किया यार insulates फटाफट लाइक one करो from many रेस्ट्री. important things. Spina di Rosula, नहीं तो अगला 50-50 thank you हारने so वाले हो तुम लोग, much इतना जानो. for your hard work and perseverance. I'm sorry for being mad at you before. So, you're actually one of those types that's cold on the outside, but pretty thoughtful on the inside, मैं भी huh? देखो एमजे भाई, मेरे पास भी कितना पेशेंस है, मैं भी कितना प्रीमोस इकट्ठे कर रहा. Sorry अभी about मेरे that. पास कुछ Self-expression is not 130 one है. of my strong suits. Didn't I just यदि say आपका you दिल don't से need दूर to apologize? दिल से और प्यार से. अच्छा. Navia and Novelette seem to have made their peace as well. Let's not disturb them for now. We can wait till after they're done. Following Navia and Novelette, you also pay your respect. Okay. Paimon's never paid respects at someone's grave before. Did Paimon do anything rude there? Well, you are not supposed to fly around someone's grave. Huh? Oh, Paimon didn't know that was a thing. But Paimon doesn't know what she would do if she can't fly. क्या मतलब पाइमन चल नहीं सकती है? Paimon hopes Miss Navia won't be too mad. पेशेंस का मी था जूस. अच्छा अच्छा. वाओ, she took it seriously. Okay. अरे आए स्मग देखो रे. अरे भाई ट्रैवलर के मुंह पे स्मग देखो रे. कितना तगड़ा स्मग हो के भाई. Anyway, Novelette is still standing around there. It's not often that we can catch him alone like this, so why don't we go talk to him for a bit? If we can't talk to Lady Farina, we can at least talk to him, right? नहीं, मेरे को क्या पता है अभी का वेपन बैनर इतना वर्थ इट होता वरना और सेफ. यार याई मिको का उतना जिगल फिजिक्स नहीं है यार जितना राइडेन शोगन का है. डैम, दिल से बुरा लगा यार. याई मिको का भी उतना फिजिक्स होना चाहिए था यार. गलत बात यार. हाँ, याई मिको एंड नोवेलेट, लेट्स गो भाई. Oh, कोई it's नहीं you देख two. रहा है. Did Miss Navia invite you to come pay your respects to her father? We ran into Navia on the streets today, so we just followed her here. I see. You can hear Archon crying. Okay, ठीक है. Then is there something that I can help you with? Well, it's pretty hard to run into you like this since you're usually super busy. So we figured we could try to ask you a few questions, if that's okay. Please feel free. Though outsiders, you helped us solve one of the greatest mysteries in Fontaine, and it would be my एक pleasure तरीका to है return the जीपे का favor. तरीका है. ठीक है.
बाकी होशियार हो तो तुम समझ जाओ एमजे भाई. About water from the primordial sea. Okay. So, at court, the bad एक guys जीपे का referred to that तरीका है. special बाकी तुम water समझदार हो as तो समझ water जाओ. from the primordial sea. वहाँ से मिल जाएगा तुम्हें. What is it really? Truthfully, that name is already quite accurate. I can only surmise that Vache and his ilk only learned of its nature and existence after extensive research. There used to be a special sea on the surface of this planet. The nature of its seawater was rather different from that of the sea we know today. Most of Tevat's life forms were first born in that special sea. You could say it nurtured much of the life on this planet. Huh. So it really was where everything began. It makes sense to call it primordial then. But today, the primordial sea no longer exists on the planet's surface. What Vache discovered must have been some kind of special वहाँ मैंने case सुना सर्वे के or a remnant 20 रुपए from a वो truly जीपे नहीं भाई ancient दूसरा age. जीपे का बात कर रहा है. So that's how नोयर it भाई is. से बात करो. नोयर भाई Oh, you really डीलर से know मिलवा देंगे everything, तुम्हें. Monsieur Neuvillette. But if हाँ that's the सुन case, सकते हो. ओके then ठीक है चलते हैं यहाँ से बात करके. at least people from Fungi dissolve in that kind of water. Indeed. Why would the primordial sea, नोयर which भाई was से known to कांटेक्ट करो. वो engender डीलर and से nurture मिलवा देंगे life, तुमको. suddenly reverse itself and devour life instead? To be frank, that also doesn't match my understanding of this world and its laws. There must still be some unknown secrets around the people of this land. Is there anything else you'd like to ask me about? About prophecy. That the sea levels will rise and everyone will be dissolved in water, leaving Farina crying alone on her throne, but the sins of the people will be finally washed away for good. Does that appropriately summarize the version you've नोयर heard? भाई दूध बेचते हैं क्या आप? Right. It was Lenny that told us back then. And that about covers all the main points. Yes, up to the present, I think we reached a point where we have no choice but to confront Nuvilate, this by the way, prophecy spoiler directly. guys, spoiler alert. Rumors have it that this Nuvilate water prophecy is dragon है. rooted in the last words the Paisa. former Hydro Archon left to the world before she Exclamation mark passed away. R और पैसा. A prophecy? Of the former Hydro Archon? Wow. This is the first time that we've ever heard of it. Two parts of the prophecy have already proven correct. The मेरा rising दोस्त sea सिर्फ levels and सिर्फ the someone ability of special the के लिए people of समझ जाओ. Fontaine to be अच्छा नोयर भाई dissolved. We should be more vigilant I and see, stay I on the see. watch for further signs. Speaking of the prophecy, Farina has also always taken it quite seriously. Indeed, she has been collecting information and intelligence from across Tevat for this purpose. If the rumors were true, then perhaps this prophecy is the conundrum left to Farina by her predecessor. अच्छा ये बताओ नोयर भाई क्या सुनने में ये बात सच है? Just like रेहान. Trust her to solve it? क्या मतलब just Is like there रेहान? What do you anything mean? else you'd like to ask me about? स्पेशल दिला सकता हूँ रशियन जापानीज यूएस दुबई दुबई कह रहे हो क्या? About child? My apologies. My investigation has still not reached its conclusion. However, I still believe the judgment of the Oratrice was not rendered arbitrarily. But you also said you thought he was innocent. For many years, I have been quite aware that the Oratrice does not simply mechanically repeat the verdict that I give on each case. As a divinely created mechanism, the people's unified faith in the concept of justice is integrated into it. Not only can it produce the incredible power of indemnitium, but it likely also possesses other traits, such as self-awareness. Which is all to say, I have been prepared for a situation like this for a long time. क्या बोलते हैं नोयर बेचोगे मेरे को दूध? So when Lenny told us that he heard a human voice from the room where the Oratrice's core is stored, I was not aware such a thing had occurred. डीलिंग के लिए Perhaps that जाओ could serve to prove my conjecture. वाइफ के होते I'll हुए. add that to the list of items to एक investigate. सेकंड. नोयर भाई. In any case, I am inclined to believe that the Oratrice does have a भाभी जी बगल में methodology है all क्या? its own. हैं? We just do not have क्या enough कल मिलने वाले हो information. भाभी जी से? Based on Farina's reaction, I doubt even she had any idea what was going on. She managed to कोई ना bluff वाइफ her को way रख through लेंगे. it, though. The time-tested twin tricks of bravado and drama. While we do intend to get to the bottom of this, for now, we regret to say that the Fatui Harbinger will just have to bide his time in the fortress of Meripede. If we अच्छा did रियल वाइफ हुए incorrectly नोयर भाई convict की him of सॉरी. crimes he did not commit, सॉरी नोयर we भाई will की. most certainly compensate मेरे को him to लगा the यूला fullest को extent पोस्टर allowed लगाने by the का law. है.
शॉपिंग करवाने ले जा रहा है कल गेंडो फटू गर्मी में ओके ओके Is there anything else you'd गाड़ी like से to चल ask जाना me नोयर about? भाई शॉपिंग मॉल में जाना यार कहाँ धूप में घूमेगे इधर उधर शॉपिंग मॉल में जाके कर लेना यार शॉपिंग एकदम ठंडा ठंडा Your नहीं तो sibling, दुकान दुकान घूम के जाना है तो फिर तो blonde-haired फट्टू गर्मी में तो traveler. भाई फटेगा फिर आपकी है I'm sorry, but I've never seen anyone who matches that description. If she ever stepped foot in Fontaine, I'm sure she followed our laws to the letter and had no reason to appear on the stage of the opera Epicles. Is there भाई anything डोंट नो else कार you'd like अरे to ask me about? सेम नोयर भाई अरे यार सेम दुख दर्द यार कार नहीं चलाते हम लोग भी क्या कहे भाई Very well. It was my honor to provide you with what answers I could. I very much enjoyed conversing with you. नॉर्थ It में will हर एक soon be तरफ time for गर्मी है me to यार leave this blissful tranquility behind and return to Palais Memoria. रेंट पे करके पूरा दूध निकल जाता सीखना पड़ेगा लेकिन बहुत हैसल है हाँ सीखना तो पड़ेगा नोयर भाई दोनों को सीखना पड़ेगा एक जन को नहीं दोनों को Crime and villainy do not have the day off. घर पे And so गाड़ी है पर मैं justice सीखता must नहीं work यार around the clock रीजन as ये है well. This is merely the nature of a justice's work. All right, you've got a point. Huh? Paimon just noticed that the rain has stopped. अब खत्म किया आपने हाँ भाई हमने अब खत्म किया हम थोड़े सबसे थोड़ा सा पीछे चलते हैं ना ओके आपने को ये मिला आर्कन क्वेस्ट करने सबको को ये अपना हीरो कैरेक्टर किधर है ओके किधर कह रहे थे फाउंटेन के पास जाने को ना राइट गाइस चलते हैं फाउंटेन के पास देखते आवाज सुनाई देता है मैं तो 6 दिन पहले कर दिया था मैं एनजे तो एक सेकेंड एनजे अरे भाई मेरे को देखना पड़ता है ना सब बंदे कर रखे हैं कि नहीं तो लोग कहते हैं स्पॉइलर हो रहा झूला का कोई अच्छा पोस्टर नहीं मिल रहा है एक्चुअली सब एआई से हम भेजते हैं नोयर भाई बोलो चाहिए क्या हाँ क्या करना होगा सुनने के लिए अब क्या करूं मेरे को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा गाइस हैं कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा मेरे को पानी की Personally, I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful.
But alas, that is simply फुरीना not को the way the world works. पता है लोग उसको रोते हुए सुन रहे हैं, वो चली गई लगता है। मेरे को सिर्फ पानी का आवाज सुनाई दे रहा है, what the fuck? Who else deserves to take the stage more than Lady Farina? अब वाईटी में सुन लेना। I prefer magic personally. हाँ, वो SFX भी बंद कर दिया, अब बोलो। I think the next one's a trial. Most humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a few short lines. Their stories really make for terribly dull reading. I wonder where You, yes, right. हाँ, how much longer? Damn रे, सुनाई दिया guys? सुनाई दिया तुम लोगों को? Yes, how much longer? I think the next one's a trial. Who else deserves to take the stage more than Lady Farina? I prefer magic personally. I think the next one's a trial. Damn, अरे guys सुनाई दिया ना? Who else deserves to take the stage more than Lady Farina? Dude, सुनाई दिया रे लॉन्डो, let's go. अरे हमेशा YouTube पे भरोसा नहीं करता ना मैं। Emerge. हाँ, यामी को भी लाइक, अबे कबूतर मेरे से बच के नहीं भागेगा तू। अबे मैं मार दी रे उसको तो। डूड सुनाई दिया ना लॉन्डो भाई, फुरीना रो रही है। कल कमीशन करूंगा तो एक फुल मिल जाएगा, होप करता हूँ वो मिल जाए। एक सेकेंड, होल्ड ऑन सेकेंड, मेरे को अपना ये करना है, फाउंटेन का करना है कमीशन। एक सेकंड, मेरा क्यों नहीं खुला है फाउंटेन का कमीशन करने के लिए भाई? हेलो, गलत बात डूड, व्हाट द हेल। कैथरीन का क्वेश्चन करना होता है। हाँ, किधर है भाई? Unlock the purchase the fountain weapon forging blueprint. क्या मतलब? मैंने अभी तक कैथरीन से बात नहीं किया तो है यार मैंने कैथरीन से बात। ओ कैथरीन, quest complete, another horizon of the adventure. Okay, हो गया। Varenia, welcome to the stream, bro. Hi, bro. Konnichiwa. अब चेक कर। हो गया।
एमजे भाई का दूध और इंफॉर्मेशन प्योर रहता। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ तो वेरेनिया भाभी जी हैं। भाभी जी कैसी हो? वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल? Emerge. I've just started playing Genshin. Okay, I see. Congratulations. कितने यार गए? कितना यार गए आप? कितने यार पे हो आप? Personally, I think the idea मैं of भी things सुन के staying आया the same जीपी forever में is मन quite कर रहा है beautiful. उसको कडल करूं। अच्छा ऐसा है क्या? But alas, that is simply not Yeah, the way the 16. world Nice. works. कोई ना, अभी आपको बहुत ग्राइंड करना फिर तो। फॉन्टेन का कमीशन में कॉफ़ी बनानी पड़ती है, 3-4 बनाने के बाद अचीवमेंट मिलता है। ओके मैंने अभी नहीं किया, एक भी बार नहीं है। तो पहले मेरा देखते क्या मिलता है कल। आज तो सुमेरू करना पड़ेगा, कल से फॉन्टेन का रहेगा। मैं फॉन्टेन का यार अभी फॉन्टेन कह रहा मैं सुमेरू का देखोगे तो यार मेरा सुमेरू को बच्चा पड़ा है यार। ये वाला एरिया बच्चा है और ये वाला एरिया बच्चा है यार। तो ये एरिया फॉन्टेन में मैंने 85% इधर कर दिया, 60 इधर हो चुका है, 64 इधर हो रखा है। तो कहने का मतलब मेरे ख्याल से क्वेस्ट वगैरह करूँगा तो ये भी एक्सप्लोर हो जाएगा। बच्चे खुचे जो हैं। एक सेकेंड, अगर मैंने क्वेस्ट कर दिया तो इसका मतलब वो भी खुलेगा राइट? क्या बोलते हैं मेरा रेपुटेशन क्वेस्ट? हाँ ये रहा रेपुटेशन क्वेस्ट। लेट्स गो। किधर गया रेपुटेशन क्वेस्ट? मेन क्वेस्ट वो मेरी 100% वर्जन है, इस आईडी में 80% मेन आईडी। अच्छा इसका हेलो नोयर भाई। ओए ये मैंने किया है, ठीक है? हेलो ये मैंने किया है, ये एक्सप्लोरेशन मेरा किया हुआ है। 85% 60% कोई नहीं किया है ये, ठीक है? ऑन स्ट्रीम किया है मैंने। आए बड़े नोयर भाई, मैंने किया खुद के मेहनत से। देख लो गाइस ऐसे ट्रबल शूटर आई एम। ओके लेट मी सी, क्या मतलब मेरे को अभी एक्सप्लोर करना बाकी है भाई। ओके 60% एक्सप्लोर, 40% एक्सप्लोर। फॉन्टेन क्वेस्ट भाई बस एक पैच रिलीज हुआ है। 80% एक्सप्लोर अभी से थोड़ी ना हो जाएगा। मैक्स आई गेस 30 है। मैक्स आई गेस 30 अभी तक के लिए, मतलब वो आपने नहीं किया है, वो मैंने किया है, दोनों किया है, ठीक है? मेरा किया हुआ है, ठीक है? आए बड़े हाँ करा दो हमारी बेइज्जती नोयर भाई। हाँ अरुण भाई हाँ देखो भाई, मिली भगत भाई, मिली भगत। रुको रे लॉन्डो, पता नहीं क्या मिला अभी। अरे यार मैंने ये यूज नहीं किया। Hey please. Someone's gonna give it an ugly nickname like Paimon. बोल ले पाइमोन। Someone's gonna give it an ugly nickname like bad water. हैं? नशे में क्या पाइमोन? The more Paimon looks, the sadder Paimon gets. ओह इस पे डायलॉग से पाइमोन Girls with their own hopes and dreams. Okay. Paimon can't bear to look anymore. Paimon, they should be able to prove Navi. ओके पाइमोन, तुम्हारे प्रवचन सुन लिए हमने। 7 दिन में ये एक्सपायर हो रहा है।
ग्यारह हाइड्रोकुलस है अपने पास, 130 विशेष हो चुके हैं। ओके ठीक है भाई, अपन राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं गाइस। Most humans could have the entire. ओके क्या डालूं क्या डालूं, ये डाल देता मैं। दूसरा initiate. Have their fleeting lives chronicled and right here, emerge. Yeah. Right now. ओके चलो ठीक है, वर्थ इट है। गाइस एनजीटी वगैरह डालो, मॉब ड्रॉप डाल रहे हैं। अरे इतने सारे पड़े हैं यार, स्कैम करता, मैं स्कैम करता। पकड़ लिया, कहाँ पकड़ लिया? कद्दू मेरा। हाँ, वाह कद्दू मेरा। नूर भाई कद्दू कट जाएगा आपका, सब में बट जाएगा। विदाउट कद्दू रहोगे फिर। है समझ नहीं आया, सुनने में भी हमें बेकार लगा। चलो गुड नाइट, मी गोइंग टू एक्सप्लोर एंड सी एनिमे। सभी को एक मिक्सी गुड नाइट। अच्छा क्या सुनने में बेकार लगा, समझ में भी नहीं आया। वरेनिया चली गई क्या? हे वरेनिया हो क्या आप स्ट्रीम पे? इतना शॉर्ट फॉर्म। अच्छा पाइमॉन का कह रहे थे क्या निकनेम? तो नोयर भाई यार ये देख रहे हो यार, क्या दिख रहा है यार ये गेम बीसी। आई मीन लुक एट दिस यार। आई मीन मैं पीसी में भी कर सकता है ऐसा ग्राफिक्स, लेकिन यार मेरे को स्ट्रीम ऑफ करना पड़ता है। अगर इस ग्राफिक्स में पीसी में भी खेल सकता हूँ, लेकिन मेरे को स्ट्रीम ऑफ करके खेलना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। वाह यार मिको को देखो रे कैसे चल रही है। Chongli is very good. अपना 10 सेकंड बचा के नोयर भाई यूला को देखेंगे। ब्रो जोंगली इज गुड और नॉट? अरे काफ़ी अच्छा है यार, जोंगली तो बहुत अच्छा है। इज अ गुड, ही विल हेल्प यू अ लॉट इन अर्ली यार, डोंट वरी। Top pull for Zhongli. Next banner. Yes, of course. Go for Archon. If you like Zhongli, then pull for Zhongli. His is very good still. Yes. In early AR or even till now, Zhongli is good. He's an Archon, you know. You can always rely on him. Look, I am always using Zhongli in my team. See? Crumble! Stabilize! Stabilize. Dude. He's like immortal, you know? Zhongli is like immortal. Okay guys, time to leave Londo. Okay guys, time to leave. It's too late. चलते सोने।
I know अभी नींद तो नहीं आएगा मेरे को, लेकिन I try to sleep. Okay, Zhongli as DPS is bad. Don't use him as a DPS. Okay, he's a support character. He will provide you shield and he will make you survive in the game. Okay guys, चलते हैं. Bye bye. Good night. Take care. Love you all. See you tomorrow. Thank you for your likes and sub. जितने भी नए लोगों ने सब्सक्राइब किया, thank you. It means a lot. Bye bye. Take care. Have a sweet dream. And मिलते हैं कल guys नए स्ट्रीम के साथ. Okay. MJ, वरुण, वरेण्या जो भी स्ट्रीम पे. Have a bye bye. Good night. Ara. Sayonara. Yes, sayonara guys. Have a sweet dream. 40 like हो गए. Thank you for the 40 likes by the way guys. Thank you for the 40 likes. Okay guys, कल मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम के साथ. Okay, see you tomorrow. Love you all and take care guys. Okay, मिलते हैं guys कल. Okay, नेक्स्ट स्ट्रीम के साथ. You and me, hanging from the willow tree, quietly drifting in the open breeze. Suddenly, the wind blows you away from me. Now I see we were never meant to be. If only we could travel back in time. Whoa. From the same branch and leaves, wild and free, living here in harmony. Don't you see? This is where you want to be. But when you leave, the world is never what it seems. If only we could travel back in time. Whoa. Dancing till